I invite Madam Suman Maniwal, DIG Prisons, to kindly... Yeah. May I also request Shri Rajiv Kumar Sharma, Director General of Police, to please come on the dais. Okay. Good morning, everybody. Good morning, dais. We welcome to the working session 1 of the second day of the conference on cyber safety, awareness, and inclusive access to justice. Today, we'll have panel discussions, and the first discussion will be on the topic is cyber safety and access to justice, challenges and opportunities. Before we begin, as American science author and author Stephen Berlin remarks that internet is not even a bottom-up system. For the bottom-up system implies a top, but internet has emerged undesigned, unexpected, and unpredicted. Matt Ridley, in his famous book, The Evolution of Everything, says that internet has no center, no hierarchy. All computers that use it are equal. In other words, servers talk to servers very easily through APIs, through software as a service solutions, and through other technical functionalities. The rise of agentic AI and deepfakes allow criminals to automate complex frauds, such as digital arrest, that was beautifully explained yesterday by Honorable Dr. Justice Pushpen Singh Bhati. Other than digital arrest threats, there is digital spying, or we call espionage, that can emanate from individuals, fanatics, and at times from state as well. I quote from Ridley's book, The Evolution of Everything, that whistleblower Edward Snowden informed that in Britain, over 1 million webcam users were spied upon in a phishing expedition by the government spying agency GCHQ, undertaken from no excuse of a suspicion of wrongdoing, unquote. Therefore, in the digital era, cyber safety and access to justice have become inextricably linked as the rapid pace of technological advancement outstrips the traditional legal frameworks. It is my esteemed privilege to introduce our eminent speakers on the panel for this discussion. We welcome Honorable Mr. Justice Ehsanuddin Amanullah, Judge Supreme Court of India. Sir will be speaking on the topic of the evolving landscape of cyber laws and cyber crimes under IT Act 2000 and BNS 2023. He is the chair. Honorable Mr. Justice Rajesh Bindal, Judge Supreme Court of India. He is co-chair. As he'll speak, will throw his insights on emerging trends in cyber crimes, issues, and challenges with emphasis on transnational issues. Honorable Mr. Justice Sameer Jain, Judge Rajasthan High Court, Jaipur, is also co-chair, will give his insights on jurisdictional issues in adjudication of cyber crimes and case studies. Shri Rajiv Kumar Sharma, IPS, Director General of Police, Government of Rajasthan, Jaipur, will take us through the difficulties encountered in investigating and prosecuting cyber crimes. And Ms. Suman Maliwal, DIG Prison, will take us through the technology in prisons and data security. Before we formally commence the session, it is our tradition to express respect not merely through words, but through a symbol of life, harmony, and sustainability. Rajasthan State Legal Services Authority honors our esteemed speakers with a sapling representing growth of knowledge and the nurturing of justice. May I humbly request Shri Hariom Matri, Member Secretary RSLSA, to kindly present a plant to Honorable Mr. Justice Ehsanuddin Amanullah, Judge, Supreme Court of India. May we please have a round of applause. May I now request Shri Abhay Jain, Districts and Sessions Judge, Bhilwara, and DLSA Chairman, Bhilwara, to kindly present a plant to Honorable Mr. Justice Rajesh Bindal, Judge, Supreme Court of India. May I request Shri Ashwini Vij Sab, Districts and Sessions Judge, Bikaner, and DLSA Chairman, Bikaner, to kindly do the honors.
I request the dignitaries on the dais to kindly be seated and be comfortable, sir. I request Shri Baljit Singh, District and Sessions Judge Bharatpur and DLSA Chairman Bharatpur to kindly present a plan to Honorable Mr. Justice Sameer Jain Saab, Judge Rajasthan High Court, to present a plan. Next, I request Shri Satyanarayan Vyas Saab, District and Sessions Judge Kota and DLSA Chairman Kota, to present a plan to Shri Rajiv Kumar Sharma, DGP, Government of Rajasthan. Next, I request Shri Brijendra Kumar Jain Saab, District and Sessions Judge, Jaipur Metro 1, to kindly present a plan to Ms. Suman Maniwal, DIG Prisons. No, he's not here. Okay, he's here. Thank you, sir. Thank you, dignitaries, members on the dais. Now we begin the first session of day second. As I said, the topic is cyber safety and access to justice, challenges and opportunities. So may I request Honorable Justice, Mr. Justice Hasanuddin Amanullah, Judge Supreme Court of India, to please come on the dais and share his views on the evolving landscape of cyber laws and cyber crimes under IT Act 2000 and Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. Thank you, sir. Khamma Ghani, Namaskar. Good morning, Sat Sri Akal, Assalamu Alaikum. We are going to set the tone. So this will be more of an awakening session so that you are prepared for the rigorous today and tomorrow. I'll just briefly touch upon the topics. Firstly, I said briefly for a very real purpose. I am not too well versed or competent to speak on this subject because this is absolutely new, fast evolving and technology based. And it started when we had already joined the profession. So we've also picked up like students from bits and pieces and from experiences gathered in sessions like this and hearing to people who really know the matter inside out. I'll just briefly try to sum up the two acts, the IT Act and the BNS, to give you an overall view of this session. And then I also look forward to some discussions on the topic. My esteemed brother, Justice Rashesh Bindal, Justice Sameer Jain, Justice Mr. Rajiv Kumar Sharma, he is not here. Sorry. Mr. Rajiv Kumar Sharma, the Director General, Madam DIG. I am very bad at names, so please forgive me. I don't generally risk, but sometimes I write a few, so I took it. My brother and sister colleagues of the Rajasthan High Court, Justice Pathak from Madhya Pradesh, the officers gathered here, the other dignitaries, the participants, the learned members of the state judiciary, my friends, I can see the learned councils, if they are students, members of the media, members of the audience, ladies and gentlemen. The evolving landscape of cyber laws and cyber crimes under IT Act 2000 and BNS 2003. The era today is truly a digital one. Distances and physical boundaries seem to have blurred.
while undoubtedly the same have brought about great conveniences to the general populace, it has also created new issues, crimes, jurisdictional issues, new threats, etc. Transactions, identities, communications, and even crimes have migrated online. Cyber threats encompass sophisticated ransomware attacks, deepfake frauds, artificial intelligence-enabled impersonation, crypto offenses, and large-scale data breaches. The law accordingly has tried to evolve from being reactive to being anticipatory. Traditional understandings of mens rea and evidentiary standards had to be reimagined. यहाँ पे मैं पॉज करूं और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। मेंस रिया आप सब जानते हैं, वो कहते हैं ना कि हर क्राइम के पीछे एक मंशा होनी चाहिए उसकी। वो मंशा उस क्राइम को कमिट करने की होनी चाहिए। इस दौर में मंशा पीछे चली जाती है, क्योंकि मंशा को एस्टैब्लिश करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए नामुमकिन है चूँकि लगभग मैंने कहा, और यही चैलेंज होता है जुडिशरी के सामने और सरकार के सामने कि किस तरह का कानून लाएं कि एक चीज़ जो बहुत ही ऑब्वियस है, सब कोई देख रहा है, फिर भी उसे कानून के तहत पनिश करने के लिए जो प्रक्रिया है उसको साबित करने की और एस्टैब्लिश करने की, ये कि इस क्राइम को या इस एक्ट को कमिट किया गया है एक सुनियोजित प्लान के थ्रू, वो डिस्टेंस को कवर करना है। साइबर क्राइम में सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी यही है, चूँकि लेयरिंग बहुत होता है। कल आपने सुना होगा शाम में किस टाइप से कहाँ से नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, फ्रॉम वन सर्वर टू द अदर सर्वर, वो कभी बैक ट्रैक करना ही नामुमकिन है। और अगर आप लकी हैं, आपने बैक ट्रैक कर भी लिया, तो 99% केसेस में पता चलता है कि कोई छोटे से या कोई दूर के कंट्री में वो एक इनिशिएट होता है। वहाँ तक पहुँचना ऑलमोस्ट असंभव है, चूँकि साधन नहीं है, समय नहीं है, और ये एक केस नहीं होते हैं, ये हज़ारों में और लाखों में अब तो हो रहे हैं। तो चैलेंज है कि कैसे कानून में एक क्राइम को जान करके भी, आप समझ रहे हैं क्राइम हो गया है, हज़ारों रुपए चले गए हैं, कनेक्ट कैसे करते हैं कानून से, ताकि जिसने ये काम किया है वो कानून के ही प्रक्रिया से उसे दंडित किया जाए। Broadly speaking, the Information Technology Act 2000 has computer-related offences at Section 66, identity theft at Section 66C, personation at Section 66D, privacy violations at Section 66E, cyber terrorism at Section 66F, obscene materials at Section 67, 67A, 67B, interception and blocking at Section 69, 69A, intermediary liability at Section 79, and corporate liability at Section 85. Some relevant provisions from the Bharatiya Nyaya Sanhita 2003 in this context are Section 111, identity theft, impersonation and fraudulent use of digital identities. Section 12, cyber fraud, including digital deception and online cheating. Section 113, publication or transmission of sexually explicit or obscene material. Section 114, voyeurism and non-consensual dissemination of intimate images. Section 115, cyber stalking, harassment and online intimidation. Section 336 to 339, terrorism and organized crime using digital means. IT Act 2000 vis-a-vis BNS 2003. Firstly, the IT Act intended to govern means, that is computer networks, systems and digital infrastructure and data points, whereas the BNS intended to regulate conduct, that is prevent crimes committed through digital means.
The laws now aim for, first, greater prosecutorial flexibility, second, clearer mens rea standards, clearer sentencing frameworks, and better alignment with global cybercrime standards. The new challenges are overlap of criminal offenses, definitional issues, how you define whether crimes are seen to be overlapping, avoiding double jeopardy defenses, and thirdly, interpretative and harmonious construction of various laws apart from BNS and IT Act. On the enforcement front, with the coming into effect of the Digital Personal Data Protection Act 2023, India now has a parallel regulatory regime that intersects with cybercrime enforcement. Police and regulatory bodies will have to work closely on this. I'm just reading out a few points which may be a way ahead. Setting up and strengthening specialized cybercrime units across states, enhancing judicial and prosecutorial training in digital forensics, promoting international cooperation through treaties and mutual legal assistance fora, modernizing the IT Act further to reflect contemporary threats, develop Indian jurisprudence on AI liability, algorithmic accountability, and digital consent, ensure that cherished fundamental rights, privacy, free speech, due process, remain protected even in the face of technological disruptions and anonymous offenders. Yesterday, Honorable the Chief Justice of India had indicated that everything technology, all this AI is good, but it should not control and try to sideline the main judicial process or the constitutional provision. I think that itself is one of the biggest challenges today. How do you ensure that ultimately it is your constitution and the discretion of a judge, a trained mind, a trained judicial officer, who ultimately prevails over these attractive technological innovations? Now technology can also prove many things. It may persuade you, it may even start controlling your mind, because it will appear to be so lucrative, so logical. The challenge is to lift the wheel of this illogical logic. That is what, and my strong belief is, with due respect to all votaries for AI, that you should never give up your control, the human control over these things. The moment we do that, I think we risk becoming a redundant race. I'm using the word race. The whole mankind risks this. Let us not get into an era where we lose our human touch, because ultimately the society is consisting of human beings. If we cannot relate to each other in a human way, I think we are not living like robots. In spite of creating robots, AI will now turning us into robots. So everybody will become a robot without knowing that he is a robot. You give up your thinking capacity, you give up your diagnostic capacities, you give up your sixth sense, the sense a human being develops. Sometimes it's inbuilt, sometimes it is acquired through experience. AI doesn't need anything. One click, by the time you raise your finger, the answer is there on the screen. It is all pre-fed, whereas it might have taken a person 40 years of his life to come up with one paragraph on a subject. Now it is less than a nanosecond for a machine. So according to me, that is one of the biggest challenge. And I still think that in this cyber world, my parting word would be that the moment we re-establish our superiority over AI, AI will be ahead of us. Finally, cyber law must not only aim to catch and punish, it must protect, empower, and enable trust in the digital economy, which is likely to drive the next century of human growth and evolution. हमें उसे एक टूल जैसा यूज़ करना है, जैसे हम मशीन बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, ड्राइवर सीट में हम रहते हैं, तो we have to use it. We are abdicating. या तो एक
ट्रेंड बन गया है कि आसान चीज़ पसंद आती है और बुरी आदत जल्दी लगती है। तो ये सब बुरी आदतें हैं कि हर चीज़ कोई और कर दे आपके लिए, गुड थिंग्स ऑफ लाइफ विदाउट अंडरस्टैंडिंग। और स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, अगेन स्ट्राइकिंग अ डिस्कॉर्डेंट नोट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, I would always be suspicious in the sense that I don't want my individuality to be lost. Every person is unique and every person has something to contribute. The contribution should be towards the public goal, how to save the public. ये भी सत्य है कि आज के दिन में बिना रिकॉर्ड्स लिए हुए डिजिटल टेक्नोलॉजी के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सुविधाएं हो गई हैं, कॉमन मैन के लिए आसान हो गया है और होना भी चाहिए, क्योंकि वो भी तो हमारे ही क्रिएशन है ना, हमारे माइंड की उपज है, एआई हो या कोई टेक्नोलॉजी हो। लेकिन उसको सिर्फ इतना भर रहना चाहिए कि वो हमारी सुविधा के लिए हो, ये नहीं कि हम उसके आदी बन जाए और हम उसी के बंधक हो जाएं और फिर हमें अपने इंडिविजुअल कामों में भी जिसमें एआई या टेक्नोलॉजी की कोई दखल नहीं होनी चाहिए, उसमें भी मैं उसी से पूछूं कि मैं क्या करूं। अब स्टेज ये आ रहा है, वो थोड़ा सा भयावक है। अगला जनरेशन ज़रूर इसको एड्रेस करेगा क्योंकि उनकी जो समस्याएं रहेंगी। वी आर ऑलमोस्ट एट द final line, but I wish you all the best because the challenge has rightly been taken note of, and this 3 days intensive, I think it must be the first in India जो इतना intensive किया है आप लोगों ने, and जिस टाइप का audience है, people from all stakeholders sides, everybody is here. I wish you all the best. Jai Hind. Thank you, Lordship. Lordship touched upon a very sensitive and very profound subject, that the day man has to be smarter than the machines. I am reminded of, a very interesting incident called, and I hope really know that you know it, that's called as Alan Turing test. Alan Turing was a person who was responsible for Britain winning or Allied forces winning the Second World War. He was the first person who had developed large language models and machine learning, and he gave a statement: the day machines will outsmart 40% of people in a panel or a discussion, we will have to assume that the day of machine learning has arrived. And it exactly happened after some 40 years when a first bot called Eugene Gutzman discussed with a group of 7 or 8 people, and all those people imagined that they are not talking to a bot, but they are talking to somebody real. So that is a real touch point that our Lordship has touched upon. Man has to be smarter to beat the machines. Thank you, Lordship. Thank you very much. Now, may I request Honorable Mr. Justice Rajesh Bindal, Judge Supreme Court of India, who is a co-chair also, will speak on emerging trends in cybercrimes, issues and challenges with emphasis on traditional issues. So, सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम पंजाब में कॉपी टू ऑल भी कर देते हैं, एंड खंबा गणी तो यहाँ तो फिर मैं नाम लेने की गलती नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पहले एरर हो गई थोड़ी, और कल इनॉग्रल फंक्शन में सबके नाम लिए थे बार बार। तो टेक्नोलॉजी के बारे में सारी बातचीत है, तो वो कॉपी पेस्ट का ज़माना भी है, उसमें प्रॉब्लम भी है बहुत। दैट वी फील कि जब जजमेंट लिखते हैं बहुत सारी हमारे पास आती हैं, तो कहीं से कॉपी पेस्ट करो तो उसमें कुछ का कुछ पहुंच जाता है। और हम ऐसी जगह बैठे हैं क्योंकि मेरी जर्नी जैसे शुरू हुई हरियाणा से, फिर J&K, कलकत्ता, अल्टीमेटली इलाहाबाद, जहाँ हिंदी का ज़्यादा है, और यहाँ पे भी हिंदी का ज़्यादा है। और 21 फरवरी जो है, दैट इज़ सेलिब्रेटेड एज ए इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। सो आज तो हम वैसे भी फिर अपनी मदर लैंग्वेज में बात करें। और सब्जेक्ट ऐसा है कि जैसे साइबर ये सारी चीज़ें हवा में चलती हैं, ये भी हमारे ऊपर से निकलता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है, खासकर हमारी जनरेशन के लिए,
टू चेंज ओवर टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि हमारे कोर्ट में कंप्यूटराइजेशन बहुत हुई, हमने वहीं से सीखा। और जब हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करने की सोची तो देयर वाज लॉट ऑफ रेजिस्टेंस क्या थी कि जो 50s में हमारे एम्प्लॉयज़ थे, सो दे वर वेरी रिलक्टेंट कि इस कब चेंज करेंगे, कैसे करेंगे। तो उनको मोटिवेट किया, तो उसके बाद खैर कंप्यूटराइजेशन आई थिंक अब तो बहुत नेशनल स्केल पे। और मैं आपको एक चीज़ शेयर कर सकता हूँ, मैं कई दफ़ा कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे भी बाहर भी गए, और हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम कोर्ट का है दैट इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इतना कहीं पे नहीं है, इवन डेवलप कंट्रीज़ में भी इतना सिस्टम नहीं है, इतनी ट्रांसपेरेंसी से, इतनी डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं वर्ल्ड में नहीं है। जितना डाटा हम कंट्रोल करते हैं वो तो खैर है ही नहीं कहीं, क्योंकि लिटिगेशन इतनी कहीं नहीं है जितनी हमारे यहाँ है। टेक्नोलॉजी आई है, और जब आई थी तो नेचुरली हम सब पॉजिटिव यूज़ में थे उसके, बट उससे भी पहले अगर आपको याद होगा एक रोबोट फिल्म आई थी, और रोबोट फिल्म ने ये दिखाया था कि अगर हम ओवर डिपेंडेंट होंगे तो वो क्या करेगा, इट कैन किल द पर्सन हु क्रिएटेड इट। तो ये अब हमारे को मारने के लिए, पर उसको क्रिएट भी हम कर रहे हैं, कुछ कंप्यूटर से कर रहे हैं। डाटा प्रोसेसिंग में यस, नॉलेज की बात नहीं है अब टेक्नोलॉजी में, इफ़ यू आस्क मी। अगर हम वेब पे जाएंगे कहीं तो इन्फॉर्मेशन बहुत है, पर यू कांट से कि वो नॉलेज है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पता नहीं कहाँ है। आपको एक सब्जेक्ट पे 20 व्यूज़ मिलेंगे, 2 व्यू नहीं मिलते, वो आप ढूंढते रहो बहुत सारी चीज़ें। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, पर नॉलेज में क्या राइट और रॉन्ग है वो यू हैव टू अप्लाई योर माइंड टू सी। सो ये एक इरा वो चल रहा है। बहुत सारे अदरवाइज भी चीज़ों में बहुत हमारे को बेनिफिट हुए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, उससे भी हमारी बहुत सारी चीज़ें, आप ये देखिए कि जो क्राइम है वो हमने बहुत पकड़ा उससे, या जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, या अभी आप टैक्सेशन में देखो, हमारे यहाँ बहुत सारे जजेस हम डील करते ही हैं टैक्सेशन में, कितने क्राइम टैक्सेशन में जो टैक्स इवेजन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पकड़ा है। तो ये पॉजिटिव यूज़ भी हैं, बट उसके बाद साथ ही साथ फिर नेगेटिव शुरू हो गया। और नेगेटिव शुरू हुआ आपके डीप फेक से, आपकी वॉइस क्लोनिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फेक डॉक्यूमेंट, मैसेज, कितनी चीज़ें अब हम फेस कर रहे हैं रेगुलरली। तो आइडेंटिटी इशू भी आ गया है, एक बहुत सारी लिटिगेशन कोर्ट में आ रही है कि किसी की वॉइस, किसी की पिक्चर लगा के लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। जब मैं इलाहाबाद में था तो हमारे जजेस के ईमेल आईडी क्रिएट कर दिए किसी ने, और गवर्नमेंट को ईमेल भेजनी शुरू कर दी कि आप ये काम कर दो, इसकी ट्रांसफ़र कर दो, इसकी ये कर दो। तो थोड़ी शुरू में तो उन्होंने किसी ने नहीं पूछा, एवरीबडी थोड़ा डरता है कि चीफ साहब के वहाँ या किसी जज के यहाँ पूछे जाके कि ये क्यों हुआ है। लाइक कल सीजे साहब ने शेयर किया था, तो हमारे साथ भी हुआ वहाँ। सो अल्टीमेटली द मैटर केम टू अस, उन्होंने बताया हमारे को कि ऐसे ऐसे मेल आ रही हैं। व्हेन वी चेक्ड अप, वो मेल जनरेट हुई थी कहीं साउथ अफ्रीका में सर्वर से, और कई सारे जजेस के नाम से भी ऐसे हुई। तो देन वी इंस्टीट्यूट इंस्ट्रक्शंस के कुछ भी यहाँ से आए तो आप बिना वेरिफिकेशन के कुछ नहीं करेंगे अगर कोर्ट से कोई भी मेल आती है। देन एक व्हाट्सएप का वो शुरू हो गया, उसमें मेरी पिक्चर लगी थी, उसमें मैसेज आ रहे हैं, तो वो पता लगा, तो उसको वेरीफाई किया तो वो नंबर निकला महाराष्ट्र का कहीं का। और महाराष्ट्र में जस्टिस दीपंकर दत्ता उस टाइम चीफ थे, तो आई रिक्वेस्टेड हिम, तो उन्होंने पता किया कि किसी ओल्ड लेडी का नंबर था। तो वो कहने लगे जी मेरे को पता नहीं है, मैं तो यूज़ नहीं करती, किसी ने यूज़ कर लिया होगा, क्या कर दिया, बट वट एवर इज़ वो वहाँ मिला। और एक नंबर तो हमारे को मिला, क्योंकि वो कई सारे जनरेट हुए थे, जो लखनऊ में जनरेट किया किसी एडवोकेट ने, ही हैड स्टार्टेड सेंडिंग मैसेजेस। तो उसको तो खैर हमने अरेस्ट कर लिया था वहाँ पे। अभी जब मैं दिल्ली में था तो मेरे पास एक टेलीफोन आता है कि जी मैं फ़लाँ सब इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ पहलगाम से, जहाँ पहलगाम अटैक हुआ था अभी, कि जी आपसे कुछ बात करनी है ये वो। तो मैंने खैर टेलीफोन बंद कर दिया, मैंने कहा ये तो फेक लग रहा है। व्हेन वी वेरीफाइड, वो नंबर उड़ीसा का निकला, तो उड़ीसा से फिर ट्रैक किया उन्होंने, उसके बाद फिर वो नंबर बंद हो जाते हैं एक्चुअली। सो ये बड़ी डिफ़िकल्टी है। ये सब कुछ जो है सोसाइटी में चल रहा है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे को कैसे इससे केयरफुल रहना है और कैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे बेसिकली। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है कि हमारे को अवेयरनेस, और अवेयरनेस की प्रॉब्लम इवन लिटरेट आदमियों की भी प्रॉब्लम है। अब आपने बहुत सारे जो एक्सटॉर्शन के केस देखे हैं, उसमें कितने एजुकेटेड लोग भी अपने लाखों करोड़ों रुपए गंवा चुके हैं। लुधियाना के केस है कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उससे उन्होंने डिजिटल अरेस्ट करके करोड़ों रुपए ट्रांसफ़र करा लिए, ही इज़ एन इंडस्ट्रियलिस्ट। और ऐसे ही बहुत सारे एजुकेटेड लोगों के बारे में आता है। अब उसकी प्रॉब्लम हमारे यहाँ
अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकल देखेंगे तो पॉपुलेशन अबाउट 145 करोड़ की है और लिटरेसी रेट 74% में अबाउट 107 करोड़ है। तो यानी कि 38 करोड़ तो पॉपुलेशन हमारी इलिटरेट है, जिसको वैसे भी कुछ नहीं पता, ये साइबर की तो बात दूर की है। और उसमें भी अगर आप लगाएं तो अबाउट 25% पॉपुलेशन अबाउट 1 to 14 ईयर्स है, जो 35 करोड़ के करीब है। उसमें भी टेलीफोन थोड़े कम यूज़ होते हैं, होते तो हैं आजकल बच्चे। और 145 करोड़ में अब आपके पास 115 करोड़ तो मोबाइल के कनेक्शन हैं। तो आप मोबाइल कनेक्शंस का कितना स्प्रेड है आप ये देखें। और इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं अबाउट 100 करोड़ आदमी। तो ये सारे के सारे उस नेट में फंसते हैं। और उसके बाद अब क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शन बैंकिंग से हैं, तो हमारे बैंक अकाउंट अबाउट 90% आदमियों के पास बैंक अकाउंट है। क्यों? वो जो गवर्नमेंट की स्कीम थी जनधन में, उसमें डायरेक्ट ट्रांसफ़र की और है ये सारी चीज़ें, उसके कारण उन्होंने खोले सारे। उसका पॉजिटिव पार्ट भी है, खैर दैट्स नॉट द इशू है। तो कल आपको भाटी साहब ने बताया कि कितनी लार्ज नंबर ऑफ लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस और ये क्राइम हो रहा है। और इस क्राइम का अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज देखें तो ऑलमोस्ट पता नहीं 200 या 300% पर एनम के हिसाब से बढ़ रहा है इतनी स्पीड से। और उसमें अगर आप बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस लगाएं, यूपीआई वगैरह है, वो तो बहुत लार्ज नंबर है। अब ये सारे कहाँ से करते हैं अगर हम देखें इसको, तो कहीं ना कहीं से तो हमारा डाटा ले रहे हैं। पर हम अब क्या करते हैं, हम अपना सारा डाटा अपने आप दे रहे हैं। हमने कोर्ट में बहुत जोर के केस लड़ा, हमारे बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट्स ने राइट टू प्राइवेसी पे बहुत बड़ी जजमेंट भी ली, रनिंग इनटू लार्ज नंबर ऑफ पेजेस। अब हम फेसबुक पे जाएं तो हम सवेरे उठ के ही अपना सब कुछ अपलोड करते हैं। और बहुत सारे सोशल मीडिया के पोर्टल हैं, हम सब कुछ अपना अपलोड करते हैं। तो हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है 100 से भी ज़्यादा परसेंटेज में वो पब्लिक डोमेन में है। आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या खाया, कोई रेस्टोरेंट में गया हो वहाँ फ़ोटो खींच के अपलोड करता है इमीडिएटली कि मैं यहाँ बैठ के खाना खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, या कहीं भी जा रहे हैं। तो यानी कि हमारी फैमिली क्या है, कोई सेलिब्रेशन है, सब हम अपलोड कर रहे हैं। दूसरी चीज़, दुनिया भर की ऐप है, आपने देखी, तो वो ऐप आप डाउनलोड करोगे तो यूज़ करने से पहले वो आपसे 20-30 चीज़ों पे यस करवाएगा जो आप पढ़ते भी नहीं हैं। तो वो हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो टेलीफोन के अंदर है, ऑल पॉसिबल इंफॉर्मेशन आपसे यस करके उसने एक्सेस ले ली। और वही इंफॉर्मेशन वो आपको तो मुफ्त दे रहा है, हम तो बहुत खुश हैं कि ये सारी सर्विस फ्री मिल रही है। उससे पहले आप लगाओ याहू सर्च इंजन, गूगल, और ये बहुत सारे सर्च इंजन थे, तो हमने कहा सब मुफ्त में मिल रहा है, ईमेल आईडी मिल रही है, सारा कुछ यूज़ करो। यूज़ करके क्या हुआ कि हमने अपना सारा पर्सनल डाटा दे दिया उनको, हमारी चॉइसेस दे दी हमने उनको कि हम क्या करते हैं, किस साइट को सर्फ करते हैं। तो आप ये देखिए क्या हो रहा है कि वो वही तरह उसी तरह की ऐड आपको आने लग जाती है। आप एक टिकट सर्च करो ना, आपको मेरे को दिल्ली से जयपुर जाना है, आपको जयपुर के होटल की ऐड आ जाएगी इमीडिएटली। ये क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये हम अपनी तरफ से इतना डाटा, इतनी इंफॉर्मेशन अपनी दे रहे हैं जिसको वो मिसयूज़ करते हैं, फिर वो बेचते हैं इस डाटा को एडवर्टीजमेंट के लिए। अब आपने देखा ना कितनी एडवर्टीजमेंट आती है हर एक चीज़ पे। सो ये डाटा वो सेल करते हैं, और सेल करते हैं कुछ तो चलो ये एडवर्टीजमेंट तक लिमिटेड है, कुछ फिर ये डाटा जाता है डार्क वेब में, जहाँ से वो फिर ये सारी चीज़ें क्राइम कमिट होते हैं। क्योंकि आपकी सारी बैंकिंग डिटेल, आपकी सारी चीज़ें, क्योंकि दे कैन जस्ट आपके टेलीफोन में एंटर करके आपके बहुत सारे पासवर्ड ये वो सब चीज़ें ले सकते हैं। बहुत टेक्नोलॉजिकल। एक बारी हमारे भोपाल में प्रोग्राम हुआ था एक, तो वहाँ पे एक हमने साइबर एक्सपर्ट बुलाया था, तो जो कुछ उसने हमारे को चीज़ें बताई तो हमारे को देख के ये डर लगता था इस टेलीफोन को तो कहीं गार्बेज में, मतलब गिरने वाला काम भी नहीं, जला ही देना चाहिए। जितने डेंजरस चीज़ें उसने बताई। ये एक मोबाइल फ़ोन आपके पास पड़ा है, आपकी सारी कन्वर्सेशन सुनता है, ये सारी की सारी रिकॉर्ड होती हैं। अगर कोई यूज़ करना चाहे, आप 4 जजेस 4 आदमी बैठ के बात कर रहे हैं, तो क्या डिस्कस कर रहे हैं वो सब पता है कहीं सर्वर में। इफ़ दे वांट टू ट्रैक दे कैन ट्रैक इट, कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो ये बहुत डेंजरस चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी में जो आई हैं। आप देखते हैं कि कई दफ़ा आपको आ जाएगा कि आप 1 साल में कहाँ कहाँ गए थे, आती है ना आपको, कहाँ कहाँ आपकी फ़ोटो खींची है, वो पूरी वीडियो बना के आपको दे देगा। तो क्या है, सारी चीज़ें उनके पास सब कुछ है। तो ये बहुत डेंजरस चीज़ें हैं जो हमारे पास आ गई हैं। और दूसरी चीज़, ये एआई की भी बात आपको बताऊं मैं। अब हमने मुफ्त में बहुत सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ जो थी वो यूज़ करनी शुरू कर दी। अब उनको ये सारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर हैं, जो आपके चैट जीपीटी है, कुछ कई सारे नाम हैं, वो कैसे बने, उसमें अगर आप निकाल के देखेंगे बिलियंस ऑफ वर्ड्स एंड फोटोग्राफ्स जो थी उसको कलेक्ट किया उन्होंने, और उसके बाद वो सॉफ्टवेयर बना, क्योंकि उनको चाहिए मटेरियल, उसके बिना नहीं बन सकता। और हम ये सोच रहे थे सब मुफ्त में यूज़ करो।
तो उन्होंने सब कोलेट करके और वो बना दिए। अब हम फिर भी उसको सर्च करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है कि वो फिर अपने उसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल वो बोलते हैं, तो फिर वो सेल्फ लर्निंग प्रोसेस में और इम्प्रूव करते हैं उसको, और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। और नहीं मिलता डाटा तो वो सिंथेटिक डाटा क्रिएट करते हैं। तभी तो वो आपने देखा ना कि जो कोर्ट में नॉन एग्जिस्टिंग साइटेशन कहाँ से आती है, वो डाटा तो है नहीं उनके पास कोई, आपने कुछ पूछा उसने जनरेट करके दे दिया आपको। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये अब यहाँ पे भी बहुत हो गया, ये खाली यहाँ नहीं है, ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर रेगुलरली नॉन एग्जिस्टेंट साइटेशंस कोर्ट में साइट हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है। अभी आई थिंक फरवरी में भी एक केस आया, ह्यूज कॉस्ट वाज इम्पोज्ड ऑन दैट पर्सन। तो ये बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। वही बात जैसे ब्रदर ने बताई कि हमारे को केयरफुल रहने की ज़रूरत है, पर हम एज लिटरेट पर्सनस तो केयरफुल रह सकते हैं, पर हम जो इलिटरेट आदमी हैं उसका क्या करेंगे। अब आप बहुत सारे स्कैम हैं, पर एक चीज़ मैं देख रहा था, ये कुछ डाटा प्रोबेबली NCRB पे है कहीं, क्योंकि अब अथॉरिटी तो कुछ पता नहीं लगता कौन सी वेबसाइट है। जैसे कि जितना क्राइम हुआ है ना उसमें कन्विक्शन रेट साइबर में प्रोबेबली 27% है, शायद आपको ज़्यादा आइडिया होगा, यू रिमेन इन टच। और अबाउट 62% जो है वो इन्वेस्टिगेशन में ही है। और उसका एक रीज़न जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हमारा भी सिस्टम पूरी तरह ट्रेंड नहीं है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में भी, और उसके बाद प्रोबेबली हमारे जुडिशल सिस्टम में भी वी नीड टू ट्रेन आवर जजेस टू टेक केयर ऑफ दिस चैलेंज जो आ गया हमारे पास। क्योंकि हम, एक वो पुरानी कहावत है ना कि बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर ले, पर हम आंखें बंद करके चलेगा नहीं कहा, आंखें बंद करेंगे तो बिल्ली तो है ही है वहाँ पे। तो इसलिए वी हैव टू बी रेडी टू फेस दिस चैलेंज। बहुत सारे, अभी भी आया था एक, कल परसों आपने पेपर में देखा होगा, कोई 70,000 करोड़ का कोई टैक्सेशन उन्होंने AI से डिटेक्ट कर लिया। ऐसे ही देयर आर नंबर ऑफ केसेस वो हम रेगुलर पढ़ते ही हैं। अब प्रॉब्लम जो एक आ रही है, जो हमारे पास कोर्ट में भी आ रही है, आपके पास भी आती होगी, जो ये सारे साइबर क्राइम के केसेस हैं बहुत सारे जिसमें मनी ट्रांजैक्शंस हैं। जब हमारे पास बेल के लिए कोई आदमी आता है, क्योंकि वहाँ तक वही पहुँचती है मैटर जो आपसे होके जाते हैं, ही सेज कि जी मैं तो एक पूरा रेडी वाला हूँ, ये मेरी तो छोटी सी दुकान है, और किसी ने मेरा मोबाइल नंबर ले लिया था, उसने मेरे से पासवर्ड भी पूछ लिया, एंड सम फेयरली सेज कि जी मेरे को तो 20,000 रुपये दिए थे उसने, मैंने कहा चलो ले लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। अब वो आदमी तो क्या करेगा, उसके पास कुछ है नहीं, उसने सिर्फ 20,000 10,000 के लालच में अपना अकाउंट लैंड कर दिया। ये बहुत प्रेवलेंट है। तो ये एक चीज़ जो है हमारे को उन आदमियों को एजुकेट करने की ज़रूरत है सबसे पहले तो, कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है। अगर आप इसको किसी को लेंड करेंगे या किसी आदमी को अपना अकाउंट देंगे, बट इन एनी केस जैसे हमने कहा कि भी अगर आप मोबाइल से सारी एक्सेस दे रहे हैं तो लोग एक्सेस करके आपके डॉक्यूमेंट वहाँ से आधार कार्ड पैन कार्ड लेके अकाउंट भी खोल देंगे आपके नाम का। ऐसे भी बहुत सारे इंस्टेंस हैं, क्योंकि आप उनके पास सब कुछ है। बैंकिंग से बहुत सारा डाटा चला जाता है, कोई ऑफिसर वहाँ पे लीक कर देगा डाटा, वहाँ सारी चीज़ें हैं आपकी। और एक बहुत बड़ी चीज़ किसी ने बताई थी एक बार कि आप डॉक्यूमेंट दो तो उस पर अटेस्ट करके लिखो कि मैंने किस पर्पज़ के लिए किस दिन दिया, पर आजकल AI से तो कुछ भी पॉसिबल है, वो सब लाइनें साफ़ कर देंगे, वो डॉक्यूमेंट प्लेन कर देंगे। अभी मेरे को उसने बताया था वहाँ पे, ही सेज कि जी आप श्रेडिंग मशीन में भी कोई डॉक्यूमेंट श्रेड करके गिरा दो तो ऐसे टूल्स आ गए कि उसको डॉक्यूमेंट को बना देगा वो। आप ये देखिए, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें जो टेक्नोलॉजी से आगे आगे चल रही हैं। प्रोविजंस तो बहुत हैं, ब्रदर ने बताया, पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे को कैसे यूज़ करने हैं। चैलेंजेस रेगुलरली आ रहे हैं। ज्यूरिसडिक्शन की बात तो बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया है, क्योंकि इसका कोई बाउंड्री तो है ही नहीं, बट उसमें बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि अगर क्राइम कमिट हुआ है एक स्टेट से मल्टीपल स्टेट्स में है, तो आई थिंक क्या कोऑर्डिनेशन है, क्या होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हमारे आपको पता ही है कुछ स्टेट्स में रिलेशन सेंटर से बहुत अच्छे नहीं चलते, वो नहीं चलते तो फिर वो कहेंगे नहीं जी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे या वो करेगा। मतलब ये एक चैलेंज है बहुत बड़ा, जिसके अंदर बहुत कोऑर्डिनेशन चाहिए। हमारे पास एक मैटर आया था कि एक इंडियन था कोई, उसने डार्क वेब पे अकाउंट खोल के एंड ही वाज सेलिंग ड्रग्स, तो अमेरिका में उसको पकड़ा, उसको फिर यहाँ ले आए थे हम, इंडिया में भेज दिया उन्होंने, एंड लॉट ऑफ क्रिप्टो करेंसी और उससे पास मिली थी, तो वो जेल में है। तो इसमें कुछ कंट्रीज़ में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज साइन हुई हुई हैं जो आपस में असिस्ट करती हैं, और वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। ये वो तो गवर्नमेंट लेवल पे होगा। और एक चैलेंज जो अभी ये साइबर के कारण ही कोर्ट में आएगा कि एविडेंस आपके पास ऐसी आएगी जो फेक है।
अभी मेरे को एक एडवोकेट एक प्रोग्राम में बता रहा था, कहता जी मेरे पास एक मैट्रिमोनियल केस में एक स्पाउस, वन ऑफ दी स्पाउस आया, वो कहने लगे जी ये मटेरियल है, मेरा केस फाइल कर दो। उसने कहा जी इसकी आप सर्टिफिकेट दो कुछ, हो कहते जी ये तो सब AI जनरेटेड है, ये बाकी आपको देखना है क्या करना है। तो ये लोगों ने शुरू कर दिया। फोटोग्राफ्स आप जनरेट कर सकते हो क्योंकि आपकी सारी की सारी फेसबुक पे हैं, वहाँ से किसी का फेस किसी का कुछ बदल लो। ऐसे ही आपकी सारी डिटेल है, आप कहाँ जा रहे हो क्या है सब कुछ है ना, तो उसके साथ लिंक करना है उन्होंने कि जी ये देखो ये स्पाउस तो यहाँ घूम रहा था, ये आदमी साथ था उसके, आप किसी ने फेस चेंज कर दिया। तो ये चैलेंज आ रहा है बहुत बड़ा, आप एकदम देख के तो समझेंगे क्या है। फिर उसके बाद आपकी जो कोर्ट में आ गई तो आप क्या करेंगे। कमर्शियल लिटिगेशन में बहुत सारी चीज़ें, ईमेल एंड ऑल दैट, अब सर्वर बाहर हैं, एविडेंस की प्रॉब्लम, 65B जो था पुराना उसके एक सर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम, और ख़ासकर जो इलिटरेट आदमी है अगर उसके मोबाइल में कुछ है उसको तो कुछ पता ही नहीं है, वहाँ से सर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, ही में डिलीट इट। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसको पकड़ने के लिए में भी हमारे को AI के ही टूल्स चाहिएंगे, क्योंकि पहले एक बात हो रही थी कि जो AI जनरेटेड वीडियोस या कुछ फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पे चलती हैं तो उसके ऊपर कोई वाटरमार्क होना चाहिए। अब प्रोबेबली नए रूल्स में कुछ आई है चीज़ ये कि वाटरमार्क होगा, सो दैट उसको लोग इन्जॉयमेंट के लिए समझें, ना कि उसको रियल समझें। तो ये एक प्रॉब्लम जो थी ये है। अच्छा, अब दूसरी प्रॉब्लम इसकी मैंने देखी, एक बारी मैंने प्रोग्राम अटेंड किया, FSL यूनिवर्सिटी है हमारी गुजरात में, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। ये बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि हमारी जितनी FSL लैब हैं उसके अंदर अमाउंट 40% पोस्टें खाली पड़ी हैं नेशनल लेवल पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो आपको पता है, आप कोर्ट में आते हैं कि टेस्ट की रिपोर्ट्स कितनी लेट आती हैं। और साइबर के बारे में तो प्रोबेबली देयर आर वेरी फ्यू लैब्स जो नेशनल लेवल पे ये सारा कुछ करती हैं, बट वहाँ बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं। तो एक ये चैलेंज है हमारे पास, क्योंकि इसमें डिले फेटल है किसी भी चीज़ में। अगर इन्वेस्टिगेशन में हो गया, कहीं CCTV से आपको फुटेज लेनी है, उसकी रिकॉर्डिंग 1 महीने की है, आपने इन्वेस्टिगेशन में 1.5 महीना लगा दिया तो वो तो वो तो वॉश ऑफ हो जाएगी, साइकिल है। तो ये बहुत फास्ट चाहिए, और उसके लिए चाहिए हमारे को ट्रेनिंग। लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उन्होंने बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस इशू कर रखी हैं, इफ़ यू गो फॉर सर्च, और वहाँ कंप्यूटर सिस्टम ही है सारे अकाउंटिंग के लिए अब, तो उसमें आप कैसे डाटा रिट्रीव करेंगे, क्या करेंगे, सेफगार्ड्स एंड ऑल दैट। तो मे बी इसमें कुछ ना कुछ इस तरह की गाइडलाइंस जो हैं वो चाहिएगी हमारे को, क्योंकि ये चैलेंजिंग टाइम है। हमने अबाउट 10 साल पहले एक कमेटी बनी थी, तो एक रूल्स बनाए थे हाउ टू रिसीव, स्टोर एंड रिट्रीव इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो भी। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पहले आपको पता है कोर्ट में जो CD आती थी वो उसको सुए से मार के सुराख करके पेपर बुक से लगा देते थे, या पेन ड्राइव किसी ने लगा देनी। तो दिस इज़ नॉट द वे द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज लेड इन कोर्ट। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद मैं एक चीज़ सोच रहा था कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। कोविड के टाइम में हमारे को पता है कि एजुकेशन सिस्टम, इवन स्कूल, प्राइमरी स्कूल लेवल से लोगों के बच्चों के हाथ में गैजेट्स दे दिए हमने, जो अदरवाइज़ हम कहते थे कि नहीं देने हैं उनको। तो उससे आदत डेवलप हो गई बच्चों की कि ये चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, क्योंकि पढ़ने के लिए दिया था। बट इन एनी केस अब तो उस चीज़ों पे थोड़ी ब्रेक है। बट हम क्या कर सकते हैं कि आई थिंक ये एजुकेशन हमारे को सबसे पहले तो स्कूल में इम्पार्ट करनी पड़ेगी, मे बी एज ए सब्जेक्ट ऑल्सो आई कैन से। मतलब हमारे जो स्कूल एजुकेशन बोर्ड हैं या CBSE है कुछ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है उनको वहीं से हमारे को इसके बारे में, क्योंकि एक बच्चा अगर कोई चीज़ सीखेगा स्कूल में तो वो अपने घर में भी 4 आदमियों को बताएगा। अगर उसमें से इलिटरेट भी हैं कुछ आदमी, सेमी लिटरेट भी हैं, उनको भी सेंसिटाइज कर देगा। तो एक बच्चे के पढ़ने से 4 आदमियों को और मे बी और भी एडिशनल को वो बता सकता है इस बात को। दूसरी चीज़, हमारे पास बहुत सारे लीगल एड क्लिनिक हैं, स्कूल कॉलेजेस में खोल रखे हैं हमने। वहाँ पे हम ऐसे कोई प्रोग्राम, कोई सेमिनार कुछ भी करें उनको, सो दैट स्कूल में वो और सेमिनार, और दे कैन गो टू अदर प्लेसेस ऑल्सो। हमारे पास PLV हैं इतने ग्राउंड लेवल पे। अगर आप राजस्थान में देखें तो हमारे पास कोई अराउंड 1400-1500 PLVs हैं शायद, जो मेरे को पता लगा है। तो वो सब विलेज लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे रहते हैं। तो वाई नॉट टू एंगेज देम, कि भी आप भी जो विलेज लेवल पे भी है, जहाँ भी आप कर सकते हो वहाँ लोगों को सेंसिटाइज करो इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक और आपको बात बताता हूँ कि यहाँ पे भी वो प्रॉब्लम होगी। पंजाब में एक प्रॉब्लम क्या आई हमारे पास, जितने इंश्योरेंस के क्लेम आते थे उसमें पुराने ट्रैक्टर्स की इंश्योरेंस नहीं होती थी। और ये एक फैक्ट है जो हमने फिर देखा वहाँ पे, कि जो ट्रैक्टर किसी ने नया ख़रीदा है तो वो जितने साल तक उसकी इंस्टॉलमेंट चल रही है तो इंश्योरेंस है,
उसके बाद बैंक का काम खत्म हुआ तो इंश्योरेंस नहीं कराते हो। ये बहुत सारे केसेस में देखा। और सेल के बाद ट्रांसफ़र का भी बहुत रिवाज कम है। पोजेशन ट्रांसफ़र कर दिया, पैसे ले लिए, काम खत्म, किसी ने आरसी ट्रांसफ़र नहीं कराई। अल्टीमेटली एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद लायबिलिटी तो रजिस्टर्ड ओनर की आ गई, इंश्योरेंस है नहीं, तो लोगों की ज़मीनें बिक गई उसमें। तो हमने फिर एक थोड़ा सा प्रोग्राम वहाँ पे शुरू किया लोगों को एजुकेट करने का। वहाँ हमारे गुरुद्वारे से बहुत चीज़ें चलती हैं और ये एक अच्छे काम के लिए यूज़ होती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो वहाँ से भी मैसेज दिए और उनको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि ये कुछ हो गया था, किसी ने नहीं कराया, और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के सिर्फ 1000-2000 रुपये लगते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कराई। तो ऐसे ही हमारे को आई थिंक ये बहुत बड़ी मुहिम चला के लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा इसके बारे में, तभी हम कुछ सेफ गार्ड कर सकेंगे। अदरवाइज़ बहुत सारे अमीर लोग तो बहुत सारे आ रहे हैं इसमें, पर गरीब भी बहुत सारे फंस रहे हैं, बेचारों के थोड़े बहुत जो पैसे हैं वो चले जाते हैं। डाटा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें, क्योंकि डाटा हमारे पास भी बहुत है, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास है। तो वो आई थिंक हमारे को सिक्योर करना पड़ेगा सो दैट ये डाटा जो है लीकेज ना हो। तभी फिर वहाँ से ये जो सारे फ्रॉड की चांसेस हैं वो बढ़ते हैं, तो वो डाटा से ही हैं। क्योंकि हमारी वॉइस है, और वॉइस तो खैर टेलीफोन पे, तभी कल जैसे बताया था सीएम साहब ने भी बताया कि कोई अननोन नंबर अगर आपके वहीं सेव नहीं है तो आप उठाते ही नहीं हो, अब ये हो गया। पर आजकल प्रॉब्लम ये है कि जो सुनने में आया कि वो नंबर भी चेंज करके आपको कॉल कर सकते हैं, तो यू विल फाइंड कि शायद आपका ही किसी का नंबर है। तो इतने सारे टूल्स जो हैं, ये बड़ा चैलेंजिंग काम है। तो आई थिंक ये जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई है बहुत टाइमली और बहुत वेल थॉट ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर है, फॉर विच ऑल आई थिंक राजस्थान हाई कोर्ट ऑल्सो, लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑल्सो, इनको बहुत बहुत इस बात की मुबारकबाद हो। मैं तो यही कहूँगा कि ये हमारे लिए भी बड़ा लर्निंग प्रोसेस है, क्योंकि कोर्ट में भी हम कोई केस आएगा तो इतनी डिटेल में नहीं पढ़ते, तो इसमें थोड़ा सा पढ़ने का मौका भी मिल जाता है हमारे को। विद ऑल दीज वर्ड्स आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जय हिंद। Thank you, Honorable. Thank you very much. Now, may I request Honorable Mr. Justice Sameer Jain, Judge, Rajasthan High Court, Jaipur, who is also a co-chair. Sir will speak on jurisdictional issues in adjudication of cyber crimes and case studies. Good morning. Honorable Justice Ehsanullah Amanuddin sir, Justice Rajesh Bindal sahab, Justice Prasanna Varale sahab, Shri Koteshwar Singh sahab, my brothers and sisters, judicial officers, officers for the state of Rajasthan, sitting on the dais, Super Cop, Director General of Police Shri Rajiv Sharma, IPS Suman Maliwal, the paper writers and the speakers for the day, respected dignitaries. The topic which is assigned to me for the day is jurisdictional issues in adjudication of cyber crimes with case studies. We gather today at a defining moment in a legal history, an era where crime has shed its physical form and assumed a digital shadow. The law, once accustomed to footprints and fingerprints, must now grapple with IP addresses and encrypted trails. We stand at crossroads where liberty must be preserved, yet liability must be firmly imposed. I assume we all came across to such instances or cases of cyber fraud and irregularities. My own such encounter was a few months ago while presiding over a bail roster. I encountered a matter that left a lasting impression. The accused was a young, 18 years old boy, educated individual, technologically adept, socially aware, and seemingly well integrated into society. Yet, behind a screen, he had allegedly orchestrated a chain of cyber frauds. On 1930, he vowed having a complaint around 215 numbers, which were having his nexus from Tamil Nadu, Maharashtra, Bihar, and other states of Rajasthan. That day, it became evident to me that cybercrime is no longer a peripheral technical anomaly. It's a structural threat to economic security, personal dignity, and national sovereignty. On the map of Rajasthan, there is a place called Deeg. While I was hearing in that roster,
one of the advocates of the record, he just submitted that, sir, the age group of the accused is from 18 to say 25 years. Even the social functions like marriages, the divorce, which is this dowry which is given, is also redefined. In the dowry, they give 1,000 SIMs. The girls are coming from Bangladesh and there is interstate marriages just to boost cybercrime. Because of unemployment, that area has assumed a special point on the map. Cybercrime, it is borderless, faceless, and instantaneous, and thus gives rise to the most alarming issue of jurisdiction, prompt adjudication, the method a judicial body can adapt, especially when the offences as per the statutory and legislative intent are compoundable, bailable, and non-cognizable in nature. However, its after effects are barbaric, not only upon the victim, but also to the society. The argument which is drawn normally in the bail roster is the accused, the complaint is not by a private person, but by a police authority. The person is 18 years of age, having no criminal antecedent, and he is sole breadwinner for the family, and the matter is bailable. No private complaint is coming in front of you. While going deep into the matter, we asked for the criminal antecedents, not as per the police records, but we asked it on the portal, that is 1930. And to the shock and surprise, most of the persons were having more than dozens of antecedents. So the antecedent theory, as per police record, is a myth, misnomer, vis-a-vis cyber crimes. State, in case of cyber monetary frauds like crypto siphoning, transferring of money saved and deposited in the bank accounts, unlawful and illegal payments, promoting illegal trade, smuggling terrorism, youth which gets emotionally disturbed and slip into depression upon any trivial issue, and the list is never ending. Upon reading various judicial precedents and literature, I deduced that cybercrime is changing face of crime. We are no longer confronting conventional theft, forgery, or cheating in their traditional manifestations. Instead, we face an evolved and technologically empowered adversary. It's a saying that technology evolves faster than legislation, and that is because this conference is there. Technologically, we are advanced. We are in the era of smartphone. A mobile is more than a computer set as on day in a hand. A 2-year-old boy, rather I'll say 6 months old infant, is having a mobile in his hand. That is the era we are living in. At the heart of India's cyber legal framework lies the Information Technology Act 2000, which remains the cornerstone legislation in combating cyber offenses. Yet adjudication in cyber matters is far from straightforward. Members of the judiciary are increasingly required to interpret complex cases involving technical digital evidence, cross-border jurisdictional challenges, and involving statutory frameworks. One of the foremost jurisdictional hurdles is the limited judicial precedent in emerging technological domains. Cyber jurisprudence is still evolving, and courts frequently face issues where guiding case laws are sparse, especially in matters concerning new technologies and automated digital conduct. Another major challenge is the administrability of the digital evidence. Section 65B. We are dealing it again and again. Recently, sitting in a criminal roster, we have encountered that yes, Arjun Pandit was the last case. Even that is modified. Chandrabhan and thereafter Shubha's judgment has modified and liberalized. A very liberal approach has to be taken qua the same, considering that the laws which we have made are with the standards of Scotland Yard, and the investigation which is done with the Indian standards. So we have to adapt a theory, how best we can result into interest of justice. So some Supreme Court judgments are there on the topic. When I was analyzing the different sessions of the day, there was merely reference of Arjun Pandit, but I think much water has flown thereafter. The courts are compelled to balance technical compliances with substantive justice. Now, with this background, I touch upon the statutory part,
how jurisdictional issues in adjudication of cyber crimes have to be dealt with. Cyberspace refers to the interdependent network of information, technology infrastructures, including the internet, telecommunications, networks, computer systems, embedded processors, website, emails, and electronic devices. Cyber crimes are broadly categorized into traditional crimes committed electronically, such as theft and defamation, and crimes where the computer itself is attacked. The relevant provisions under the IT Act 2000 are multifarious. In my paper, I have written more than 24 particular definitions and sections are there which are relevant, but I'll like to read 3 limited sections which are apt for the topic given for me for the day are. And I think it's better because the provisions are very small, I like to read it out. First, I'll move to section 1 of the IT Act. It shall extend to whole of India and save as otherwise provided in this act. It applies, I'll lay emphasis on this, it applies also to any offense or contravention thereunder committed outside India by any person. Meaning thereby, if we have an effect in India, it will not be limited to a physical being in India, but yes, we'll have a jurisdiction if the act is committed outside and impact is in India. It is a very small interpretation which can be enlarged, but this is a relied upon section. Then I'll like to read section 75. Act to apply for offense or contravention committed outside India. Subject to the provisions of subsection 2, the provisions of this act shall apply also to any offense or contravention committed outside India by any person irrespective of his nationality. So these are very relevant sections. I think the legislature in its wisdom and the formulators have thought in advance what will be the vital effects. If the impact, if the cause, if the incidence is affecting territorial boundaries of India, and indirectly that is the effect, our extended hands, we can raise our hands so long to reach any part of the universe. That is my interpretation. Then there is a very relevant section, section 78, and I like Director General of Police State of Rajasthan to please note, because where the deficiencies are coming and the whole effective case of cybercrime lapses on account of foundational issues. 78, power to investigate offenses. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, a police officer not below the rank of inspector shall investigate any offense under this act. What we are noting is day in and day out that in the FIRs and when the application is there in the charge sheet, the provisions of IT Act are censored out, though it is a cyber crime, and which are very vital and vital. On the jurisdictional issue that if inspector of police, maybe on lack of resources or whatsoever is doing it, the everything will erase out and the culprit will go scot-free. Now, relevant provisions under the Bharatiya Nyaya Sanhita, that is BNS. Although the IT Act is special law, several BNS provisions apply to cyber offenses where traditional crimes are committed electronically. Like 420 equivalent to 318 and all. There are dozens of sections which I have noted it. I'll not like to reiterate, but yes, at a relevant point, I will make an emphasis on appropriate sections. Key observations. The IT Act is a special legislation, specially addressing cyber offenses. The BNS applies when traditional criminal offenses are committed through electronic means. Courts often invoke both statutes together, especially in fraud, obscenity, identity theft, and cyber harassment cases. Cyber jurisdiction may be national, transnational, or international. National jurisdiction applies where domestic law grants courts authority, such as offenses under the IT Act. Cyber crimes are often transnational, involving multiple countries. Jurisdictional challenges arise because internet content has a global audience, websites can shift locations, and hosting may be split across territories.
determining the location of users or servers is often difficult. As yesterday we were discussing that approximately a dozen threats have come to our High Court, and when it was traced out, it was from some myth server at Switzerland or maybe Cambodia or elsewhere. Now, theories of jurisdiction include subjective territoriality, jurisdiction where the act occurs, simpliciter, section 2 of the IPC, read with section 1(3) of the IPC, read with IT Act 1(2). If any act occurs within the territory of India, definitely jurisdiction will be there. Objective territoriality or effects doctrine. As we say under 226, cause of action is bundle of act and it arises where effect or impact is there. Similarly, this jurisdictional doctrine says jurisdiction where consequences ensue. In this regard, again, provisions of section 199 BNSS, read from 197 to 208. I like to read the relevant provisions of the same. Chapter 14 of BNSS 2023. There is a little shift from the earlier laws, and I think legislature was aware, though fundamentally there is a replica, but there are few changes. Jurisdiction of the criminal courts in inquiries and trials. Ordinary place of inquiry and trial. Every offense shall ordinarily be inquired and tried by a court within whose territorial jurisdiction it was committed. Now, section 199, which is very important, offense triable where act is done or consequence ensues or where the impact is there. When act is an offense by reason of anything which has been done and of a consequence which has ensued, the offense may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction such thing has been done or such consequence has ensued. Place of trial where act is an offense by reason of relation to other offense. Even an indirect offense which is happening, that can also be tried, and the Act BNSS is giving a liberal interpretation and specific statute regarding the same. Now, a very important section, that is 208, offense committed outside India. When an offense is committed outside India by a citizen of India, whether on the high sea or elsewhere, the only 208 has a little distinct feature other than this is then when any offense is committed outside India but by an Indian citizen. That is the only thing. So it is a little special provision having a special effect, not a general effect. Now, apart from that, there are other territorial jurisdiction. How, if the court wants, they can assume the jurisdiction, giving a liberal approach and to give substantive justice to the person who has suffered. Nationality principle, based on nationality of the accused, as defined under section 1(5) of BNS. I'll like to read that also. It's an interesting provision. The provision of this Sanhita shall also apply to an offense committed by any citizen of India in any place without and beyond India. Any person or any ship, wherever it may be registered in India, wherever it may be, any person in place without and beyond India committing offense targeting a computer resource located in India. That is a very important provision wherein we can assume a jurisdiction. And there is an explanation to the word offense includes every act committed outside India, which if committed in India would be punishable under this Sanhita. So a very broad, enlarged definition is there. Virtually, BNS is saying, qua cyber crime, I give you liberty to catch anybody if he is effecting cyber of Indian country. We are giving you all liberty to, yes, you will have a jurisdiction. That is what is my interpretation reading out from it. Now, the case laws. Well,
Not much of the case laws are there, but yes, Apex Court has intervened in few cases. One of the very interesting case laws is India TV, Independent News Services Private Limited versus India Broadcasting Live. The facts of that case was that a Hindi news channel, India TV, launched in March 2004, was run by the plaintiffs. The trademark India TV was adopted in 2002. The domain name was indiatv.com, was owned by the plaintiff, which was registered in 2003. The channel was made available for live streaming on the said website. The defendant hosted the website. The website contained the words India TV. The defendants lived in USA. Plaintiff filed a case for passing off action in Delhi High Court to prevent defendant from using the domain name indialive.com. While the suit was pending, defendant filed a case in US against the plaintiff seeking a declaration of non-infringement of plaintiff mark by defendant. The issues which were raised were whether the defendant's activities has a sufficient connection with the forum state, that is India, whether the cause of action arises out of the defendant activities within the forum, whether the exercise of jurisdiction would be reasonable. The defendant's website had provisions for subscription to its services which could be availed of by the residents in India. That's interesting. What the Apex Court held was, defendant intended to target Indian residing in India and expatriate Indians. Since the website of defendant was launched in India as well as in Los Angeles, defendant's company has sufficient connection with India. Regarding the effects test, since the plaintiff channel was an Indian news channel made for Indian audiences, any harm alleged to have been caused or to arise to the goodwill reputation of plaintiff would be in India. Therefore, the defendant's case on activities within the jurisdiction of this court has sufficient contacts with the jurisdiction of this court, and the claim of the plaintiff has arisen as a consequence of the activities of defendant within the jurisdiction of this court. This territorial and the trial jurisdiction was with Indian courts. The next judgment, a celebrated judgment, was Ajay Agarwal versus Union of India. Jurisdiction was upheld where consequences occurred in Chandigarh despite acts occurring abroad. Similarly, there were many other judgments on the similar lines. The conclusion which is deduced on this jurisdiction side and all, which I have illustrated from the case laws and reading the bare reading of the statutory provisions, results that yes, the court should take a liberal view in interest of justice if the suffered person or the victim is situated in India. Whatsoever best we can do, maybe the person is situated in Cambodia or not, relying upon these provisions, we should take a stand which may be an extended one, which will fulfill the object of the victim or the accused. To conclude my topic, what I like to say is that it is on account of technology, which is moving faster and fastest than the legislation, we need to overcome the same. We need few judgments as precedents are lacking in the particular field. Crime has migrated from public street to a private screen. That is also, we have seen that a boy, an infant of 6 months to a person who is say touching 100 years, all in their hands are having this IT gadgets. And what Sir has told, Bindal Saab and Amanullah Saab, that yes, it is very fiery. What you are having is an X-ray in the hand. You can be read out what you are thinking. आप WhatsApp पे एक मूवी डालिए और आप देखेंगे कि अगला जो आपके WhatsApp पे जो चीज़ आ रही है, Google पे आ रही है, you will have of the same kind. The AI is reading your mind, it is reading each and everything. So what I like to thank the organizers who have given me this opportunity, and I'll say that yes, it is a topic where a lot of study is required, lot of research is required. Rest, I like to hear the state, what they have to say, the investigation agencies. Thanks a lot, thank you. Thank you, Honorable, thank you very much. Now, may I request Sri Rajiv Kumar Sharma, the Director General of Police, Government of Rajasthan, Jaipur. Sir will be speaking on difficulties encountered in investigating and prosecuting cyber crimes. Thank you, sir.
Honorable Justice Asauddin Amanullah ji, Honorable Justice Rajesh Bindal, Honorable Justice Kuteshwar Singh ji, Honorable Justice Samir Jain, Honorable Justices from Rajasthan High Court and learned judges from district courts, my fellow panelist DIG Suman, and distinguished guests. The topic assigned to me is difficulties encountered in investigating and prosecuting cyber crimes. As we have learned already since yesterday's discourse and this morning's address by Honorable Justices, cybercrime has altered the framework of traditional criminal justice system. And now it's not merely technology concern, but cyber safety is linked to citizen rights as well. BNS, we have seen and already elaborated by Justice Samir Jain sir, has provided some definitions as well as punishments for cyber crimes. But yet, during the course of my presentation, you will see that we are doing still very little considering the vast reach of cyber crime as on the date. This I have taken from the recent conference organized by CBI on cybercrime. So the figures mentioned here are taken from the deliberations. As we can see, the cost of cybercrime was around more than 10 trillion in 2025, which is expected to grow more than 12 trillion this year. And I4C, which is the reporting portal for cybercrime, has been accessed in last 5 years for more than 230 million times. And as on 30th November last year, more than 8.2 million cybercrime related complaints were registered on the portal, of which only 184,000 were converted into FIRs. And 361,000 cyber fraud complaints, the government has been able to safeguard 8,000 crores amount. And also, there have been a lot of cancellation of SIM cards and blocking of IMI numbers of more than 3 lakh mobile devices, but still it does not seem to be enough. Now, what is the trend which we have seen while investigating various cyber crimes? The challenges which we have come across are listed in this slide. And when we see the root cause seems to be the easy availability of mule accounts, especially when it comes to financial transactions, the weak KYC verification, and the ease of banking transactions. It is hampering the investigations of all the cyber fraud complaints which we receive. The VPN servers location abroad. We were discussing the threat being received through email on the security of high courts and other critical installations. And every time we come to a dead end as we start the investigation, the email servers are located abroad, and the kind of information which we are getting back is so restricted and so limited that it is impossible to track the original sender. So that the MLATs which we have some countries does not seem to be enough. The international coordination which we have is not sufficient enough to get us the details which we need to proceed in our investigations. And many times we have seen while we are moving with through the CBI for our request, there is not so much of cooperation from some foreign jurisdictions when we are seeking assistance in investigations. And then there is the use of cryptocurrency when they are diverting the proceeds of crime.
the increasing use of cryptocurrency and the absence of any central authority to regulate cryptocurrency, and the use of end-to-end encrypted messaging, leading us to a dark area in our investigations, and that is why many of the investigations are pending, which sir has noticed also. We are not able to complete the entire chain of investigation, and at some point of time we are stuck. And now, as I have mentioned here, that 80% of now cyber attacks which we are facing are probably coming through using AI only. So it is becoming so easy for the criminals to send such kind of threats or of emails which we receive. So they don't have to even put much efforts by sending a very serious looking email which is mostly a hoax one. So we have, I have taken out 3 case studies of recent past. The first one is about a cyber fraud syndicate which is operating from Cambodia. And Jodhpur police has recently come across information that there are thousands of SIM cards which are activated under few EMI numbers, and certain common points of sale were the ones who had sold all these cards. So the SIM cards being sold by point of sale in India, in Jodhpur jurisdiction, they were being transferred to Cambodia and were being used in cyber crime cases. So we came across that 36,000 mobile numbers were found roaming in Cambodia issued from India in this one investigation itself, sir. And out of these complaints, we could see that there are more than 5,000 mobile numbers were already registered in the reporting portal on cybercrime, which has been developed by I4C. So we have been able to arrest 6 people, but the main culprits, as we can see, and in this case, they appear to be Malaysian citizens who are still abroad. So the challenges encountered during this case, of course, the cross-border nature of the syndicates operating in this kind of fraud, and the logistics of these operations which directly involve foreign nationals, and misuse of points of sale systems, which is very easy. It's still, there are probably not stringent laws, or maybe the implementation of these laws by us, which is leading this situation that it is very easy to misuse points of sale, and that is why thousands of SIM cards are being activated under few IMI numbers. So another case study is of Jhalawad. The Jhalawad police has recently worked out a case of cyber fraud valuing more than 1,000 crore. And in this case, the accused exploited loopholes in the government portals and used specialized software to target welfare schemes. So there are a number of schemes of government in which the beneficiaries are giving direct transfers, direct banking transfers. So these accused were able to alter the beneficiaries' records by changing their mobile numbers, changing the bank account details, and could divert the aid which was to come to their accounts to the accused accounts. In this case, we could arrest 51 accused in this case already, and which belong to not just Rajasthan but also Punjab, MP and Delhi. So in this case again, we saw the large number of accounts are being used, and specialized software is being used by the accused which can actively break official ID passwords and crack OTPs of the government officials, and then tampering directly with the official portal, as seemed that it was quite easy for them to break into this. And a third one case is of Bharatpur, in which a fake investment scam being run in the name of a particular app and a website with the promise of high returns on investment in foreign exchange and crypto was being circulated. The database of the company we could download before the accused could lock it, and as a result we could arrest 12 persons in this case and unearth a total fraud of 3,100 crores
but the main accused is based in Dubai, as the investment, the proceeds of crime have been converted into USDT. And as a result, the main challenge encountered, which we are still not able to break through, is the recovery of the lost amount, because it has already been transferred abroad, converted into USDT. So a very little money could be recovered out of the total money involved in this fraud. When it comes to overall cyber policing in Rajasthan, we have 43 cyber police stations already, and 6 more have been declared in the recent budget. And on the lines of I4C, Rajasthan has also announced Cyber Crime Coordination Center, which we will see happening soon. Zero FIR system, recently we have made it mandatory. Any complaint of cyber fraud which is valuing more than 5 lakhs will be automatically converted into an EFIR. So as and when this is reported on the portal, we will be receiving an FIR in automated form. We have been launching several operations like antivirus, Operation Vajra Prahar and Operation Cyber Shield, and through which we could reduce the cyber hotspots. We could block 1 lakh SIMs and 1 lakh IMIs, and several cases have been registered out as an outcome of these special operations. This is a slide taken from the presentation of our I4C recently. As we can see, overall India, the percentage of lien marked by the police agencies in the cyber financial crimes is around 19%. However, in Rajasthan, we have been able to do a bit better than the national average of 19%, and it has been recorded 32% lien we were successful to achieve. These are some of the pictures from the few operations launched in recent past, and as a result, there have been drop in the use of SIMs in this. R4C, as I mentioned, will be functional soon, and starting from this year, which is based on the lines of I4C. So what more we are planning to do, just for the information of our distinguished audience, we have recently recruited more than 900 constables. We have around 900 police stations. So a technical graduate constable has been recruited recently, so that they can assist the cyber crime investigations in each police station. So at least one technically trained person will be there soon. And we have increased our coordination with banks, and we are trying to have one personnel from each bank, one nodal point from each banks, sitting with our team in the headquarters, so that as and when we receive the complaint, we can immediately proceed for blocking or freezing the further transactions. And a center of excellence in AI and cyber security is also proposed to take off during this year. And we are also trying to make the cyber safety awareness as a part of school curriculum. We'll be developing lesson plans and sharing it with the government of Rajasthan in this regard. And finally, the key pillars for this multidimensional strategy, which we need real-time reporting, as we know the time is the real essence. And the forensic labs, there has been a lot of emphasis in the new criminal laws on the use of forensic and digital evidence. However, the forensic laboratory infrastructure is gearing up towards it. And as and when, so there are already number of mobile vans coming up, but still it is an ongoing process. The capacity building is unending. We need to do much more to train our investigators, and research and development on this is also equally important. And promoting cyber awareness is another endeavor which we need to do further. And cyber hygiene in cyberspace, again, we need to keep telling people more and more about this.
So this is the cybercrime report of Rajasthan in 2024 and 25. We can see the number of complaints reported have grown, and the number of, however, the amount involved in these complaints has come down. And the lien amount has, we have been able to hold more money in the previous year than 2024. And in 2025, Rajasthan was second in the country in action as suspect mobile numbers. As we can see, the growth has been tremendous in recent year. And this is a snapshot of the hotspots in Rajasthan. As in 2024, we had around 72,000 plus hotspots spread across the state. But with some intensive efforts in the last year, we could bring it down to 29,000. And this is an automatic reporting procedure. It is not that it is based on the complaints received on the I4C portal, and it is generated automatically. So we could achieve 60% reduction in the hotspots in the last years. So, sir, finally, sir, I would end this with that our shared responsibility is that the constitutional protection remains stronger than technological threats. And with the increased emphasis on the use of digital evidence, my another request to honorable judges is also that the ICJS 2.0 is being made functional. So as and when we start using it, the sanctity of the evidence and the normal pitfalls or the dangers of losing the correct evidence or the authenticity of the digital evidence, all this will be taken care of if we start using the ICJS portal more and more, because it has, NIC has made it after a lot of effort, sir, and so it will reduce lot of manual evidence collection and all things. So thank you very much, sir. Jai Hind. Thank you very much, sir. May I now request Ms. Suman Maliwal, DIG Prison. She'll be speaking on technology in prison and data security. Thank you, madam. Respected dais and all dignitaries, with the permission of chair, I would like to start. My topic is technology in correctional administration and data security. We all know that technology has transformed the way we approach most daily tasks, and as well, it smoothened the work and the administration of prison and prisoners management. Use of technology in corrections may be divided into 3 C: the care, custody, and correction. As per the data of NCRB, भारत में 6 लाख कैदी ऐसे हैं जो बिहाइंड द बार्स हैं, और राजस्थान की यदि हम बात करते हैं तो 25,000 के आसपास का पॉपुलेशन जो है वो जेल के अंदर है। भारत का एक राज्य है यूपी, जिसमें 1 लाख के आसपास कैदी जेल के अंदर हैं। इसमें जब हम टेक्नोलॉजी के सपोर्ट की बात करते हैं तो कस्टडी में और फॉर द सेफगार्ड ऑफ द प्रिजनर्स एंड सेफ्टी ऑफ द प्रिजन कुछ ऐसे गैजेट्स हैं जो बहुत यूज़फुल हैं। जैमर्स, सेलफोन डिटेक्टर पोल्स, ड्रोन्स, CCTVs, Jarvis system. This is a software which is used in UP prisons, AI generated video wall that helps to manage the prisoners inside the prison. The walkie-talkie sets, IP phones, body-worn cameras,
and HHMD, DFMD, you all are aware of these gadgets. NLJD, that is very useful to detect some kind of electronic circuit. I mean to say the mobiles as well as the SIM cards inside the prison which prisoners can use and they are using. Cell phone detector poles, back. The drones that keeps eagle eye on the prisoners, and these unmanned aerial vehicles patrolling results are very significant and very helpful. The CCTV surveillance, you all know, it is accountability and transparency is very helpful in the prison management to detect some kind of कोई झगड़ा होता है, कोई इंसिडेंट होता है, तो CCTV कैमराज जो हैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. Non-lethal electric fencing for the main wall security, जो कि भारत की सभी जेलों को मेन वॉल सिक्योरिटी इसी उससे दी गई है, तो टेक्नोलॉजी जो है वो जेल की सेफ्टी में हेल्पफुल रही है. एक्सरे बैगेज स्कैनर, जैसा कि प्रिवेंटिंग स्मगलिंग ऑफ बैंड आइटम्स सच एज नार्कोटिक्स, पिल्स, वेपन्स, एक्सरे स्क्रीनिंग सॉल्यूशन फॉर प्रिजन will help to detect and capture contrabands that enters in a secure facility and stopping it from reaching to wrong hands. RFID, radio frequency identification. The key benefits of this RFID is automated head counts, improve security, and operational efficiency is there, and this is using Haryana prisons in very well manner, and सारा कुछ उनका ऑटोमेटिक सिस्टम होता है. एक प्रिजनर जब भी कहीं मूव करता है तो उसका डाटा जो है वो किसी एक पर्टिकुलर उस पे डाटा पे आ जाता है, तो उससे पता लग जाता है कि कैदी इधर उधर किधर चला गया. और लॉकिंग के समय भी बहुत ही ईजी है, बायोमेट्रिक के साथ में हेड काउंटिंग उनका होता है. THCBS, अभी राजस्थान की जेलों में भी टावर ऑफ हार्मोनियल कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम, जो मोबाइल्स हैं उनकी वजह से जितना क्राइम देश में बढ़ रहा है, जो प्रिजनर्स बिहाइंड द बार्स होते हुए भी क्राइम कर बैठते हैं, इनके यूज़ से अनवांटेड यूजेस जो मोबाइल्स के हो रहे हैं उसको ब्लॉक करने के लिए हार्मोनियल कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम जो है वो एक इफेक्टिव टेक्नोलॉजी के साथ जेलों में इंट्रोड्यूस हुआ है. नाउ वी कम टू द यूज एंड केयर, द मैनेजमेंट ऑफ द प्रिजनर्स. हम शायद बहुत आगे आ गए हैं. बायोमेट्रिक एडमिशन से लेकर रिलीज तक का प्रत्येक डाटा जो है कैदी के बायोमेट्रिक के साथ होने लगा है. इसमें सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ी है. कैंटीन फैसिलिटी, बंदियों की पहचान करना, स्टाफ की अटेंडेंस आदि भी बायोमेट्रिक के साथ में प्रिजन्स में होने लगी हैं. फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकॉग्निशन, जैसे तिहाड़ में 2022 का एक उदाहरण है कि 50 कर्मियों का मिसमैच डाटा हुआ बायोमेट्रिक के साथ और तुरंत प्रभाव से उनको टर्मिनेशन कर दिया गया. इसी तरह से VC विजिट्स, कोविड पैंडेमिक के समय राजस्थान में 1 लाख VC विजिट्स हुई. आप सभी अवेयर होंगे उस समय कि एक दूसरे को परिवारजन अपने व्यक्ति को देखना चाहता था, जो कैदी जेल के अंदर बैठा था उसकी सिचुएशन तो उस समय क्या हुई होगी. और ये VC विजिट्स लगातार ई-मीट के नाम से महाराष्ट्र में हो रही है. लगभग सारे स्टेट्स ने ये फैसिलिटी दे दी है कि जेल के अंदर बैठा कैदी अपने परिवारजन से और अपने एडवोकेट से VC वीडियो कॉल करके मुलाकात कर सकता है. PICS, प्रिजन इनकमिंग कॉलिंग सिस्टम, जो एक प्रतिदिन कैदी जो है 5 मिनट अपने परिवारजन से बात कर सकता है. 4 नंबर उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और वो SOG/ATS से वेरीफाइड नंबर्स होते हैं जिस पे वो 5 मिनट का अपना कॉल करता है. PMS, प्रिजनर्स मैनेजमेंट सिस्टम, यू ऑल नो कि ई-प्रिजन्स जो सॉफ्टवेयर है पूरे देश का, वो पूरा ICJS का एक मेन पिलर हो गया है. पुलिस के बाद ई-प्रिजन्स का जो
डाटा होता है वो ई कोड से जब कनेक्ट होगा तो वो बहुत फर्दर उसके कॉन्सिक्वेंसेस और उसके सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आएंगे। VMS विजिटर्स मैनेजमेंट सिस्टम, कैदी से मिलने के लिए जब भी कोई उसका परिवारजन आते हैं या कोई और व्यक्ति भी आता है तो उसका टोटल आइडेंटिफिकेशन के साथ में उसका टोटल रिकॉर्ड जो है अब डिजिटल फॉर्म में जेल में रखा जा रहा है, इंक्लूडिंग हिज और हर फोटो ऑब्लिक आधार कार्ड एज वेल एज ऑल द अदर इंफॉर्मेशंस। कैंटीन फैसिलिटी, जेलों में इस समय ड्राई कैंटीन, वेट कैंटीन की फैसिलिटी है और ये कैंटीन भी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जिसमें किसी भी तरह का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही अवेलेबल है, यानी कैदी के परिजन अपने ऑनलाइन तरीके से उसमें पैसा जमा कराते हैं और उसके बदले उसको PICS यानी कॉलिंग सिस्टम और कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल होती है, जिसका भी अमाउंट जो है वो लिमिटेड अमाउंट होता है, जो कि हर स्टेट द्वारा अपने अपनी जेलों में फिक्स किया गया है। एक ऑनलाइन टेलीमेडिसिन फैसिलिटी जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हुई है। अभी राजस्थान ने बीकानेर जेल में प्रारंभ करी है, परंतु इसका ऑथेंटिकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि कैदी को किस तरह से टेलीमेडिसिन फैसिलिटी दूरस्थ बैठे जैसे ग्रामीण व्यक्ति को अवेलेबल हो रही है, वैसे ही संजीवनी पोर्टल के माध्यम से जेल के कैदी को भी टेलीमेडिसिन फैसिलिटी उपलब्ध करवाई गई है, जिससे सेफ्टी सिक्योरिटी का एक इशू है, पुलिस गार्ड की अनअवेलेबिलिटी या कम अवेलेबिलिटी रहती है, तो इन सब प्रॉब्लम्स को मीट आउट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित हुई है और हो रही है। वीडियो ट्रायल ये बहुत इफ़ेक्टिव है, हार्डकोर बंदी को कोर्ट तक ले जाना, धन और समय की बचत करना, तेज ट्रायल, स्पीडी ट्रायल इज़ पॉसिबल। नए क्रिमिनल लॉज में तो इनके प्रोविजंस भी बहुत अच्छे प्रकार से दिए गए हैं, जहां पूरे भारत में बंदी को, कैदी को कोर्ट ले जाने में 360 करोड़ का खर्चा आता था, अब वो आधे से भी कम हो गया है। ई सेवा केंद्र, जैसा कि तिहाड़ जेल में ई सेवा केंद्र प्रारंभ हुआ, इसी तरह से दूसरे प्रिजन्स में भी, महाराष्ट्र की प्रिजन्स में, राजस्थान में कियोस्क सिस्टम दिया गया है, जिसमें कैदी अपने केस को ट्रैक कर सकता है, अपनी नेक्स्ट डेट ऑफ एवरी हियरिंग चेक कर सकता है। और तिहाड़ में ये थोड़ा सा एडवांस तरीके से पब्लिक के लिए भी ये फैसिलिटी है, एडवोकेट के लिए भी फैसिलिटी है और कैदी के लिए साइमल्टेनियस फैसिलिटी है कि वो अपने केस के बारे में डिटेल आदि ले सकता है। वीडियो एनालिटिक and AI and GPS tracking device, this is very important for the future। जेलों में ओवरक्राउडिंग कम करने का एक अच्छा और बेहतरीन तरीका हो सकता है कि हम GPS ट्रैकर को यूज़ करें और उसको बेल दें। जो लो रिस्क प्रिजनर्स हैं या जो विचाराधीन पे कैदी हैं, उनको ज़मानत देते समय या इवन किसी हार्डकोर व्यक्ति को पैरोल देते समय भी इसका प्रयोग किया जा सकता है और ये नया इंट्रोड्यूस जो है वो GPS ट्रैकिंग सिस्टम के साथ हो सकता है। पहली बार इसका प्रयोग J&K ने किया था 2023 में। नाउ वी कम टू द टेक्नोलॉजी यूजेज इन करेक्शन। महात्मा गांधी ने कहा था, क्राइम इज द आउटकम ऑफ डिजीज माइंड एंड जेल्स शुड प्ले अ रोल ऑफ हॉस्पिटल्स। सो करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। जब हम बंदी को, कैदी को पुनः समाज में पुनर्स्थापित करेंगे तो वो किस तरीके से जाएगा वहाँ पे, उसके लिए उसको तैयार करना। इसमें एजुकेशन, ई लाइब्रेरी, चूँकि टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं बहुत स्पीड से करना चाहूँगी। बॉडी वर्न कैमरा, इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट ऑफ MHA, आई वॉज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। जब हमने अजमेर के सेंट्रल जेल के कैदियों पे इस प्रोजेक्ट को बॉडी वर्न कैमरा के माध्यम से हमने इसको किया तो वी फाइंड कि उनमें बिहेवियरल चेंज आता है। जब उनको क्लोजली कोई वॉच करता है, उनसे बात करता है, उनसे काउंसलिंग करता है, तो उनमें वो चेंजेस आते हैं जो उनके मानसिक स्तर को, मेंटल हेल्थ को भी काफ़ी ठीक करते हैं और आई थिंक कि वो बाहर जाने के बाद में समाज में पुनर्स्थापित होने में उसको मदद कर सकेगा। काउंसलिंग थ्रू टेक्नोलॉजी, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, इन सब में AI बेस्ड काउंसलिंग हो रही है। इवन हांगकांग में रोबोट्स हैं जो कि हार्डकोर सेल्स जहां बनी हुई हैं वहां पे रोबोट अपना पेट्रोलिंग करते हैं। कोई कैदी उदास दिखता है तो उससे बात करते हैं, तो ये चैटबॉट की तरह हो गया। इसमें मेंटल हेल्थ को ठीक करने में हमें ये रोबोटिक और काउंसलिंग जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से मदद कर सकेगी। रिहैबिलिटेशन, आफ्टर केयर सर्विसेज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि अभी जेलें नहीं देख पा रही हैं कि बंदी बाहर निकलेगा तो वो कहाँ जाएगा, वो क्या करेगा, उसको हम क्या मदद कर सकते हैं।
परंतु तेलंगाना प्रिजन्स के पास एक ऐसा उनका एक सॉफ्टवेयर है जिसमें लोन सुविधा वो प्रोवाइड करते हैं जब कैदी जेल से रिलीज होकर जाता है। लीगल एड सर्विसेज, नेक्स्ट स्लाइड। यूज इन करेक्शन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ई बाजार पोर्टल जो है जेल के प्रोडक्शन को आम आदमी तक पहुंचाना, और उसका पर्पस ये नहीं है कि प्रोडक्शन ज़्यादा करना। प्रोडक्शन के साथ में देश में कुछ राज्यों ने जब प्रारंभ किया इसको ई बाजार पोर्टल को, तो रोजगार बढ़ा, आमदनी बढ़ी कैदी की, और सेल्फ रिस्पेक्ट उसके मन में आया। रिहाई के बाद पुनर्वास की उम्मीद जगी है, समाज में उसका एक्सेप्टेंस बढ़ा और दोबारा अपराध न करने का रुझान भी उसका आया। तो इसको ई बाजार पोर्टल के माध्यम से राजस्थान की प्रेजेंस ने भी प्रारंभ किया है, जो कि ऑनलाइन अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तरह एक प्लेटफॉर्म है जहां से जेल का बना हुआ प्रोडक्ट कोई भी व्यक्ति कहीं भी परचेस कर सकता है। AI इन प्रेजेंस, अब ये जो समस्या है साइबर क्राइम की, साइबर अपराध की या डाटा लीकेज की, ये AI के साथ जेलों में भी प्रवेश कर गया है। वीडियो एनालिटिक एंड AI जो कि यूपी, उड़ीसा, कर्नाटका 1070 कैमरास कर्नाटका ने CCTV कैमरास AI बेस्ड सेटल किए हैं। यूपी में एक वीडियो वॉल बनाई गई है जो कि वहाँ के हेडक्वार्टर पे है। प्रत्येक जेल के यानी 70 प्रिजन्स को उन्होंने उसमें इंक्लूड किया है। 10 कैमरा प्रत्येक जेल से हैं। जहाँ भी बंदी किसी तरह की हाथ उठाने की एक्टिविटी करता है, कोई कुछ छुपाने की एक्टिविटी करता है, तो वो तुरंत एक अलार्म जनरेट होता है हेडक्वार्टर पे और वहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है कंसर्निंग जेल पर, और उससे 5000 कैदियों की इस तरह की जो एक्टिविटी है वो अभी तक यूपी ने पकड़ी है। यानी किसी तरह का जेल ब्रेक होने को भी वो प्रिवेंशन मिला है। इस तरह से AI जो है प्रिजन्स में इम्पॉर्टेंट हो गई है। टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स फॉर द प्रिजनर, ये सभी को पता है कि डिजिटल फैसिलिटी से प्रिजनर भी अपना सारा ग्रीवेंस रिट्रेसल सिस्टम भी इसमें आ गया है। लीगल एड, कैदियों का पुनर्वास आदि जो बेनिफिट्स हैं वो उसको मिले हैं। नाउ द वे फॉरवर्ड, टेलीमेडिसिन फैसिलिटी के लिए मैं ऑनरेबल्स का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि यदि ये फैसिलिटी ऑथोराइज्ड हो जाती है तो कैदियों के ट्रीटमेंट में जेल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बहुत फैसिलिटी मिलेगी। और ऑल्टरनेट ऑफ कस्टडी जो कि GPS ट्रैकर सिस्टम है, जेलों में ओवरक्राउडिंग कम करने का एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है। नाउ केस स्टडी की तरफ हम आते हैं। CCTV जैसे कि टिल्लू जौनपुरिया मर्डर केस था दिल्ली का, तिहाड़ का, CCTV से ही वो डिटेक्ट हुआ कि किस तरह से किस बिहेवियर के तहत उस कैदी का मर्डर किया गया था। या अभी लेटेस्ट में जो MP के सिमी प्रिजनर्स का जो एस्केप हुआ था, ये भी लेटेस्ट जयपुर जेल का जेल ब्रेक जो था वो पूरी तरह से CCTV में उससे डिटेक्ट हुआ। तो सो द केस स्टडी जो तिहाड़ की जार्विस सिस्टम जिसकी मैंने अभी बात करी, ड्रोन जोधपुर जेल पर ड्रोन का एक इतना अच्छा सा एक्सपेरिमेंट हुआ कि जब ड्रोन्स से ये पता लगा पुलिस कंट्रोल रूम को कि कुछ कैदी छत पर चढ़ गए और वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो जेल ब्रेक जो है वो बच गया। यानी टेक्नोलॉजी से ये मदद मिली और ड्रोन से ये मदद मिली कि एक जेल ब्रेक रुक गया। इसी तरह से बॉडी वन कैमरास, TSCBS, ई बाजार, इसकी बात अपन ने करी है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। VC विजिट्स, जैसे कि राजस्थान में 40,000 इस वर्ष की VC विजिट्स हैं। वीडियो ट्रायल हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सोलर एनर्जी, नाउ दिस न्यू कॉन्सेप्ट लॉन्च्ड इन द प्रिजन्स ऑल्सो। अभी जयपुर और राजस्थान की कुछ जेलों में सोलर एनर्जीज के रूप में, जहाँ की राजस्थान देश में रिन्यूएबल एनर्जी में 27% अपना योगदान दे रहा है, तो जेलों में भी 4 लाख यूनिट प्रतिवर्ष जो है वो सोलर एनर्जी के रूप में के माध्यम से अभी प्रारंभ हो चुकी है। डाटा सिक्योरिटी की बात अब हम करते हैं। अब आप सोचेंगे कि प्रिजन में डाटा सिक्योरिटी की क्या आवश्यकता है, बट आधार कार्ड का यूज़ होता है, बायोमेट्रिक्स होती है। 1.88 करोड़ जो कैदी हैं प्लस कैदी जो कि ई प्रेजेंस पे उनका डाटा सिक्योर है। तो जब डाटा सिक्योरिटी इसीलिए आवश्यक हो जाती कि यदि वहाँ से भी कोई लीकेज होता है तो वो हमारी देश की सुरक्षा को भी खतरा पैदा कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात की जो साइबर अपराध हैं उसमें जो उनके जो मुलजिम हैं जो जेल के अंदर हैं उनसे जेल का डाटा छुपाना और उनसे सिक्योर करना, ये भी अपने आप में एक चैलेंज के रूप में सामने आने वाला है और थोड़ा थोड़ा चैलेंज अभी से प्रारंभ हो चुका है। तो प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन करेक्शनल फैसिलिटी, इनमेट्स रिकॉर्ड, पर्सनल डिटेल्स, क्रिमिनल हिस्ट्री,
मेडिकल एंड मेंटल हेल्थ डाटा, स्टाफ इंफॉर्मेशन, विजिटर्स लॉग्स एंड ऑपरेशनल सिस्टम। ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए जेलों का भी जो डाटा है उसको सिक्योर करने की आवश्यकता है। एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगी वेंडर रिलेटेड इशू, जो कि यूएस में मार्शल सर्विसेज का, जो कि प्रिजन सिक्योरिटी के लिए डेप्यूट होते हैं, उनका डाटा 2019 में लीक हो गया। कॉल रिकॉर्डिंग जो होती है, जैसे प्रिजनर कोर्ट में बात कर रहा है, ई कोर्ट के जरिए वो कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, या अपने परिवारजन से, एडवोकेट से बात करता है। यदि वो कॉल रिकॉर्डिंग लीकेज हो जाए तो आप कल्पना करें कि क्या उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अभी हाल ही में बेंगलोर जेल का एक उदाहरण है, आईएसआई रिक्रूटर के पास से कुछ रिकॉर्ड, उसका डाटा जो है वो लीक हो गया था, उसके द्वारा लीक कर दिया गया था। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज इस समय है, ह्यूमन एरर और मिस कॉन्फ़िगरेशन। ई प्रिजन्स में जुलाई 2025 में फ्लोरिडा जेल से विजिटर्स कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो थी वो गलती से सारे कैदियों को ईमेल कर दी गई। तो उससे चूंकि उसमें विजिटर्स में महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, और आधार कार्ड लिंकेज, फोटोग्राफ वगैरह सभी कुछ था, वो लीकेज होने से बहुत बड़ा स्कैंडल वहाँ पे सामने आया था। तो दैट्स वाई द डाटा सिक्योरिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट as well as the prison data is concerned. Now the way forward, the legal compliance and the statutory safeguards, role based access is very important कि हर कोई जेल में पता लगा कैदी ही कुछ एक्सेस करने लग गया तो वहीं से वो सारा लीक कर देगा। साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट, ऑडिट ट्रायल्स एंड मॉनिटरिंग, प्रत्येक जो भी डाटा है उसका ईयरली, मंथली, वीकली ऑडिट, अपग्रेडेशन आदि होना बहुत आवश्यक रहेगा ताकि वो डाटा लीकेज नहीं हो। और इंसिडेंट रिस्पांस मैकेनिज्म जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चूँकि मैं बहुत जूनियर हूँ आप सबके सामने कुछ बताने के लिए, तो आई एम वेरी सॉरी यदि मेरे से कोई गलती हुई है तो। आई अगेन थैंक्स टू रालसा एंड द अपॉर्चुनिटी गिवन टू मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। Thank you, madam. It was quite interesting and very extensive. Now, we open the floor for open discussion. If anyone in the audience has any question to be asked from the respected dais, you are please welcome to do that. I hope everybody had a very, I think I'll take over from here. Sure. Had a very enlightening session. It was a little bit heavy on the technology in the later half, but enough that everybody could comprehend. सबकी समझ में आ गई होगी बात। इस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा मैं वाइंडिंग अप वाला अपना कमेंट्स दे दूं, फिर कुछ हट के बात करूंगा। हम इन सब कॉन्फ्रेंसेस से आई थिंक वी आर लीडिंग टू अ स्टेज वेयर हमको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि हम क्राइम एज ए जनरल और स्पेशली साइबर क्राइम्स को टैकल करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए लॉज को अमेंड किया जा रहा है। और आज तक का जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस रहा है वो हल्का सा पैराडाइम शिफ्ट कर रहा है। जो ओनस प्रोसिक्यूशन पे था अब वो प्रिज्यूम कर लिया जा रहा है अदर साइड पे। ये शो करता है कि हम में कमी है, वो कमी सेट कर गई है और ये अब एक आदत बन गई है हम लोग की कि जहाँ लगता है कि हैंडल नहीं हो रहा है एक लॉ कर दो ताकि वो उस स्टेज से हम क्रॉस कर जाएं। ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं खाली एक आइडिया दे रहा हूँ सबके मन में, क्योंकि यहाँ जुडिशरी भी बैठी हुई है, पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं, प्रिजन वाले भी बैठे हुए हैं। हमें ये देखना है कि आज के दिन भी हमारा संविधान ऊपर रहेगा, एक मानवता का जो मानव को एक अधिकार है वो रहेगा, ह्यूमन राइट्स, हिज बेसिक राइट्स। हाउ टू बैलेंस, थोड़ा वी आर गोइंग ओवरबोर्ड इन स्ट्रिक्टर लॉज, इज इट नॉट अ कमेंट? पहले वही चीज़ उसी कानून में की जाती थी, अब ये जवाब नहीं है कि ये इसका स्केल इतना बढ़ गया है तो ये डाइल्यूट कर दो। एवरी इंडिविजुअल हैज़ द सेम राइट, एवरी केस हैज़ टू बी टेकन थ्रू द सेम प्रोसीजर, बट ये
समय और ये ज़रूरत क्यों आई है? ये कहीं ना कहीं हम लोग को, जुडिशरी में तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं जानता हूँ कि ये चिंतन हम में है, ये संवेदनशीलता हम में है, लेकिन कहीं ना कहीं अदर स्टेक होल्डर्स, द एडवोकेट्स, द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में आनी है कि ये स्टेज क्यों। मैं आपको एकदम एक साधारण सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उससे हो सकता है मेरी बात आप तक पहुँच जाएगी। एक साइबर क्राइम होता है, आप जाते हैं, डीजी साहब ने भी कहा, सबों ने कहा, हमारा सिम, एक बूढ़ी औरत है, वो मिसयूज कर हो जाता है, ठीक है, या तो उसने समझा नहीं या कुछ पैसों के लिए मजबूरी होगी उसकी, यूज़ हो गया। शी इज़ ऑल्सो मेड एन अक्यूज एंड एवरीबडी इन द लाइन। अब इसका दूसरा साइड देखिए, हमारे सामने केस आ चुका है, चूंकि अब ओवर हो गया, आई कैन स्पीक फ्रीली। A letter where the CBI had frozen some bank accounts of a very top institution. Obviously, the person must also be very top. A fake letter comes. On the basis of the fake letter, the CBI defreezes, and within 2 hours, 2 घंटे में वो पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। अब केस किस पे होता है? केवल उस पे कि अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है किसने भेजा है। तो अगर सीबीआई बिना वेरिफिकेशन के मूव कर गई तो सीबीआई वालों में का दोष नहीं है, बट वो तो डिफेंस लेते हैं कि विक्टिम हम हो गए हैं। लेकिन अगर कोई इंसान ये कोई इंडिविजुअल ले लेता है तो वो सारा ओनस उस पर क्यों होता है? भाई लेवल प्लेइंग फील्ड हो, जो तुम्हारे लिए सही है वो हमारे लिए भी सही है। लेकिन क्या ये होता है? हमको लगता है जजेस यू मस्ट हैव कम अक्रॉस हंड्रेड्स ऑफ केसेस वेर इंस्टीट्यूशनली ये आरोप होता है कि इस इंस्टीट्यूशन को बेवकूफ़ बनाया गया है। आपने क्यों नहीं वेरिफिकेशन कराया? एक मामूली सा बैंक का मैनेजर केवाईसी हम देते हैं, इज ही सपोज टू गेट एवरी डॉक्यूमेंट चेक? जो सक्षम है वो पुलिस को ही भेजेगा, पुलिस उसको कोने रख देगी कि मुझे मेरा यही काम है, आपके 5000 आदमी हैं, हर एक का मैं इंडिविजुअली 5-5 डॉक्यूमेंट चेक करूँ? इज इट प्रैक्टिकल? दोष उसका क्या है? आप पर होती है तो आप विक्टिम बन जाते हैं क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन के लिए खिलाफ हो गया है। ये तो कहीं ना कहीं तो एक बराबरी आनी पड़ेगी ना। और आजकल हम सब उसी तरफ जा रहे हैं जहां अंत में, और ये सब पर आएगा, आप मार्क करिए, मैं खुल के बोल रहा हूं, मेरी आदत नहीं है कि मन में कुछ और बाहर कुछ और ये मंच ऐसा है जिसको हर किसी को ही सोचना पड़ेगा। बिकॉज अंत में हम सब एक इंडिविजुअल हैं, हम सब एक मानव हैं, हम सब भारतीय हैं, और हमारे लिए हमारी होली ग्रेल जो कर लीजिए वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इज द मोस्ट फंडामेंटल, कैन नॉट बी चेंज। तो हम लोग किस तरफ जा रहे हैं और क्यों? हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए कि लॉज जो हैं उसमें ही हम किस तरह से अपने को अडेप्ट करें, किस तरह हम सक्षम हो कि हम एक स्टेप आगे रहें। ये तो सदियों से खेल चला आ रहा है कि हु इज़ 1 स्टेप अहेड, कानून तोड़ने वाला या कानून को प्रोटेक्ट करने वाला इन्वेस्टिगेशन। ये तो चलता रहेगा, ये तो एक दौड़ है, कभी आप आगे कभी वो आगे। लेकिन इसमें ऐसा ना हो कि हम अपनी मूल ह्यूमननेस, जो मानवता या कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा है संविधान, कितना दिन तक, कितने इंस्टीट्यूशंस, कब तक ये जुडिशरी हल्का हल्का बेनिफिट देगी? चूँकि जुडिशरी भी आदमियों से बनी होती है, हम भी एक पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर दिखाई जाती है भयावक, अच्छा इस स्थिति में तो थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, बट कब तक ये रिलैक्सेशन होगा? हमने कंसंट्रेट किया है कभी? और आपने जो कहा वो सिम की बात, हमने आज के दिन भी, आर वी कॉन्सेंट्रेटिंग, इज देयर एनी लिमिटेशन ऑन इश्यूइंग ऑफ सिम्स? उसके लिए तो मामूली भाई मैं एक डीलर हूँ, मैंने भेज दिया, किसको आ रहा है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी आनी चाहिए। अगर इसका मिसयूज़ हो रहा है, मैंने सोर्स पे, हम सोर्स पे जाते हैं नहीं, वी आर फायर फाइटिंग। विल इट हेल्प अस? एक सिम से डीजीपी साहब ने दिखाया काफ़ी क्राइम इस साल कम हो गए हैं, बट
साइमल्टेनियसली फिगर क्या कहता है, वॉल्यूम्स बढ़ गए हैं, वॉल्यूम इन द सेंस उसका नेट वर्थ बढ़ गया है। अगर 5 क्राइम आज होता है, उसका नेट वर्थ है 2000 करोड़, अगले साल 2 क्राइम होता है, उसका नेट वर्थ है 5000 करोड़, तो स्थिति आज बेहतर है कि कल बेहतर है? नंबर ऑफ क्राइम्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ द वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स तो दुगना चुगना 10 गुना बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसलिए हमको ये फिगर्स शुड नॉट मेक अस थिंक लीड टू कंप्लेसेंसी। ये ठीक है, एक फिगर आ रहा है, बट द हिडन सीन, द हिडन सिनेरियो बिहाइंड इज कितनी इकोनॉमी पर असर हो रहा है। द इकोनॉमी इज अंडरगोइंग मल्टीपल टाइम्स द लॉस एंड एवरी ईयर इट इज इंक्रीजिंग, इट्स नेवर इंक्रीजिंग। और ये तो शॉकिंग था जो बताया डीजीपी साहब ने, कंबोडिया में एक सिंडिकेट है ऑफ साइबर क्राइम, आई हैव नेवर हर्ड दैट। मेरे लिए पहली बार मैंने सुना कि एक सिंडिकेट टाइप का, जैसे वी हैड हर्ड ड्रग कार्टेल सिंडिकेट्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, बट ये जो सीन इवॉल्व कर रहा है, डेवलप कर रहा है, तो आई थिंक फोकस शुड इक्वली बी हाउ टू कंट्रोल द सोर्सेज। ये सोर्स 200 होता है, कंप्यूटराइजेशन, इंटरनेट एंड सिम। सिम इज़ द मेजर। हम अगर वहाँ पे थोड़ा सा हल्का ज़्यादा करें, इफ़ वी ब्लॉक द सोर्स, प्रॉबली हमें इतनी आगे ज़रूरत, वहाँ हमारा लोड कम हो जाएगा। थोड़ा सा बैठ के सोचना है कि हमको प्रायोरिटाइज कैसे करना है। वी आर डूइंग ओनली फायर फाइटिंग, दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, दैट इज़ द केविएट। मैं इसको नहीं कहना चाह रहा हूँ अपने इस स्टेटमेंट से कि इम्पोर्टेंस टू डिस्कस, यस दिस इज़, बिकॉज ये तो हमको टैकल करना है, ये तो हमारे सामने हकीकत है, लेकिन साथ साथ कहीं हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करना भूल तो नहीं गए हैं जो ज़्यादा ज़रूरत है कि कब तक हम फायर फाइटिंग करेंगे। ये तो ऐसी चीज़ है कि अंत में हम थक जाएंगे, हाथ उठाना पड़ेगा। सोर्स पे जाएंगे, आप ब्लॉक करेंगे, साधन कम लगेंगे, मेहनत कम लगेगी, इजी है। वहाँ पे भी थोड़ा सा अगर डिस्कशन हो जाए, वी स्टार्ट फ्रॉम स्क्वायर 1। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्क्वायर 20 से, यहाँ से यहाँ तक टेक्नोलॉजी पहुँच गई, अब इसमें क्या करते हैं आगे में। एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली इज़ व्हाट, इस टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ क्रिएशन ऑफ योर ओन माइंड, ऑफ द माइंड ऑफ द पीपल, व्हाट गॉड हैज़ गिवन यू। तो और करेक्शनल केसेस में आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने ये रखा है प्रिजन वाला, बिकॉज वहीं से माइंड्स डेवलप करते हैं, कॉमन माइंड मीट करते हैं। वहाँ थोड़ा करेक्शन हो जाए तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी में, और एवरीबॉडी इज़ यंग, जैसे डीजीपी साहब ने कहा, तो ये एक संकेत है कि हमें अपने नए फ्यूचर जनरेशन को ही मोटिवेट करना है, और उसमें लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हैज़ अ वेरी 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 डीप रोल। So this, in tandem, in partnership with the state authorities, with the advocates, with the prison authorities, with the police, I think should also be a major focus for such type of events, where we identify the root cause and we also concentrate on nipping it in the bud. Dhanyavad. And then I leave it open to the House if there is anything for anybody to say. I think 1 or 2 आ सकते हैं। इतनी गंभीर बात तो नहीं थी कि सब में सन्नाटा छा गया, कुछ तो बोलिए। हाँ, यस, कोई बोलना चाहेंगे? आपके पास कैमरा माइक आ रहा है अभी। Okay, I made a few points. Sorry, I'm a bit nervous because I'm talking in front of elite intellectual people. So kindly Please read. accept my apology in advance. Sir, one point is, since yesterday we are actually hearing that IT is very much vulnerable. Anyone can, hack down any system that is on internet. But what I would say that if that was the case, all the banks
would be bankrupted. The only thing is that we are lacking our approach. So I would just like to highlight a couple of things. If we are talking about, see, tracking down any vulnerable device or any device which attacked, it's very much easy because in the entire world there are two things. One is IP address, that is very much easy for traceable, and second is hardware address, through which we can actually, one IP address can be assigned to me today, and tomorrow it can be assigned to someone else. But our hardware address will never get changed. The only thing is that I will just, draw you back a bit. When IT started getting matured, IT companies, they rather than focusing on in आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करिएगा आपको इंटरप्ट करने के लिए. आपके पास कुछ आइडियाज़ लगते हैं जो आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं. हैव आई अंडरस्टूड यू करेक्टली? Sir, I just would like to, highlight my approach. No, that is what I'm saying. Yeah. You Yes, are sir. most welcome. My only prayer is you write down a piece, give your name and details, give it to the authorities because the report I think will be prepared. Okay. They can get back to you, give your ideas because यहाँ हम न समझेंगे न हम लोग उस लेवल के हैं. Yours will be appreciated more by the experts. You give your whatever advices on a piece, whatever 1, 2, 3 pages, give it to the authorities with your name. They will consider it, and we are very happy that people are now contributing also. So please do it. But हमारे यहाँ हमको लगता है ये अभी के लिए ये थोड़ा सा out of the Yeah, bit heavy हो जाएगा. नहीं, यू आर वेरी प्लीज डू इट. अगर कुछ और करना है, सजेशंस है तो वो दे दें सब कोई. वो इट विल बी टेकन केयर ऑफ. इट विल गो टू द राइट अथॉरिटीज, पीपल हु आर रियली इनटू इट. अगर आप बोल रहे हैं ऐसा है तो फिर क्यों नहीं. हर किसी को अधिकार है और हर कोई कंट्रीब्यूट करता है. हम तो जुडिशरी में देखते हैं हर दिन हम लर्न करते हैं किसी एडवोकेट से. यू आर मोस्ट वेलकम. थैंक यू. Thank you, sir. एनीवन एल्स? वन मोर लास्ट. Please ask questions only. यस, इधर. Good morning, everyone. You will get a chance. I'm just a small learner, so before asking my question, I'll just like to say that I am a human, so bound to make mistakes. Not a picture of perfection, but heightened endeavor for the same. So my question is कि देखिए कोर्ट के सामने being an advocate हमें बहुत सारे documents पेश करने पड़ते हैं, and in good faith of our client, we used to produce certain e-documents also, some photocopies, some annexed documents also, and sometimes it's a big bundle of documents. And in good faith, when we are doing so, I would just like to ask a question, ki what are the important instructions or essential things which an advocate has to keep in mind while producing that e-documentations? Because अगर कुछ गलत होता है तो we are also in the queue of the allegations when we are producing those documents. So I just want to have that question. Moreover, one more question is from the IT experts, if somebody is here. Ki today is the era of eSIMs. If we are detecting the normal SIMs, what are the ways how we detect those eSIMs, which a phone can carry multiple eSIMs in a device? That's all, sir. थैंक यू मैम. आपको पहले ये बता दें सब किसी को कि एक फुल क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है. और जहाँ तक दूसरी बात रही, ये क्वेश्चन आपका हमको लगता है ये जजों से ही है बिकॉज आप कोर्ट की बात कर रहे हैं. तो थोड़ा सा एडवोकेट आप हैं, एक ध्यान रखें कि हम आपको आपके संतुष्टि के लायक जवाब नहीं दे सकेंगे क्योंकि अभी तक हम लोग जजेस हैं, कोर्ट होल्ड कर रहे हैं. वी आर नॉट सपोज टू disclose our mind what will be appreciated by us, what will not. It is case to case. But as an advocate, because हम सब advocacy करके आए हैं, थोड़ा सा due diligence helps. आपको समझ में आता है, आपके पास एक इंडिविजुअल क्लाइंट आया है, थोड़ा सा आप ज़्यादा समय देके ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं. बट स्टिल यू हैव अ चांस बिकॉज एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आंसर सेशन है. आई थिंक देयर थोड़ा और आप विस्तार से डिस्कस करेंगी. जस्ट वन मोर लास्ट. वो मैडम आप, हाँ, यस प्लीज.
Respected Dais, my name is Meenakshi, Judicial Officer posted at Hanumangarh. I have come across कि जब victim का जो एक initially जो एक court से expectation रहता है वो ये है कि उसका जो भी loss हुआ है वो earliest if identified that must be restored, the money must be restored. And recently, respected DGP साहब knows that new 2 SOPs sir launch हुई हैं 2nd जनवरी को एंड 12 जनवरी एंड नाउ 11 फरवरी को वो अनाउंस हुई हैं. उस एसओपी के अंदर ये मेंशन किया गया है कि अब विक्टिम को कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले बैंक से अपना एक कंप्लेंट कर सकता है कि मेरा ऐसे बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज़ हुआ है एंड दीज आर द डॉक्यूमेंट्स, आई एम इनोसेंट. उसके बाद डायरेक्टली जो है पुलिस देन एसपी लेवल पर ही उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी एंड विदाउट कोर्ट आए उसको उसका मनी मिल जाएगा. सो माय क्वेश्चन एंड रिक्वेस्ट इज़ ओनली कि उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में एक अगर डिस्कस हो दैट वुड बी बेटर, कि जिससे कोर्ट का जो रोल है वो हमें क्लैरिफाई हो सके कि इसमें अगर सब कुछ उसको उसी लेवल पर रिड्रेस हो जाएगी प्रॉब्लम तो कोर्ट का रोल कहाँ होगा. थैंक यू. मैडम, मैं जानता नहीं हूँ राजस्थान में क्या एसओपी है क्या है, बट 2 चीज़ें हैं. आपने कहा कि कुछ गाइडलाइंस आई हैं. अगर गाइडलाइंस आई हैं तो आप एज अ कोर्ट तो देख सकती हैं ना कि वो गाइडलाइंस फॉलो करके ये वो स्टेज आप तक आया है. गाइडलाइंस सही हुआ है या गलत हुआ है उसमें ज़्यादा आपको नहीं जानना है एज ए जुडिशियल ऑफिसर. देयर सर्टेन एसओपीज ये फॉलो हुए हैं कि नहीं. एक और माध्यम निकला है उसके पास, ही हैज़ अवेलेबल अ सेकेंडरी रूट बिफोर द अथॉरिटीज़ बिफोर कमिंग टू द कोर्ट. वो उसने एग्जॉस्ट किया है कि नहीं. आपका इतना ही रोल है, बाकी उसके लॉयर जानेगा, बाकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करेगा. हमको नहीं लगता है कि जुडिशियल ऑफिसर को उसमें इंटरफेयर करना चाहिए कि वेदर दैट हैज़ बिन करेक्टली कंसिडर्ड और नॉट. वो हाई कोर्ट के लेवल पे रिट पे हो सकता है, बट आपके पास तो जो प्रोसीजरल लॉज हैं जिसमें आप काम कर रहे हैं, एक गाइडलाइन आई है. आप इतना ज़रूर कह सकती हैं भाई पुलिस से कि भाई अगर ये गाइडलाइंस आई हैं आपकी, आप पे बाइंडिंग है, आप ये तो बता दें पीपी साहब कि ये गाइडलाइंस ये फॉलो कर चुका है, जो उसको एक अधिकार सरकार ने दिया है गाइडलाइन से या प्रशासन ने दिया है, कम से कम वो तो उसको मिल गया है. ये आप वेरीफाई कर सकती हैं. उसके अलावा और बाकी आई एम द जुडिशियल मिस्टर अत्री इज हियर, यू कैन हैव अ फुल सेशन ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स ऑन दिस, बिकॉज इफ समथिंग कम्स आउट वेयर जुडिशियल ऑफिसर्स आर unsure of, then the Judicial Academy will do it. So he will convey it to the Judicial Academy so that we can have a specific topic-oriented training module for you all in the Judicial Academy. Thank you. I hope it is all enjoyable. Both Brother Brindal and I shall be taking leave because of other commitments. It was wonderful being here, and I hope everybody would participate. ऐसा करिए. देखिए, कोई शर्म की बात नहीं है अगर आपके मन में कोई दुविधा है, क्लियर कर लीजिए. कहते हैं ना कि इट इज़ बेटर टू बी अ फूल फॉर 2 minutes रादर देन टू बी अ फूल फॉर द एंटायर लाइफ. आपके मन में कुछ आ रहा है, पूछ लीजिए, दुविधा क्लियर हो जाएगी, यहाँ से कुछ आप लेके जाएंगे. थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद. Lordship, kindly give us just 1 minute to present the souvenirs. As a small meaningful gesture of gratitude and respect, I invite Shri Hariom Atri, Member Secretary RSLSA, to kindly present the souvenir to Honorable Mr. Justice Ehsanuddin Amanullah Sahab. I invite Shri Abhay Jain Sahab, District and Session Judge and DLSA Chairman Bilwada, to come up on the stage and present the souvenir to Honorable Mr. Justice Shri Rajesh Bindal Sahab. Next, I invite Shri Ashwini Vid Sahab, District and Session Judge Bikaner and DLSA Chairman Bikaner, to kindly come up on the stage and present the souvenir to Honorable Mr. Justice Sameer Jain Sahab. Next, I invite Shri Banjeet Singh Sahab, District and Session Judge and DLSA Chairman Bharatpur, to kindly present the souvenir to Shri Rajiv Kumar Sharma Sahab. Next, I invite Shri Satyanarayan Vyas Sahab, District and Sessions Judge Kota and DLSA Chairman Kota, to present the souvenir to Ms. Suman Maliwal.
Honorable Mr. Justice Ehsanuddin Amanullah, who graced us by chairing the session, Honorable Mr. Justice Rajesh Bindal, Honorable Mr. Justice Sameer Jain Saab, who graciously co-chaired the session, Shri Rajiv Kumar Sharma Saab, Ms. Suman Maliwal. On behalf of Rajasthan State Legal Services Authority, I express our deep gratitude to honorable speakers for today for generously sharing their experiences and expertise. We formally conclude this first session, and we shall now proceed for a 5-minute short break and reassemble for the next session. Thank you, Lordship.
and grace us by chairing the session, sir. May I also invite Shri Vikas Sharma, DIG Police, Cybercrime, to also grace the dais. May I request all the participants to kindly get back to their seats. We are about to begin with the sessions, and the dignitaries have already graced the dais, and we are about to begin the sessions. I humbly request all the dignitaries and the participants to kindly come back to the seats so that we begin with the sessions. I again request all the participants to kindly grace the seats, come back to the seats in the auditorium. We are about to begin with the sessions. A very good afternoon. My esteemed brother on the dais, Brother Justice Koteshwar Singh, Brother Justice on the dais, the other panelists. I'll just keep the names and we'll start with this session. Actually, on my request, there's little change as I have to leave little early to catch a flight. So a little change in the session, and I am now having the, what you can say, I'm fortunate to have the session with my brother, Justice Koteshwar. All the brother judges, sisters from Rajasthan High Court, judicial officers, the delegates, resource person, my dear students. Well, जब भी राजस्थान आना होता है तो और खासकर जब जयपुर आता हूँ तो एक गाना है जो जयपुर की खूबसूरती को वर्णन करता है, बयां करता है, वो याद आता है मुझे। आपने भी सुना होगा कि शाम गुलाबी शहर गुलाबी पहर गुलाबी, ये शहर है गुलाबी, मैं भी गुलाबी, तू भी गुलाबी है, कहर है गुलाबी, ये शहर है गुलाबी। So it's always a pleasure to visit this beautiful pink city, जयपुर। और जैसे शहर बड़ा खूबसूरत है, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत आप लोग हैं कि जो हमें इतने प्यार से, इज्जत से हमें रिसीव करते हैं, वेलकम करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। और राजस्थान तो इस चीज़ के लिए बड़ा मशहूर है। आने वाले हर अतिथि का स्वागत आप खमाघनी और आओ पधारो हमारे देश इस तरीके से करते हैं। तो जब भी मौका मिलता है या कभी कभी मौका छीन भी लेता हूँ, इस बहाने आप लोगों से मिले, राजस्थान आए, इस शहर आए।
The earlier session was really very interesting, very engaging, and the credit goes to all those panelists, my esteemed brother, Brother Justice Amanullah, Brother Justice Bindal, Brother Samir, the other panelists. बड़ा ये विषय जो है आज के समय में इसकी बहुत अहमियत है और इसी विषय के अनुसार उसके विविध पहलुओं को उजागर करने के लिए हम लोग यहाँ साथ आए हुए हैं। बिंदल साहब ने एक जिक्र किया कि पर्सनल डाटा की सिक्योरिटी ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और कई बार तो हम खुद ही अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डाटा शेयर करते हैं, एक्सपोज करते हैं, जैसे उसके परिणाम हैं। कुछ सामाजिक परिणाम भी है। किस्सा याद आया कि एक श्रीमान जी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया एंड ही आस्क्ड फॉर पिज़्ज़ा विथ डबल चीज़। द लेडी अटेंडिंग द कॉल, उस लड़के ने कहा सर आई एम सॉरी आप डबल चीज़ वाला पिज़्ज़ा न लीजिए। तो कहते भाई क्यों न ले? तो कहती सर आपकी मेडिकल हिस्ट्री से आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि आप पिज़्ज़ा बटर ये सारी चीज़ों से ज़रा परहेज़ रखें। तो श्रीमान बड़े नाराज़ हो जाते, बोले हाउ आर यू कंसर्न, व्हाट इज दिस? तो मैं दूसरे डॉक्टर को हायर कर लूँगा। तो गर्ल बोलती है आई एम अफ्रेड यू कांट डू दिस। तो ये और भी नाराज़ हो जाते, बोले व्हाई आई कांट डू दिस? तो कहती कि सर आपका फाइनेंशियल स्टेटस बताता है कि आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। ऑलरेडी आपका फाइनेंशियल स्टेटस बड़ा वीक है। 2 बैंकों से आपने लोन लिया है, एक बैंक की लोन के इंस्टॉलमेंट के भुगतान हुई नहीं है 4-5, उस बैंक ने आपको नोटिस भेजा है। तो आई एम अफ्रेड कि आप फाइनेंशियली वो न कर पाएंगे। तो बेचारा गुस्से में आके फ़ोन पटक देता है। तो इसके ऐसे सामाजिक परिणाम भी हो सकते हैं। आई वॉज जस्ट इन अ लाइटर वेन एड्रेसिंग कि ये किस तरीके से हमें प्रभावित कर सकता है। और एक उसका सकारात्मक पहलू भी हमारे समीर भाई जी ने उनके बड़े डिटेल्ड प्रेजेंटेशन में दिया कि इस तरीके के जो अभी परिणाम सामने आ रहे हैं तो कानून भी अपने प्राविधान उस अनुसार बदल रहे, नए कानून के प्राविधान आ रहे हैं ताकि अपराधी जो केवल इस देश के सीमा में नहीं है तो देश के सीमा के बाहर है, वहाँ से अपराध करते हैं तो उन तक हम पहुँच पाएंगे, उनको कानून की गिरफ्त में लाएंगे और उनको सज़ा दे पाएंगे। इस तरीके के प्राविधान समीर जी ने बड़ा डिटेल उसका रिप्रेजेंटेशन दिया। समीर जी फिर लाइटर याद आ गया मुझे कि एक ज़माना था हमारे पुरानी फिल्मों में डायलॉग हुआ करता था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो लोग हंसते थे उस वक्त, लेकिन आज सही मायनों में वो डायलॉग शायद सही भी साबित हो रहा है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर कि इसकी व्याप्ति इतनी बड़ी है और एक पर्सनल अनुभव भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जिसका जिक्र किया भी, जैसे हमारे आपके आईजी साहब ने भी बोला कि ये ऑपरेट करने वाले लोग कई जगह छोटे देशों से, कंबोडिया जैसे देशों से करते। जब मैं कर्नाटक में चीफ जस्टिस था तो एक दिन अचानक हमारी लाइव स्ट्रीमिंग में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई और किसी ने उसके साथ छेड़खानी की। तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, उनकी असिस्टेंस ली गई, मदद ली गई। और हमने जब उनसे पूछा कि भाई क्या आपकी तहकीकात क्या बता रही है, तो उन्होंने बताया कि सर जो हमारी प्रिलिमिनरी या जो भी तहकीकात हो गई तो नॉट इवन अ स्मॉल कंट्री, ऑपरेटर्स कई स्मॉल आइलैंड पे से ये ऑपरेट कर रहे थे जो कैरेबियन आइलैंड्स के आसपास थे, जिनका नाम भी कई बार हमने सुना भी नहीं था। तो ऐसे किसी एक छोटे आइलैंड से कोई ऑपरेटर्स इस तरीके से ये ऑपरेट कर रहे थे। तो इस
तरीके से जिसकी व्याप्ति इतनी बड़ी है या जिसके परिणाम इतने गंभीर है, इन सारे साइबर क्राइम्स को किस तरीके से हम लोग इनका सामना करें, इस पर कानून के क्या प्राविधान हैं, कैसे एजेंसियां एक दूसरे की मदद लेकर ही ये कर सकती है, और ये अभी केवल कोई राज्यों की मदद नहीं, तो ये अनेक देशों को भी मिलकर एक साथ एकजुट होकर इसका सामना करना पड़ेगा। इस पर हमारे पहले के पैनलिस्ट ने भी जोर दिया। ये भी पैनल में जो हमारे बाकी पैनलिस्ट हैं वो भी उनके पहलुओं पे अपनी बात आपसे रखेंगे। जो मेरे सेशन का सब्जेक्ट था उस पे मैं अभी आता हूँ, और ये टेक्निकल सब्जेक्ट था, इसलिए मैंने जो भी मेरी प्रस्तुति है वो अंग्रेजी में की है, तो मैं आपको मेरा जो भी प्रस्तुति है वो आपको सुनाता हूँ। At the very outset, I convey my sincere appreciation to the Rajasthan State Legal Services Authority for organizing this important session on digital, that मेरा जो सेशन था उसी विषय से है, forensics and cyber security awareness, bringing together members of the judiciary, law enforcement, forensic experts, legal fraternity, reflects a forward-looking vision and a deep commitment to strengthening the justice delivery system in the digital era. Today, as we gather for this working session, it is important to recognize we are not merely discussing technology or law in isolation. We are deliberating upon the future of justice itself in an increasingly interconnected digital society. We are living in a time where technology is not merely a tool, it is the very infrastructure of governance, commerce, communication, and personal life. With the expansion of digital connectivity, the nature of crime has also undergone a fundamental transformation. Cybercrime today transits geographical boundaries, challenges conventional investigation methods, and often operates in anonymity. Therefore, discussion such as these are not only timely but essential. The theme of the session was types of the cybercrime procedure prevalent in the state, challenges in the investigation and prosecution, and the existing legal framework. The changing landscape of crime in the digital era, digital revolution has transformed every aspect of human life: communication, commerce, governance, even personal relationship. However, with this transformation, crime too has evolved. Cybercrime is no longer a niche or a specialized area. It has become a mainstream threat affecting individuals, institutions, and national security. Unlike conventional crimes, cyber offenses are borderless, anonymous, and often instantaneous. A single individual sitting in one part of the world can target thousands across multiple jurisdictions. The scale, speed, and sophistication of such offenses have created unprecedented challenge for the justice delivery system. Therefore, it is imperative that judges, lawyers, investigators, policymakers constantly upgrade their understanding and remain responsive to these evolving threats. Across many states, including Rajasthan, we are witnessing certain dominant trends in the cybercrime. Financial fraud remains the most widespread category. As in the earlier panel, the IG discussed about that, how widespread it is, the net worth of the value involved in the crime.
The phishing, identity theft, OTP fraud, UPI-based scams, and online banking fraud have become alarmingly frequent. These crimes exploit trust, lack of digital awareness, and technological gaps. Another area of serious concern in the cyber harassment, cyber stalking, and online intimidation. Misuse of social media platform for blackmail, extortion, and dissemination or false defamatory content has increased significantly. Women, children, and vulnerable groups are often the primary targets. We are also witnessing a rise in deepfake technology, morphing of images, and non-consensual circulation of private content. Such offenses cause long-term emotional and psychological harm and demand sensitive legal response. Further, organized cybercrime networks are emerging, often operating across national borders. Those networks engage in data theft, ransom attacks, cryptocurrency fraud, and attacks on digital infrastructure. The increasing link between cybercrime and organized crime underscores the seriousness of the issue. Challenges in investigation and the prosecution. Most of significant challenge lies in the investigation of cyber offenses. Unlike the traditional crime, physical evidence is replaced by digital footprints, which are fragile, volatile, and susceptible to alterations. Another challenge is jurisdiction. Cybercrime rarely confines itself to a single district or state. This necessitates interagency coordination, international cooperation, and standardized investigation protocols. Capacity building of police officers, prosecutors, and forensic experts is therefore indispensable. Data may be stored in cloud servers located in different jurisdictions. Encryption, anonymation tools, and virtual private network make tracking offender difficult. By the time investigative agencies initiate action, critical evidence may already be lost. Another major challenge is capacity and training. Investigators require specialized skills in digital forensic, data recovery, cyber intelligence. Coordination between the law enforcement agencies, service providers, and international authorities is essential but often complex. From the perspective of prosecution, the presentation of digital evidence in court poses its own difficulties. Ensuring admissibility, establishing authenticity, and maintaining continuity of evidence are crucial to securing conviction. The digital forensics has become central to modern criminal justice. Process of acquisition, preservation, and analysis of digital evidence must follow scientific protocols. Chain of custody may be strictly maintained. Every stage, from collection to storage to presentation, must be documented. Even minor procedural lapses may affect the credibility of evidence. Courts increasingly rely upon CCTV footage, call data records, metadata, emails, WhatsApp messages, social media communication, and digital photographs. However, understanding the scope and limitation of forensic report is equally important. Expert opinion assists the court, but does not replace the judicial scrutiny. And probably that was emphasized by Brother Justice Amanullah when he made his concluding remarks. The concept of integrity of evidence must remain at the heart of all investigations. This ensures fairness to both victim and the accused and strengthens the public confidence in justice delivery system. India has developed a comprehensive legal framework to deal with cyber offenses, including provisions under the Information Technology Act and the new criminal laws.
judicial interpretations continue to evolve, balancing technological advancement with constitutional safeguards. Procedural safeguards relating to privacy, due process, and protection against misuse of surveillance power must always be respected. As custodian of constitutional values, courts must ensure that technology strengthens liberty and security rather than undermines them. The admissibility and appreciation of electronic evidence requires clarity, consistency, and continuous legal education. Lawyers, prosecutors, and judges must remain updated with the changing legal landscape. Awareness and prevention are important as investigation and punishment. Legal literacy plays a crucial role in empowering citizens to recognize and avoid cyber threats. Legal aid providers, lawyers, and law students can become agents of digital awareness. Through outreach programs, community engagements, and innovative tools such as audiovisual initiative as Drishyam Vidhi, we can bridge the gap between law and society. Training programs for investigators, prosecutors, and judicial officers must be continuous and practical. Collaboration between forensic institutes, universities, and legal service authorities will help to create skilled ecosystem. Cyber security cannot be ensured by a single institution. It requires a coordinated and collaborative approach involving the judiciary, police, forensic expert, technology professionals, academia, and civil society. Standard operating procedure, technological upgrades, data sharing mechanism, and international cooperation must be strengthened. Equally, ethical and responsible use of technology must guide all stakeholders. The focus must shift from reactive response to proactive prevention, resilience, and public trust. In conclusion, cybercrime represents one of the greatest challenges of our time, yet it also presents an opportunity to modernize our institutions, strengthen our laws, and build a judicial system that is both technologically advanced and constitutionally grounded. I'm confident that the distinguished panel today will provide valuable insights and practical solutions. I look forward to learning from their experiences and wisdom. With these opening remarks, I once again thank the organizers and all participants. I also wish this session meaningful deliberation and productive outcome. And then I conclude with a beautiful couplet, the effort of this conference that can be summarized in the words of the great Dushyant Kumar, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए. Thank you all. Thank you, Lordship. Thank you very much for this introductory speech and giving us the way forward. Now, may I please request Honorable Mr. Justice and Koteshwar Singh, Judge Supreme Court of India, who is also a co-chair. Sir shall speak on topic electronic evidence under new criminal laws. Sir. Good afternoon, my esteemed brother Justice Varaleji and brother Ashokji, Judge of Rajasthan High Court, Vikasji, IPS Deputy Inspector General of Police, Cybercrime, Rajasthan, and Learned Counsel Dr. Rishit Dixit, Advocate and Cyber Law Consultant, and brother and sister judges from Rajasthan and other high courts, judges from various districts, lawyers. As I stand now, it's 5 past 1. The session was supposed to start at 12.
and lunch break is 1:30. So we have half an hour. So I requested organizer to extend it by another half hour because we're very eminent speakers here. Because judges are used to speak, in all these conferences by virtue of their position, not so much by their caliber. But we will request the other experts here to spend more time. In fact, as I stand, I just was recollecting what to say. I remember when I was a student, I was traveling by train, student not of law, in a graduation Delhi University. I was asleep in a train. Around 1 o'clock, I heard a shout, Mera sher, mera sher, mera sher. I was wondering because, see, my Hindi is limited. I said, Mera sher, isme train mein sher, lion ka kya hai? So I was wondering. Then because I woke up and said, Kya hua bhai? What is this happening? You're shouting, Mera sher, mera sher. But it appears that his share, that certificate was stolen by somebody when he was asleep. And obviously he's shouting because you won't know once it is stolen in railways, you know what is the fate. Because every station there is a stoppage, you won't find out. And you can't, go and ask him, Mera dikhao, mera tumhara suitcase kholo. So what I'm trying to say is that today you don't have that problem because all digital now. The share, how we have transformed ourselves, and also how we have transformed ourselves, our individuality also. पहले ज़माने होता था आपका आइडेंटिटी कार्ड वही फोटो वाला, आई कार्ड इशूड बाय योर कॉलेज और हो गया, बस पास भी आई कार्ड. But that I card has changed tremendously today's. Today's I card is not mere photo. Your I card is your iris photos. Your I card contains your fingerprints. Therefore, you are not identified by your mere physical appearance. कि आप तो बहुत smart है, आप तो बहुत सुंदर है, आप तो वो है, so people can remember. But it goes beyond it now. It has transcended a physical form of identity. It has taken a digital form which is much more. That's why we are all, that's why when I saw this invitation, I received invitation from the Legal Service Authority of Rajasthan, and they were discussing about it. I heavily accepted because even though I had some other request from other university, but I said I will give it because I want to learn. Because see, as for us, most of us are sitting here, especially the High Court judges, we are in a different, we belong to a different generation. Except for the young lawyers and judges, perhaps from the CJM onwards, they belong to a younger generation. They are more familiar with the cyber and digital world. We belong to the older generation. And we actually, therefore, we learned our driving in ambassadors and Fiats, where see, you have to physically do everything, for change gear, everything. Now today, you have all the cars, you all automatic and all various other cars you don't require. So what I'm trying to say is that similar thing, it has changed, our cyber law also has changed dramatically. As I see, cyber law can be divided into two phases. Historical, हम लोग history पढ़ते हैं इतिहास में, ancient Indian, Middle Age, then Mughal age, then British, modern age, whatever, so and so forth. Cyber law, I would divide into two categories: pre-2000 and post-2000. For the simple reason that 2000 IT Information Technology Act, which was enacted in 2000, brought a whole change in the law of cyber. Now, of course, as we understand, we think that this IT law is typical IT meant for all these issues. It is not actually. When IT law was enacted, it was enacted for the ease of business. They were not thinking so much about the cyber crimes for which DIG Sahib is here to all these works. When this IT 2000 Act was enacted, they had in mind this ease of doing business, trying to an additional forum, because already it was all earlier this paper-based documentation, all commercial transaction, others. Because the IT Act was basically in terms of UNCITRAL, this model law, to bring it electronic communication
as a mode of kind of transaction to ease it. So they were more focused in that. But fortunately, it has come in a long way to help in dealing with these issues, criminal laws as we understand. So as I understand, the law before, also there were digital and electronic law relating to, for example, recording of evidence, tape recorders. In some of the cases, if you remember, Yusuf Ali versus State of Maharashtra in 1968, they said, the Supreme Court said, yes, you can use tape recording, recording evidence to corroborate or discredit or to contradict or impeach the credentials of the witness. Then same thing it followed in 71 also. We see NC Ramana Reddy versus VV Giri. Similar issue came up. The use of, at a time technology was also very basic. Therefore there was no issue which engaged the mind of the judges also. Our judicial system responded according to the problem faced. The problem was not as serious, as complicated as today. Therefore, our interpretation was also limited. Similarly, and in fact, the famous case of NCT Delhi versus Navjot Sandhu, that parliament case, the Supreme Court said, well, so much, because this is of course post-2000, and by the time 65B had come into existence, but the Supreme Court said, oh, so much of conditions, no point, because we have to investigate, we have to convict. And if you are not able to get all the conditions fulfilled, no problem, you can go ahead. Because after all, 65 A says, well, may, B says, may, A. So first says it can be electronic evidence, may be also proved. Now, of course, there was a paradigm shift after that in the first judgment which overruled Sindhu was in Anwar, 2015. I say it is mandatory. You know, I just was, citing this, the evolution of law, that it is a mandatory provision, because it said it starts with this non-obstanted clause, notwithstanding anything. Therefore, they said, irrespective of what has been provided in other provisions of the Act, any Act for that matter, this is mandatory. Therefore, the whole evolution, it was upheld by the Supreme Court in Arjun Pandit, which will be, of course, discussed in detail by the Learned Counsel here. I can see he's Dr. Nishit, also he'll be speaking on the contours of 65B. I will not speak much on that, but I can just what are the basic features, just for easy remembrance, that what is that, to be admissible, the electron record, it must have been used, the source from which it is obtained, that it must have been used regularly. So used regularly, that's very important. Then number two, regularly fed. This data must be regularly fed into that system. It's not that once a while he walks in and he uses a computer once in a year or something like that. No, it should be regularly used. Of course, what is the meaning of regularly used? Of course, it has also not been very well defined. These are all gray areas, which will, of course, the court has to interpret in a much more meaningful manner. Then operating properly. These are very important words, operating properly. Then it reproduces the record as in the original. So what we see is that used regularly, regularly fed, operating properly, and reproduces the record. So these four elements, what we call, somebody has very well described as U4. If you want to remember this, U4, because everybody knows U4. That unidentified foreign object, no? Flying object or something like that. You add R into it. So you remember these are the criteria which a certificate must always fulfill before it is admissible in law. Yes, there's some other aspect also. Of course, we'll be happy to listen to the experts who are here, especially we have with us Vikas ji, who is actually in the field.
because we judges we are not in the field. We decide what is brought to our notice in the court of law, and because we are the ones who collect all these materials. And of course, they have to be careful. What is the material they collect? In what manner it has been collected? There are all challenges, especially before the investigating authorities. How to certify, for example, a document based on Googles. What do you do when the Googles do not respond? There are challenges. It will be all tested in the court of law. The defense is going to challenge that your certificate, so-called certificate you obtained, relating to a document obtained from Google Cloud or Yahoo Cloud, or for the matter any other cloud, has not been certified in accordance with 64B. There are challenges. They have to do it because they are the one who have to collect, and these certificates, obviously, as explained by the code, that this can be produced only at the stage, even at the stage of tendering evidence. See, at a time of investigation, may not be able to get it, but as your witness testifies in the court, at a time of that tendering of evidence, if you are able to produce that certificate, that is good enough. That's what these are all interpretation by court. Of course, these areas of law have to be also understood by the investigators. It's very important. Well, what do you mean by? I was listening to some speech also. If we read the definition of electronic evidence, they mention electromagnet and all this, so and so and so and so. And what is, then we have this pen drive, which we often use. Pen drive is a flash drive. It's not in the form of electronic, magnetic or digital. You know, said how is it included? Then what will happen to that evidence which is produced in the form of pen drive, because it does not technically strictly fall within the definition of electronic evidence under the Evidence Act. So these are areas, what I'm trying to say is that these are unfolding areas where, especially in the cyber law, which because everybody, it has been spoken since yesterday, the extent and the vastness and the complexity of cyber world is so difficult that the law, and it takes a long time to catch up. And all this, we came in 2000. I mean, after a decade, the computer was introduced in India, if I remember, sometime in 80s by Rajiv Gandhi, during that time, 84 or something like that. I don't know, I don't exactly remember. From 80s, there was no law dealing with this kind of evidence. It came up only in 2000. I just mentioned also this 2000 Act was introduced not primarily to deal with this cyber crime, but to do for betterment of the ease of doing business. But now we are in a situation where we have no other option but to deal with this façon. Now, what are the challenges? Challenges is that for especially judges who are all settled here, we are not police officers, we are not lawmakers, we are judges. What to do? Because ultimately, we are going to decide the matters. How do we decide a matter without having a comprehensive knowledge of this technology itself? I must say with all fairness, frankness, I mean, some people may take objection to it, because when about 5-6 years before, I asked some of these district judges, "Madam, आपके पास email है?" तो वो कहते नहीं, email नहीं है. अच्छा, आपको computer दिया हुआ है? Yes, sir. तो then I asked कि क्या करते हैं ये sir and madam लोग computer free में देते हैं? वो बच्चे लोग देखते हैं Netflix. See, we have to get used to it. Now, of course, that's not the situation. Everybody is now very kind of savvy, tech savvy now. Things have changed, but we have to change. Our judges, we have to also, our knowledge is not only about the law, the technical law which is contained in the Evidence Act and also the IT Act, as the case may be. It is the requirement of the day is to know how it functions. It's so important to know, because every day we have a cyber cases, complaint being filed by a girl, young girl, saying that I was
We had a friendship with this boy, and he uploads this. He has taken pictures of our very private moments, and he's going to upload. He's sharing your WhatsApp. How does this technology works? And as far as, of course, one good thing about 65B is that evidence, there is nothing called primary or secondary when it comes to electronic evidence. So long as satisfied is 4 categories, conditions of certification. As good, it doesn't actually, my understanding of 65B is that there is nothing like, because we all know in Evidence Act, traditionally we are told what kind of evidence we have. We have documentary evidence, we have oral evidence, then of course material evidence in terms of exhibits, especially in criminal cases we find the weapon of crime which was used, that is also evidence. Does it become, but it's not defined. But as per our Evidence Act, if you rely on something, if it is producible, best evidence, you have to produce it. That's a material evidence. But computer, all these issues now have been all covered by 65B. What I'm trying to say is that it's a time for all the judges to be not only well acquainted, but be a master of this technology. Without which, same with the investigators. I'm sure Sharma ji also expert in this technology, because otherwise you won't be able to find out where all this digital, because I remember when Pulwama attack took place in 2019, when bomb blast, the investigator relied on digital evidence to pinpoint the culprit. From the videos which were there, it was found that all the videos were circulated, they were all morphed. But he went deep into this technology and found out that the video which was being circulated was a fake one, and he could identify from the IP addresses and all these aspects. So time that is not only the investigators who have to have the knowledge of the technology, but we judges must also have it. Otherwise, we will not be able to do full justice. We will not be able to appreciate the problem before us. So I think I've spoken more than I should speak in terms of time, because this is such a vast and area, constantly evolving area of law. And I would obviously be very happy to listen to other experts in the field here. With these few words, I like to thank the organizers, the Legal Service Authority, for giving me this opportunity to share a few thoughts on this subject. Thank you very much. Thank you, Honorable. Thank you very much. May I now request Honorable Mr. Justice Ashok Kumar Jain, Judge, Rajasthan High Court, Jaipur, who is also a co-chair, to please come and share his views on identification, collection, preservation, and presentation of e-evidence with special emphasis on CCTV footage, social media, WhatsApp messages, and digital photographs, which is a very, very important session over here. Good afternoon, everyone. Namaskar. Before coming to the issue, just I want to point you out 2 things. First is that not to be afraid of use of mobile, digital devices and internet. Why I am saying so is that it is there to boost our ecosystem, particularly business. If you want to become a poor, I tell you, just refrain using the facilities which has been created. So, not to be hyped from it. I just want to highlight एक छोटी सी बात. I just will be in Hindi and English, mix both. Just I want to point you out that total digital transaction per month in this country is 26 lakh crore. And that has been addressed by Payment and Settlement Act 2007. And the entire governance is of Reserve Bank of India. The entire system has been managed very well.
It takes care of every kind of effort, what has been required to be done. There is no need of unnecessary creating a hype about cybercrime. The total loss of money is 0.17% of the total digital transaction. 0.17%. And as a, if you know about the business, 10% of the total turnover amount is the profit and 10% out of is the loss and sundry expenses. This is not even 1% of that. And the banks have already taken care of it. इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है. जिनकी जरूरत है, जो कल ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने बोला, हमें सिर्फ वो सोचने की जरूरत है कि डिजिटल अरेस्ट, इट अफेक्ट्स द लाइफ एंड लाइवलीहुड ऑफ इंडिविजुअल्स. वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनल राइट, infringement of personal right, the privacy, the other things which are going on. So as regard to minor cyber crimes are concerned, and if we are creating a, I say just a ecosystem, we are in fact acting against the business ecosystem. So that what I want to start with. Just a caveat from my side, not to be afraid of everything. Let it be. You redress, you ask the people to redress your grievances from the bank, from the consumer forum, from the court, whatever is possible. One of the lady judicial officer from Hanumangarh has asked one question. I just want to point out here that you see 106 and 107 of BNSS is sufficient to take care of everything. The power of 106 is with the police and 107 is with the court. Nowhere any SOP cannot put a doubt on your power as exercised under section 107 of BNSS. So you are well empowered under the law. This is what I want to put a caveat before coming to the issue. I just want to point out that I am not going to discuss the legal issues. I just will focus on what is required and what is been done in a reality. Just I will take you to one of the case which was considered by Supreme Court. That is Chandrabhan Sanap versus State of Maharashtra. Sir, this case belonged to Bombay. And a very fair, sir, I am sorry अगर आप उनमें बेंच में कोई रहे हो. सर नहीं, मैं सर जस्ट एकेडमिक बात पर, ये केस ऐसा था जिसके अंदर जो अपराधी है वो रेलवे स्टेशन पर अपराध करता है. ट्रेवलर लेडी है, उसके साथ रेप होता है और मर्डर होता है. पुलिस उसमें सारी सीसीटीवी फुटेज लेती, क्योंकि मेरा टॉपिक है सीसीटीवी, इसलिए मैं उससे शुरू कर रहा हूं. लॉ का फॉलोआउट क्या होता है मैं उस इंपैक्ट से बताना चाहता हूं. 2014 में जब ये केस रजिस्टर्ड हुआ, सीसीटीवी फुटेज ली गई, जो भी डिजिटल एविडेंस अवेलेबल थी वो पुलिस ने ली. केस फॉरवर्ड किया सेशंस कोर्ट को बॉम्बे. मुंबई की कोर्ट ने उसको कॉन्विक्ट किया 302 में, 376 में, और 7 के अंदर उसको फांसी की सजा दी. डेथ रेफरेंस ट्रेवल हुआ बॉम्बे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच को. बॉम्बे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने उस डेथ रेफरेंस को अपहेल्ड किया. सुप्रीम कोर्ट में 2015 के अंदर ये अपील फाइल हुई उसके बाद, और 2025 में उसका डिसीजन आया. तब तक जो लॉ की पोजीशन थी 65B की और कलेक्शन ऑफ डिजिटल एविडेंस, वो चेंज हो गई.
we are day by day growing, we are understanding so many things. Day before yesterday, I was in Bangalore and in one of the program that relates to Nari Shakti. We have discussed one of the judgment were recently pronounced by Supreme Court in case of Jane Kaushik. That relates to rights relating to transgenders. A trans woman faced discrimination and Supreme Court evolved a theory of omissive discrimination. You were duty bound to take certain steps, you failed to take, then you committed omissions. You omitted certain things. That the liability was upon you to do a particular thing, but you failed to take steps. That's why the Supreme Court imposed fine of 50,000 not only on Union of India but state government and also the private educational institution that you failed to take steps under the Act of 2019. So we are evolving legal doctrines on day-to-day basis as we are facing the problem. Herein, after the larger bench judgment in case of Arjun Pandit Rao's case, the fate of the case is acquittal, as it lacks the mandatory requirement as prescribed under the case of Arjun Pandit Rao. Earlier, as Honorable Lordships have discussed the earlier position of law pre-2020. On the basis of this, the conviction was held by the Sessions Court and upheld by the Division Bench. The position of law certainly resulted into an acquittal in a very well-proved case before the trial court. Of course, the issue pertains to circumstantial evidence. Birdhichand Bhagwan Das Sharda is the case whereby the Supreme Court has prescribed certain guidelines and on basis of that, the District Court, the Sessions Court and the Division Bench held that yes, the parameters are complete. But as regard to chain of evidence to prove the circumstances, that was digital in nature and it was held that yes, no, these are not complete as per the law mandated under the Indian Evidence Act. So that was the case, and from that point I just want to point out few things which I feel that will be useful for all of you. I am refraining myself from using any legal language as far as possible. You see, there are two types of record. A record which you normally know, that is one is electronic record and that is another is digital record. These are two different aspects. First is electronic record. What is electronic record? Data created, stored, transmitted via electronic system, part of a broader communication platform. This is what the electronic record is. And the example of these are email, SMS, web pages and Excel linked to the system. The second is the digital record. What are the digital records? The files in digital form, either originally digital or digitized in physical resources. They are PDF, scanned images, MP3, MP4, Word files. Now there are several cases which travel to the magistrate that relates to email and also the production of printouts from certain sources, say from computer, from WhatsApp, from Telegram or any other thing. There are challenges, no doubt about it, that the perpetrator is in other country, but I tell you, if I commit a crime by sitting here, my location will be traced in Cambodia. This is very well possible. I have to use Tor browser and a system, hardware which is nowhere being registered in my email account. Even
even the internet of this RIC or the Airtel will not detect me that I am here. This what the issue is. Nobody can. It will easily say that I am in Cambodia, but in fact I am in India. It is like this. So this all depend upon how this happened. In fact, I tried yesterday evening when Mr. Atriji told me that if it is possible to give up some presentation, I thought that how the collection of data is made. So I tried to contact one of the agency in Bombay, but yesterday they were engaged with IT team and ED team in one of the search, and they say, sir, we cannot compromise by engaging ourselves in presentation because we are already in a team. So then even if he pointed out one issue, he said one of the person who was detained by the IT income tax department, he was having Samsung S23 Ultra, and it is 11 hours since then we are working to transfer his data and is still not able to transfer the data. Though we are using MD software, that is again a Korean software. In 2014-15, when I was part of one of the certificate course in Lal Bahadur Shastri Academy on cyber crimes, then at that time we were taught on Paladin software. Nowadays the days of Paladin software has gone. Many more softwares are there, and I will list a few of them, and they in fact very methodologically detect the data. Like anything, even if you have scrapped and locked the phone, even if everything, except for the newer version of iPhone, everything can be detected and it can be decoded, except that. For example, iOS 26.1, 26.2 still the cyber forensics, they are unable to detect the code. So it all depend upon, that's why people say if you want to remain safe, please don't click on unknown emails, unknown links, or don't respond to unknown phone number. In fact, we have enabled our settings in a manner, if anybody call from unknown number, then automatically it is rejected. Only the persons in my contact list can contact me by any number. They cannot contact no unknown number. So I am out of the phishing network of anyone. Nobody can. So these all are, the security feature is there. If you are indulged voluntarily in phishing or anything, then you can become a victim, otherwise not. So the atmosphere is quite safe. It is not necessary to put a more vigil what has been required. I say if you want that, if you want to remain in a safe atmosphere, please follow the protocol. That is all required. सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, यही सिद्धांत यहां पर लागू होता है. The issue before us is collection and preservation in digital forensic investigation. First is identification of digital evidence. Identify the device and media that may contain relevant evidence. Securing the scene, documentation, chain of custody has already been discussed. Legal authorization.
digital forensic toolkits, forensic imaging, hashing is very important, documentation of procedure, evidence packaging, safely transporting. Here I want to point you out because some of the police officials are there. I tell you, they only create one cloning device of the main device so as to distort the data. In fact, it requires two. One is master device and second is workable device. Master device has to be sealed then and there, and it has to be used only when court demands. And this is the common mistake committed by everyone. They have only one device with them. And moreover, they seal the original device as it is without cloning it. As soon as you open the device, the hashing and the value has to be same as it is. So there has to be system of integrity. Integrity should not be compromised at any point of time. The basic of the forensic is when two things came in contact with each other, they leave their impression on each other. If a device has been used for any purposes in any careless manner, deliberately or without any reason, then it can change the hash value and further compromise the integrity. There has to be a documentation of storage, data verification, that I already talked about it, backup copies, legal documentation. One more thing which I want to point you out about the three specific objects which are produced before the court. First is the CCTV footage. You see, there are chances of editing and overwriting. The solution is forensic copy at seizure, hash at stages, 65B certificate from technician. When somebody uses seizes original DVR, a copy of that has to be procured immediately by using any of the software. Last one is the digital photos. There are chances of metadata loss, chances of editing. So the solution is original file secured with EXIF, expert hash report. These are essentially required. I just want to point out few tools which are used. Mostly there are two tools which are used. One is Celebrite UFED. This is an Israeli software currently used by the expert in the country. Second is American software Magnet Oxim. This is used for iOS and also for cloud and also for this Android. Mobile devices, SIM card, mass storage, camera, quick copy, etc. Everything is possible. Again, mostly used software is, one of the most used software is Oxygen Forensic Detectives. Again, Mobile Edit Forensics. Belkasoft Evidence Center X. MSAB X-ray. And for Androids, particularly Samsung devices, normally used is MD Next. There are few more, but these are the important softwares which are being used for collecting and storing the digital evidences, transferring and also the analyzing the tools. Thank you very much. Jai Hind.
Thank you very much, sir. Now, may I please request Shri Vikas Sharma, IPS Deputy Inspector of General of Police, Cybercrime, Rajasthan. Sir, we would like to have the detailed discussion from your side, as Lordships have actually asked you, being a subject matter specialist. So, detailed one, please. Thank you. Good afternoon, sir. Honorable Justice Prasanna, sir. Justice N. Koteshwar, sir. Honorable Justice Ashok Kumar Jain, sir. Honorable Judges of the High Courts. Honorable District and Session Judges and Honorable Judges from the respective districts, sir. Sir, I've been given this topic about admissibility, appreciation and relevancy of electronic evidence with special emphasis towards the recently enacted Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023, sir. Sir, the Honorable Judges have touched upon this subject, that how important it is to have a very good ground regarding the seizing of electronic and digital evidences and making them a part of evidence such a way that the accused does not get benefit. The accused does not get benefit, and the work that has been done by police is thrown to zero because of certain lacunas that we can do while seizing our evidences, while properly packaging it, maintaining the chain of custody, and then presenting it before the honorable courts. So, sir, this particular act that has come has tried to address the various things that have come up with the advent of technology, and how we should be working on towards making our evidences part of proper perusal before the honorable courts. Sir, as sir has also told, sir, electronic evidence, including digital evidence, is any information which is stored, transmitted electronically or digitally. Commonly, it includes computer data, audio, video, text, messages, pictures. Now it is also using location services also, which is coming as a new thing that is becoming a part of our digital evidences. And it serves as a digital proof, while it has a very good advantage that it cannot be altered if it is produced before the honorable court in a very proper way. But side by side, it is very, very important that it is stored properly, it is produced before the forensic department properly, and then the forensic report, along with all requisite certificates that I'll talk about later, are produced in a fair manner. So the new criminal law, Bharatiya Sakshya Adhiniyam, has tried to bridge this gap where we were lacking in the certification part, and later on we'll come to see that they have given a very clear mandate about what should be the job of an expert, what should be the job of the seizing officer. So the foundation of this particular act is the IT Act. This was the first act to recognize what is an electronic device or an electronic record and how it should be used. The categorization of that particular evidence as an electronic evidence was started from the amendment that had come, and it was governed by the later amendment in the repealed Indian Evidence Act as 65B certificate, which most of us were using. But now it has come as 63 BSA with more enhanced ways of procuring that evidence and securing that evidence. So the modernization of this evidence law has made the scope of securing digital evidence more broader, sir. Now, initially the Indian Evidence Act did not contain electronic or digital record per se. But in this particular act, it has been quite clearly maintained that electronic and digital records have the same legal sanctity as a document. Whatever document that we had mentioned in our, the definition of document that we had also covers the electronic evidence now. So the email logs, server logs, cloud data, locational data, all these are now a part of evidence and can be produced before the honorable courts.
And they hold the same legality, and they are the same in enforceable as physical paper documents. Sir, for any evidence to be of any use, it should be relevant, it should address to the fact in issue, and it should give proper evidence about how the crime is being committed. Like we see in case of cyber crime, where a mobile phone or a computer system or any digital device is a main component which from which the cyber crime is being committed. It is the modus operandi of the committing the crime. So we should be able to properly, as sir has mentioned, make a proper clone copy of that, so that that clone copy should be used in investigation. The primary evidence which we recovered from the scene of crime should be stored in there, and it should be sent to the forensic department as soon as we can, without unnecessary delay. And on that clone copy, we should work with our available softwares and our available investigative tools, and then cull out information from that particular device, take a proper certification from the FSL people, and present it before the court. Sir, the expanded definition has given relevancy to the logic that now a GPS log also qualifies as a document, because it has been explicitly stated in the new Act, sir. Sorry, sir. Sir, the general rules of admissibility, sir, that it should be logically relevant to the case obtained. It is very much a common sense thing, sir. It should be the original evidence, sir. Sir, there are two things in the evidence that has been put in the new Criminal Act. It is that there are going to be primary evidences and secondary evidences. So any original evidence is considered as a primary evidence. Original evidence means if my phone is being used to commit certain crime, so my phone is a primary evidence. It does not need any certification from any other person, except when the IO has seized the original device and made a proper copy with proper hashing of the mobile phone, written in the proper form of a memo, and then present it before the FSL department, sir. So copies are secondary evidences, but they have to be very much certified in the way that has been provided in this particular law, that how do you make a copy of it, how do you certify it, so that it is the chain of custody is maintained, and there is no allegation of tampering on that particular secondary evidence that you are presenting in the court. And yes, sir, it is still a learning process for police, that we are working on how to the secondary evidences particularly, because most of the cases we find these secondary evidences. So how to make the secondary evidences as a part of our investigation in a very, very cogent and legal way, sir. Sir, the key provisions of the new Act. ये एक बार सर ये टीवी बंद हो गया तो दिखाई नहीं रहा मुझे. Sir, I can. Sir. Yes, sir. Sir. Sir, Section 61 of this Act, sir, it has given the main teeth to the collection of evidence and categorization of evidence, so that any digital evidence cannot be simply rushed away because it is a digital evidence. So digital evidence has the same evidentiary value which earlier other documents or oral evidence, proper oral evidences had. Yeah, sir. Sir, the Section 63 has further expanded it, sir. Even the devices like semiconductor devices, sir, which are mainly storage devices also, optical media devices, sir, if they are also properly in the form of evidence as specified, they can be considered as primary evidences and are in the same boat as a documentary evidence. So
the Act has given a very wide scope to the definition of a digital device, and anything which can be used as a communication measure, as a measure of storage, as a measure of transferring information electronically, can now be a part of as a digital evidence under this Act, sir. And Section 57 has also broadened this definition of primary evidence. The thing that is in custody of a person becomes primary evidence if it is produced in that way only, sir. Sir, Section 59 of the Act defines that there will be a secondary evidence. Earlier, sir, the thing that has changed from the Indian Evidence Act was this specific introduction of a particular evidence as a secondary evidence, which was not specifically there in the 65B earlier or the Indian Evidence Act earlier. So now, primary evidence and secondary evidence are defined in black and white in the law, and they become part of what should be the proper way of investigation of a particular case, and we are working on the SOPs so that these particular the steps that are required in this are followed properly, and the courts will not have any pain in, because we sometimes interact with our honorable judges, and we find that because of certain very minute procedural lapses, some cases which should result in conviction end up getting acquitted, sir. So, Nitish sir also is here, sir. We have interacted with him also, and he is also given us certain points which can become a part of our SOPs, so that our field officers can work on it to identify primary and secondary evidences properly, sir. Because, sir, what happens with police is we do a very good job till the where the crime is to be cracked. So there we stop. Then the next part is how to make it in a proper evidence and present it before the court. We mostly lack in that. That is one of the reasons for lower conviction rates, and with everything becoming digital now. So with each and every case, we'll have to have more focus on this particular type of collection of evidence, sir. Sir, as secondary evidence has to be admitted with particular directions as given in the Section 65 of the Section 63 of this new Act and 65B of the earlier Act. So these are the criteria for admissibility and certification. 63(2) mandates that electronic record must be formally certified. They should meet the standards of reliability and integrity to the satisfaction of the court. If it is a computer system, the data extracted from the computer system should be free from tampering or digital imperfection or digital mutation in that. 63(4) is where the detailed certificate and the performa for detailed certificate has been given, sir. The certificate can be produced by the person who is in charge, and a second certificate by an expert that has been mandated by law. It is 2 parts. This certificate is to be generated. Part A is one person who is actually the producing party of that certificate. If it is a primary evidence, then that particular Part A certificate and that certification by an expert in Part B certificate. If it is a secondary evidence, then for that secondary evidence, first that proper chain of custody has to be maintained. Then will come the Part A certificate, then will come the Part B certificate, sir. Sir, I'll have 2 or 3 minutes on this Part A and Part B, sir. Part A is basically, sir, the person who is actually having that particular digital information or digital device or digital thing, that has to be part of the investigation, sir. And Part B is an expert evidence which certifies that the information that was taken in Part A is untampered. He does it by using something called as a hash value, sir. This hash value maintains the integrity of that evidence. As soon as I put something else in that particular evidence, primary evidence, the hash value will change. So if
I go to the court with that tampered evidence, the defense lawyer can easily ask that hash value when it was seized was something else, and now it is something else. So this means that something had been added or deleted or altered in that particular evidence. So maintaining that hash value and giving it by an expert is the main crux of this new law, where the threshold of our evidence will improve as it is given by a particular expert in that field, sir. We are in process of recruiting forensic investigators also, sir, who will give these hash values. Our state has recently given 50 mobile vans to each district, where this particular thing will come up slowly in our working, sir. So though this is the strict certification, it has to be two-part certification. Part A from the party, it may be police, it may be the person from whom we are seizing, it may be the person who is giving a secondary evidence with proper chain of custody. And part B is completed by an expert using specific algorithms. Sir, our government has trained and declared 384 constables. Our home department has done it, sir. These are part B certified experts. It is to bridge the gap till time the forensic capabilities reach to the level where we can have a particular IO in the field with a particular forensic investigator to give these hash values, sir. Sir, bank servers, iCloud data, Google Sheet data, all these data are treated as primary evidences unless they are disputed during the course of investigation or trial. So primarily the data that we are receiving from servers like Google or Apple, primarily it is a primary evidence unless there is a question mark over that. That is during the course of trial it may come that this particular evidence is being fabricated. Then we can go to the particular service provider and ask for certification from them. Sir, chain of custody is very, very important as in all evidences. So, but with digital evidences and the now proliferation of such crimes where digital evidence is the key, it is very, very important that we have a strict chain of custody. Collection, control, transfer, analysis, everything has to stand the test of the honorable courts. So algorithms like SHA-26 or MD5, these are industry grade algorithms which generate hash values. So these create a very unique digital footprint, and that particular evidence will have a very unique signature of it if it is properly hashed. Any alteration to any file, even if I put it into the system and maybe just copy some part and I don't even alter the data, but even copying itself will alter the hash value. So if properly it is done, it will be a very good way of presenting evidence in the court. The court can appreciate by first evaluating the Part A certificate, whether the Part A certificate is generated properly so that the chain of custody is established, and then the Part B certificate for authenticity, that the hash value is proper, the hash value has not been changed, and the digital evidence has not been altered, sir. Sir, thank you, sir. This was all from my side, sir, and I really thank RSLSA and Honorable High Court for giving us this opportunity, because this per se is a new field for us, sir. How to present the evidence in court is a very challenging part for police, and hopefully we can learn from such interactions, and the other side also comes to us that this is your errors, you should rectify on them. Thank you, sir. Good day, sir. Thank you very much, sir. It was quite interesting and informative session. However, I will request you, the way I saw honorables writing down all whatever you were mentioning, if you could give a copy of each to each, that will be quite helpful. No, I'm saying that the way I saw honorables writing down whatever you're saying, so if you could give a copy of each, to each the honorable, that would be quite helpful to them. Thank you very much. Now, may I please request Dr. Nishit Dikshit, advocate and cyber law consultant, to speak on the contours of Section 65B in the light of Arjun Pandit Rao Khotkar versus Kailash Kushan Rao Gorantyal. This is the last,
discussion on it, discourse on it, but the most interesting definitely was he comes from the field. So I will request everybody, especially the new students of the law, to be very, very careful and attentive to listening to it. Thank you. Thank you, sir. Pranam sabhi ko. Dignitaries on a dais, dignitaries of the dais. लास्ट में डिफेंस को बुलाया जाता है क्लाइमैक्स के लिए, तो मैं समझ रहा हूँ शायद मेरे को इसीलिए लास्ट में रखा गया है. To be very frank, we are talking about admissibility of electronic evidence. Forget about it. 90% cases we can easily solve. 90% we can secure conviction if we are totally taking original device. We are relying only admissibility, but we have to take care of about authenticity of electronic evidence. हम सिर्फ admissibility पे भाग रहे हैं 2000 से, हम उसकी authenticity की बात नहीं कर रहे हैं. मुझे किसी ने एक चैट किया, मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा, आई टुक द स्क्रीनशॉट, मैं आयो के पास गया, दिस ओरिजिनेटर हैज सेंड मी दिस व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द स्क्रीनशॉट. आयो क्या कहेगा, आप स्क्रीनशॉट दे दीजिए, 65 भी दे दीजिए. इट इज एडमिसिबल, इट इज एडमिसिबल. व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट इज एडमिसिबल एज फार एज इंडियन लॉ इज कंसर्न. स्क्रीनशॉट प्लस 65B. नाउ व्हाट इज द चैलेंज? Whether this originator sent me this content or not, whether his mobile phone was confiscated or not, whether it was forensically examined or not, it might be possible I am using fake WhatsApp generating messaging applications. It's now available. मैं उसके साथ 3 चैट में से एक चैट मैंने चेंज कर दी. If you go through, आप खुद भी देख सकते हैं fake WhatsApp generator applications. आप उसमें एयरटेल है, अगर उसका फ़ोन वोडाफोन का है तो मैं इसमें वोडाफोन फ्लिक कर दूंगा, उसकी डीपी लगा दूंगा और सेम चैट्स लगा दूंगा जो चैट्स उसने किए जस्ट पहले की चैट. उसमें मुझे टाइमिंग डाल दूंगा 3:21 AM, यानी सुबह 3:21 में उसने मुझे चैट किया. आई एम रिलाइंग ऑन एडमिसिबिलिटी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द ऑथेंटिसिटी. संजय सिंह राव चौहान वर्सेस दत्ताराव गुलाबराव फाल्के, 2015 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. Very landmark judgment as far as source and authenticity are 2 hallmarks of electronic evidence. हम law enforcement agencies की with due respect गलतियां वहीं हो रही हैं because we are not confiscating primary evidences. हम digital device ले नहीं रहे, like CCTV sir has covered. If you go through by the landmark judgment of Delhi High Court, Kishan Tripathi versus State of NCT 2015, twin fold test. You have confiscated CCTV footage. The honorable court has to identify the person कि ये लग रहा है नहीं लग रहा. हाँ, बस इतना ही honorable judge का काम है कि yes ये लग रहा है या नहीं लग रहा. It has to be forensically examined by the forensic lab. Twin test. First is the integrity of this device. The device का जो technical part है उसमें तो कोई manipulation नहीं है. Second is the content related. क्या वो CCTV में कोई manipulation record में तो नहीं है. तो ट्विन टेस्ट के लिए किशन त्रिपाठी में क्लियर किया गया. वेरी लैंडमार्क जजमेंट ऑफ ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट. सेकंड इज वैजनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018. कंप्लीट एसओपी हैज बीन गिवन. अगर सीसीटीवी कहीं किसी विक्टिम के यहां लग रहा है तो क्या वो मना करेगा कि आप मत ले जाइए डीवीआर हार्ड ड्राइव? कौन मना करेगा? यू हैव टू कॉन्फिस्केट प्राइमरी एविडेंस. आपका केस हमेशा स्ट्रांग रहेगा क्योंकि इट हैज टू बी ओनली फॉरेंसिकली एग्जामिन्ड. सीधा भेज दिया आपने, नो 65B पार्ट ए पार्ट बी, किससे लेना नहीं लेना, हैश वैल्यू कौन सी. इट इज द ड्यूटी ऑफ द फॉरेंसिक एग्जामिनेशंस. यू जस्ट कॉन्फिस्केट, सेंड इट टू FSL. द फॉरेंसिक विल डू देयर जॉब. इफ द सिस्टम इज इंस्टॉल्ड इन एक्यूज्ड हाउस, अगेन उससे भी क्या वो बार्गेन थोड़ा करेगा, सब 65B ले लो. एक्यूज से तो वैसे भी 65B नहीं ले सकते. सेल्फ इंक्रिमिनेशन तो आपको प्राइमरी सीज करना है. तो गलतियां हमारी ग्राउंड लेवल पे है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज से. थर्ड पार्टी, ये चैलेंज है. थर्ड पार्टी मींस नीदर ही इज एक्यूज नॉर ही इज विक्टिम. उसके घर के सामने मर्डर हुआ है, अब उसके यहाँ CCTV लग रहा है. प्रैक्टिकली क्या होगा? सिविलाइज सिटीजन के रूप में आयो मांगेगा, भाई आपके यहाँ CCTV लग रहा है, प्लीज हैंड इट ओवर. वो कहेगा सॉरी सर इतना महंगा है, आप क्यों ले जा रहे हो मेरा. बट बेस्ट एविडेंस रूल यू हैव टू फॉलो. आयोग को थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ेगा. फॉरगिव माय लैंग्वेज. आयोग को स्वार्थी इसलिए बनना पड़ेगा बिकॉज इट इज हिज केस. और कहीं मर्डर हुआ है, स्टैबिंग हुई है, और ही हैज टू इशू द नोटिस. आपको बाद में क्रॉस में पूछा जाएगा कि क्या किसने, आपने मांगा क्यों नहीं, प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल था, व्हाई यू डिडंट कॉन्फिस्केट इट. किसने मना किया था आपको देने के लिए? के रामाजयम का बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट था मद्रास हाईकोर्ट का 2016 में, जिसमें ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था सबसे पहले, इट इज द ड्यूटी ऑफ द आयो टेक द प्राइमरी एविडेंस एंड कंपनसेट. स्टेट गवर्नमेंट हैज टू कंपनसेट.
ऐसी स्टेज में। और दिल्ली पुलिस 2017 से दे हैव द स्पेशल नोटिफिकेशन ऑफ 448 और दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने सबमिट किया उस पूरे एसओपी को कि दे आर सीजिंग प्राइमरी डीवीआर हार्ड ड्राइव फ्रॉम द थर्ड पार्टी ऑल्सो एंड दे आर प्रोवाइडिंग न्यू डीवीआर हार्ड ड्राइव। सिंस 2017 दे हैव स्पेशल सेल इन दिल्ली पुलिस कि वो थर्ड पार्टी से लेते हैं डीवीआर हार्ड ड्राइव और उसको नया देते हैं। सर अब आप बताइए कहाँ मुझे 65 भी चाहिए, कहाँ मुझे एडमिसिबिलिटी के पीछे जाना है? मेरा केस तो 100% अगर मैं रिलाई कर रहा हूँ डिजिटल एविडेंस में 100% कन्विक्शन में जा रहा है अगर इफ आई एम डिपेंडेंट अपॉन दिस डिजिटल डिवाइस। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वी ऑल आर लिविंग इन डिजिटल इरा। जो डीएनए था, स्वेट था, सीमेन था, हेयर है, टूथ है, अब वो बिल्कुल डिसअपियर हो गया है। नाउ यू हैव digital DNA. What is digital DNA? That is 0-1 bits and bytes. If I am using this phone, this is smartphone, but I am not smart. This mobile is smart. This smart people uses this phone. सबसे स्मार्ट फोन ही अगर देखा जाए तो स्मार्ट पीपल फोन। बिकॉज अगर मैं इससे क्राइम करता हूं तो ओनली CDR विल बी अवेलेबल, कॉल डाटा रिकॉर्ड। बट इफ आई एम यूजिंग दिस फोन, इसमें मेरा CDR भी आएगा और IPDR भी आएगा। मैंने बहुत से केसेस देखे एज ए डिफेंस लॉयर जिसमें विक्टिम क्रिमिनल ने इस फोन को यूज किया और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने सिर्फ CDR लगा रखा है, CDR लगा रखा है। वाइप कॉल चल रही है उसकी, रात को 12 बजे बाद मर्डर हुआ है और उसका 9 बजे बाद कोई CDR नहीं है। आयोग कहता है सर 9 बजे बाद तो इसने बात ही नहीं करी, CDR नहीं है, ये तो वहां है ही नहीं। अरे भाई वो 9 बजे के बाद वाइप कॉल कर रहा है, यानी व्हाट्सएप कॉल कर रहा है। व्हाट्सएप कॉल का डाटा CDR में नहीं आएगा, IPDR में आएगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल डाटा रिकॉर्ड्स 90% वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई IPDR। 16 कॉलम्स होते हैं। अभी एक मर्डर हुआ बंगाल में, उसमें लेडी ने अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल किया। लास्ट कॉल थी हस्बैंड वाइफ के बीच में, वाइफ ने सिर्फ वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल में 2 सस्पेक्ट दिखे उसको साथ में, जो उनके साथ खड़े थे, इन द सेंस उसने माना फ्रेंड्स होंगे। उसके बाद उसकी एक मार्शी वाटर में डेड बॉडी मिली। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ द IPDR। लास्ट जो है, हमें IPDR नहीं समझाया जाता टेक्निकली। आईओस को, ऑनरेबल जजेस को, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स को IPDR पूरा पढ़ना आना चाहिए बिकॉज द मेजर पार्ट इज द IPDR। आज क्रिमिनल CDR यूज नहीं करते, सिम की भी जरूरत नहीं है, इंस्टेंट सीधा वाईफाई। उस IPDR से क्या आइडेंटिफाई होगा कि जो वाइफ था, वाइफ का जो IPDR निकलवाया तो सोर्स IP और हस्बैंड का डेस्टिनेशन IP मिल गया, यानी यस वाइफ ने फोन किया था हस्बैंड को। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो हम एडिशन देखते हैं, पोर्ट। व्हाट इज पोर्ट? पोर्ट इज द, वी हैव 65,535 पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड। सपोज आप सब यहां हैं और हम RIC का वाईफाई यूज कर रहे हैं एंड आई डिड समथिंग अनलॉफुल एक्टिविटी। सो RIC का जो राउटर इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं RI कैन आइडेंटिफाई कि इतने सारे लोगों ने वाईफाई कनेक्ट था, बट कौन सा मैक ID, मशीन ID था जिससे क्राइम हुआ है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बट क्या हम डीप डाइव इन्वेस्टिगेशन कर पा रहे हैं? जस्ट CDR ले लिया, खत्म कर दिया। आयोग पे वैसे प्रेशर है, 60 दिन के अंदर सर अक्यूज अंदर है, 60 दिन है, 90 दिन है। सबसे ज़्यादा अक्यूज आयोग खुश होता है जब उसकी बेल हो जाती है। चलो सर रिलीफ हो गया, अब कम से कम भागना नहीं पड़ेगा, 60 दिन 90 दिन। ये चीज़ें नहीं फॉलो करनी है हमें सर, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अब CCTV है, अब CCTV इंस्टॉल्ड है और आयोग ने कहा सर शक्ल नहीं दिख रही थी तो हमने कॉपी नहीं ली। अरे किसने कहा था आपसे? यू हैव गेट पैटर्न एनालिसिस, गेट पैटर्न एनालिसिस ली। मैं मूव करके आ रहा हूं, ये मैंने पूरा मूव किया, मेरे चलने का तरीका रिकॉर्ड है, बट मैंने मास्क किया हुआ है। गौरी लंकेश का मर्डर हुआ कर्नाटक में, बेंगलुरु में। शी वाज जर्नलिस्ट, वो हेलमेट पहन के गया, मर्डर करके आया, बट हिज वॉकिंग पैटर्न वाज कैप्चर्ड। स्मार्ट पुलिसिंग जिसे कहते हैं, उन्होंने किया, उन्होंने आइडेंटिफाई किया, सस्पेक्ट्स को चला के टिप कराया, आइडेंटिफाई किया, गुजरात फॉरेंसिक लैब को भेजा। गुजरात फॉरेंसिक लैब ने कहा कि यस ओरिजिनल वीडियो इनमें से इसकी वीडियो सेम है। गेट पैटर्न एनालिसिस। सो ये नहीं है कि हम फेलियर नहीं, यू कैन डिग आउट। अगर आईओ ने सोच लिया कि मुझे इसको इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर करना है, यू हैव सोर्सेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, गेट पैटर्न एनालिसिस। बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे कोर्ट में पॉक्सो केस में सिर्फ उस गेट एनालिसिस से ही एक्यूज की आइडेंटिफाई हुई। सो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि हम एडमिसिबिलिटी की बात मानते हैं, बट चैलेंज वहाँ है। सपोज यहाँ पर CCTV लग रहा है, अब मैं सीधा फंडामेंटल पे आता हूँ। यहाँ CCTV लग रहा है और प्राइमरी एविडेंस हम कॉन्फिस्केट नहीं कर पा रहे हैं, तो
तो अब क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहां सर ने जो बिल्कुल डिस्कस किया, पार्ट ए पार्ट बी, 63(4)C पार्ट ए पार्ट बी, 90% हमें ओरिजिनल डिवाइस मिल जाएगा, इट हैज टू बी सेंड टू द फॉरेंसिक एविडेंस। अब एक और चैलेंज है सर, यहां मैं पॉज दे रहा हूं, राजस्थान में और स्टेट्स में विद ड्यू रेस्पेक्ट सर, बिना कोर्ट की परमिशन से FSL भेजा जाता है डिवाइसेस। अगर आप कर्नाटक जाएंगे, केरला जाएंगे, मद्रास जाएंगे, इवन उत्तराखंड जाएंगे, विदाउट कोर्ट परमिशन दे कैन नॉट सेंड टू FSL। ये भी एक अपने आप में चिंता का विषय है कि ये क्यों ऐसा है, अलग अलग कोर्ट्स में, अलग अलग स्टेट्स में ये क्या इशू है। अब जैसे CCTV लग रहा है और ये वी आर अनेबल टू सीज DVR हार्ड ड्राइव्स बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। ऑनरेबल जजेस हैं, CM आए थे, डिप्टी CM आए थे। ऐसी स्टेज में अगर RIC हमें नहीं दे रहा DVR, सॉरी वी कैन नॉट प्रोवाइड ओरिजिनल DVR, सो व्हाट टू डू। तो जैसे सर ने आजी सर ने बताया, वहां पार्ट ए पार्ट बी है। सो हु इज द कंट्रोल, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट ए में 4 पॉइंट्स हैं, ऑपरेट, ओनिंग, मैनेजमेंट एंड मेंटेनिंग। या तो कोई ऑपरेट कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो इसमें से जो भी ऑपरेट कर रहा है या मेंटेन कर रहा है, ही हैज टू साइन पार्ट ए। अब प्रैक्टिकली मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि जो RIC का मैनेजर है, जो मैनेज कर रहा है, उसको हैश वैल्यू लेनी आती है। सर्टिफिकेट में तो लिखा हुआ हैश वैल्यू SHA-1, SHA-2 एंड अनदर। क्या वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्सन टू प्रोवाइड द हैश वैल्यू? नहीं। तो जो पार्ट बी में एक्सपर्ट आ रहा है, he has to assist, he has to take the hash value, और हैशिंग इज नथिंग। हैशिंग सिर्फ वो कैलकुलेट करके बता रहा है कि यस इसकी इंटीग्रिटी अभी सही है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। बट मैं इस पर भी एक रैडर लगाता हूँ एज ए डिफेंस लॉयर। अगर मैं आया किसी केस में, सो मैं कहूँगा कि 4 चेक पोस्ट हैं। इफ यू गो थ्रू बाई वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट ऑफ ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट, युवराज वर्सेस स्टेट रिसेंटली 2023, 4 check posts are available. First is the pre-acquisition hash value, then post-acquisition hash value, then post-forensic hash value. आज तक कितने डिफेंस लॉयर ने फॉरेंसिक के बाद की हैश वैल्यू पूछी है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट थॉट दे रहा हूं आपको कि हो सकता है वहां कॉन्टेमिनेशन हो गया हो। फॉरेंसिक में बहुत से केसेस हमने देखे कि फॉरेंसिक में कोई रिपोर्ट चेंज हो गई, विद ड्यू रेस्पेक्ट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अब पोस्ट फॉरेंसिक हैश वैल्यू के बाद वो कोर्ट की कस्टडी में वो डॉक्यूमेंट आ चुका, उसकी FSL रिपोर्ट आ गई, 207 की एप्लीकेशन फाइल हुई, 207 में डिफेंस ने कॉपी मांगी कि सर मुझे कॉपी दी जाए। अगेन इट हैज टू बी असर्टेन कि हैश वैल्यू इज मेंटेन और नॉट, बिकॉज एक केस हुआ है इंडिया में, फर्स्ट केस इन इंडिया, जहां कोर्ट कस्टडी में रहते हुए मेमोरी कार्ड की हैश वैल्यू चेंज हुई है। केरला का केस है, आप सब जानते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इट्स ए सेक्सुअल असॉल्ट केस इन ए ड्राइविंग कार। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो हमें इंपॉर्टेंस देनी है ऑथेंटिसिटी पे। अब यहां एक और चैलेंज आता है, सेक्शन 45A अर्लियर भारत इंडियन एविडेंस एक्ट, नाउ इट्स सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 रेड विथ 79A ऑफ IT एक्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट केस है, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, इसको हम बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। अगर आप पैरा 16 अनवर वर्सेस बशीर को रेफर करेंगे और पैरा 61 अर्जुन पंडित राव को रेफर करेंगे, दोनों ही ऑर्डर्स में, दोनों ही जजमेंट्स में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 79A लैब को जिक्र किया है। सपोज आज की तारीख में, थैंक्स टू ऑनरेबल कोर्ट्स, कि प्रिजर्वेशन डिटेंशन को अर्जुन पंडित राव में ही सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया था कि आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो है बट उसका प्रिजर्वेशन डिटेंशन क्या है। सपोज किसी ने CDR मांगी और CDR की सेकेंडरी कॉपी, ऑब्वियसली सेकेंडरी कॉपी आ गई, वो सर्वर पे है, उसका 65B के साथ आ गया। ये आप रेफर करिएगा अर्जुन पंडित राव को, वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है उस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने इस चीज को क्लैरिफाई किया, प्रिजर्वेशन डिटेंशन। CDR की कॉपी मांगी, CDR की कॉपी आ गई, बट आप समझ रहे हैं क्या वो प्रिजर्व्ड है? क्या वेदर प्राइमरी इज प्रिजर्व्ड? हमने सेकेंडरी एविडेंस ले लिया, क्या वो प्राइमरी प्रिजर्व्ड है टिल द लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ द केस? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चिंता का विषय है कि सेकेंडरी ले लिया, प्राइमरी डिस्ट्रॉय। ये कहाँ लिखा है लॉ में? तो कहीं लिखा नहीं कि प्राइमरी डिस्ट्रॉय कर दो, सेकेंडरी ले जाओ। कहीं भी ड्यूरिंग ट्रायल, ड्यूरिंग अपीलेट स्टेज पे अगर वो कहीं उसकी जेन्युइननेस पे क्वेश्चन मार्क लग गया, कोर्ट कहेंगे ब्रिंग द प्राइमरी, और यू कैन से लोकल कमिश्नर अपॉइंट करके आप चेक करिए प्राइमरी एविडेंस का क्या अवेलेबिलिटी है। जीरो आंसर। उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा 45A 79A लैब। इन राजस्थान वी डोंट हैव एनी लैब दैट इज 79A लैब। EEE, Examiner of Electronic Evidence. Kerala, we have 2 labs. Karnataka, we have 1 lab.
Delhi, we have 7 labs. Rajasthan, we don't have a 79A lab. So what 79A read with 39.2 says, when in a proceeding court thinks fit that court requires any expert opinion pertaining to any electronic record, Honorable Court can seek an expert opinion from the labs which have been notified by 79A. So Rajasthan की forensic lab 79A lab नहीं है. हमारे कोर्ट अगर कोई ओपिनियन लेना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए, लॉ रोकता है. IT एक्ट विद भारतीय साक्ष्य अधिनियम 39(2) रोकता है. वो साफ कहता है कि ऑनरेबल कोर्ट्स को अगर एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए है तो आप 79A लैब से मांग सकते हैं. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चिंता का विषय है. दूसरा चीज आती है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल. देखिए एक और, अब मैं वापस से फर्स्ट सेशन पे आता हूं विद परमिशन. IT एक्ट को 25 साल हो गए, मेरे से 1 साल सीनियर है IT एक्ट. 2000 में IT एक्ट आया था, मैं 2001 से प्रैक्टिस कर रहा हूं. सो हमसे 1 साल सीनियर है. IT एक्ट को समझा नहीं गया, किसी ने ढंग से समझा नहीं. साइबर लॉज में IT एक्ट को समझा ही नहीं, बिकॉज वी हैव 3 कैटेगरीज. ऑल साइबर क्राइम्स आर नॉट कवर्ड अंडर IT एक्ट. ये डाउनलाइन पुलिस से भी गलती है, हम आगे फॉरवर्ड भी करते हैं इस केसेस को, प्रोसिक्यूशन से गलती होती है. सो वी हैव 3 कैटेगरीज. साइबर क्राइम्स पनिशेबल अंडर ओनली IPC और BNS. साइबर क्राइम्स पनिशेबल अंडर बोथ IT एक्ट एंड IPC BNS. एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर IT एक्ट ओवरराइड्स IPC. That is section 81. So very important judgment अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत से केसेस लाइक अमन मित्तल, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अमन मित्तल, सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई किया है स्टेट लाइक वेयर स्पेशल एक्ट ओवरराइड्स IT एक्ट. शरद बाबू डिगुमर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ NCT 2016 सुप्रीम कोर्ट, वेयर IT एक्ट ओवरराइड्स IPC. तो 3 कैटेगरी है. ओनली IPC केसेस भी साइबर क्राइम में आएंगे, IPC IT एक्ट भी आएंगे, और लास्ट में IT एक्ट ओवरराइड्स IPC. ये अंडरस्टैंडिंग हमें डाउनलाइन ऑफिसर्स को देनी है. और मैक्सिमम ऑफिसर्स रिलेक्टेंट होते हैं IT एक्ट लगाने के लिए, बिकॉज इंस्पेक्टर को इन्वेस्टिगेशन करना होगा. तो वो थोड़ा सा चैलेंज है. अमेंडमेंट होना चाहिए, स्टेट रूल्स भी कर सकते हैं, उसको अमेंड देखा जाए, रिक्वेस्ट कर सकते हैं. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रे एरिया है. अब एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो अर्जुन पंडित राव में भी क्लैरिफाई किया गया था, स्टेज ऑफ 65B. अब स्टेज में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. देखा जाए तो फेयर ट्रायल में डिफेंस को वो सब डॉक्यूमेंट्स दिया जाना चाहिए जिस पे प्रोसिक्यूशन रिलाई कर रहा है. ठीक है, बट विद द कोर्ट परमिशन, इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट. कोर्ट में अलाउ टू फाइल 65B एट ए लेटर पॉइंट ऑफ टाइम. यू कैन रेफर सोनू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ऑल जजमेंट्स भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है. लेटेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये बड़ा इशू इसलिए है कि क्या ओरिजिनल एविडेंस कॉन्फिस्केट करने के बाद भी 65B की आवश्यकता है, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया ओरिजिनल एविडेंस इफ यू हैव कॉन्फिस्केटेड देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ 65B. बट कहीं कहीं एक स्टेज आती है कि एक्यूज से तो आप 65B ले लेंगे नहीं. एक्यूज का मोबाइल फोन सीज हो गया या उसका लैपटॉप सीज हो गया, उसको किसने ओपन किया? FSL ने. FSL ने उसका आउटपुट लिया. अच्छा, 2 तरह के एक्सट्रैक्शन होते हैं सर, ये भी टेक्निकल पता होना चाहिए. एक होता है फिजिकल एक्सट्रैक्शन, एक होता है लॉजिकल एक्सट्रैक्शन. लॉजिकल एक्सट्रैक्शन में डेटाबेस वो आता है जिसमें डिलीटेड फाइल नहीं मिलती है, और फिजिकल एक्सट्रैक्शन वो होता है जिसमें डिलीटेड फाइल भी मिल जाती है. तो IOS को फिजिकल एक्सट्रैक्शन की ही इमेज कॉपी लेनी चाहिए. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट रहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का. स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस टीन असीरी, इट वाज बेंगलुरु ब्लास्ट केस. इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूरा अच्छा केस स्ट्रॉन्ग बना दिया, बट ड्यूरिंग ट्रायल, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप कब रेज कर सकते हैं 65B सर्टिफिकेट फाइल नहीं किया प्रोसिक्यूशन ने? ड्यूरिंग ट्रायल, नॉट इन एपिलेट स्टेज. बट इस केस में ड्यूरिंग ट्रायल दे ऑब्जेक्टेड कि सर जो FSL की रिपोर्ट है उसके साथ 65B सर्टिफिकेट नहीं है. बट प्रोसिक्यूशन ने उसमें 6 साल बाद सबमिट कर दिया 65B, और बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अलाउ किया लेटर पॉइंट ऑफ टाइम. बट यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या FSL को 65B देना है? यस, बिकॉज दे हैव एक्सट्रैक्टेड सेकेंडरी एविडेंस फ्रॉम द प्राइमरी, उसके बाद किया. अब मैं प्रोसेस पे आता हूँ, गलती क्या हूँ. एक बड़ा अच्छा केस था, मैं एक जुडिशियल अकेडमी में गया था, वहाँ जज साहब ने मुझे बताया कि मेरे पास एक केस चल रहा है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, फाइनल बस मुझे देखना है. मैंने कहा सर क्या था? मर्डर केस था, स्टैबिंग थी, और आयो ने अपने मोबाइल फोन से जो CCTV चल रहा है उसमें रिकॉर्ड कर लिया. क्लियर है सर? अपने मोबाइल से उसको रिकॉर्ड किया, लैपटॉप में लगाया, पेनड्राइव में लिया, 65B इसने खुद का दे दिया, और FSL ही भेज दिया. FSL से पूछा कोई टेम्परिंग है कि नहीं, आप कोई टेम्परिंग नहीं है. FSL ने जवाब दे दिया. अब मुझे नहीं पता डिफेंस ने क्यों ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, बट मैं तो चलो ठीक है, वो तो क्योंकि उन्होंने जस्ट ओपिनियन ली थी, निश्चित जी इसमें क्या कर सकते हैं. मैंने कहा सर ये तो इसने खुद ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया, प्राइमरी एविडेंस किस में था? प्राइमरी एविडेंस तो उस DVR जो सिस्टम में चल रहा है उसमें था, उसका फॉरेंसिक एनालिसिस होना था, उसकी कॉपी लेनी थी. ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है. एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मॉब लिंचिंग का केस था.
मॉब लिंचिंग में आप जानते हैं लोग ही मारते हैं, लोग ही रिकॉर्डिंग करते हैं, तो रिकॉर्डिंग हो गई, रिकॉर्डिंग होने के बाद किसी ने उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, अपलोड ऑन यूट्यूब, आई हैव डाउनलोडेड दैट कंटेंट, used his 65B certificate. Honorable High Court strongly objected. Who recorded this content? What is the source? किस डिवाइस से इसको रिकॉर्ड किया गया था, वो डिवाइस कौन सा है? खाली यूट्यूब से डाउनलोड करके 65B। अब मैं अगेन उस पॉइंट को चैलेंज कर रहा हूं, एडमिसिबिलिटी। एडमिसिबिलिटी तो हो गई, उसने कहां से डाउनलोड किया? यूट्यूब से, 65B दे दिया, एडमिसिबिलिटी हो गई। चैलेंज क्या हो गया? ऑथेंटिसिटी। ऑनरेबल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने स्ट्रांगली पूछ लिया, किसने इसको रिकॉर्ड किया, कौन सा डिवाइस था, एंड व्हाट अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस रिकॉर्ड। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमें सोचना पड़ेगा कि हमें उसकी ऑथेंटिसिटी को ध्यान रखना है। अगर सेकेंडरी एविडेंस भी है, सपोज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कोई फाइल में सेकेंडरी एविडेंस डाल दिया, तो हमें ये देखना पड़ेगा एग्जैक्टली प्राइमरी प्रिजर्व है या नहीं है, फॉरेंसिक एनालिसिस हुआ है नहीं हुआ। राइट सर, 5 मोर, ठीक है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है ऐसे केसेस में। लास्टली ईमेल्स को बड़ा इशू है, ईमेल्स को प्रूव करना। ईमेल्स को प्रूव करना भी आसान इसलिए है बिकॉज सपोज सर ने मुझे ईमेल किया है, सो आई विल ओपन माय ईमेल आईडी, आई विल टेक फर्स्ट स्क्रीनशॉट लूंगा मैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आई हैव टू टेक द मेटाडाटा फर्स्ट। सो मेटाडाटा व्हेन द फाइल वाज क्रिएटेड, modified or accessed, that's a very important part. Metadata has to be captured first, then I will take the hash value, I will take it print out और मैं एक स्टेराइल पेन ड्राइव, व्हाट इज स्टेराइल पेन ड्राइव? वो पेन ड्राइव ऐसा या मेमोरी कार्ड ऐसा जिसको कभी यूज नहीं किया गया, यही इनको सीसीटीवी में लेना है, यही कहीं से सेकेंडरी एविडेंस ले रहे हैं, तो दे हैव टू यूज द स्टेराइल पेन ड्राइव। स्टेराइल क्या होता है? और प्रैक्टिकली सर फॉरगिव मी, क्या करते हैं कि पेन ड्राइव निकालते हैं और कहते हैं इसको डिलीट कर दो, उसमें सब कुछ और इसमें रिकॉर्ड कर लो। सॉरी सर, आपका सारा हैश वैल्यू चेंज है। ये सर भी सब जानते हैं, क्योंकि सर कौन देगा पैसे, इतने पैसे आते नहीं, इतना पेन ड्राइव कहाँ से लेंगे? नो सॉरी, डिफेंस के लिए आप अच्छा केस बना रहे हैं, डिफेंस के लिए केस बन गया, अगर चलता हुआ पेन ड्राइव में रिकॉर्ड कर लिया, डिलीट कर दिया, डिलीट कुछ नहीं होता, उसमें डाटा रिमेनेंट रहता है, हैश वैल्यू विल डेफिनेटली चेंज। सो दे हैव टू यूज द स्टेराइल पेन ड्राइव, स्टेराइल। तो अब मैं उसकी कॉपी ले लूंगा, 634 से पार्ट ए कौन दूंगा? मैं दूंगा। और जो सर ने, जो 384 पुलिस ऑफिसर राजस्थान पुलिस ने ट्रेन किए हैं सेक्शन 329 सीआरपीसी बीएनएसएस में, वो दे विल टेक, वो आइडेंटिफाई करेंगे, हाँ इनके इनबॉक्स में ये है, बट ये प्रिजर्वेशन नोटिस भी दें कि टिल द लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ द केस यू हैव टू प्रिजर्व द प्राइमरी एविडेंस इन योर इनबॉक्स। ये अगर करना स्टार्ट कर दें, मैं कह रहा हूं प्रोसिक्यूशन का केस हमेशा स्ट्रांग रहेगा। फर्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्राइमरी सीज करिए, एफएसएल भेजिए, सेकेंडरी सील कर रहे हैं, एसओपी फॉलो करिए, पार्ट ए पार्ट बी लीजिए, प्राइमरी प्रिजर्वेशन का नोटिस दीजिए, इसका फॉरेंसिक एनालिसिस करा दीजिए, बिकॉज आपने प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन हैश वैल्यू को मैच किया। और लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अवॉइड MD5 एंड SHA-1 हैश वैल्यू, एनकरेज 252 और 512 हैश वैल्यू। आपको पता है क्यों मैं बोल रहा हूं सर, टेक्निकल वाले जानते हैं, हमेशा 256 या 512 हैश वैल्यू ही आनी चाहिए। MD5 और जो SHA-1 है उसको हमें डिस्करेज करना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद सर। Thank you very much, sir. Acha, before we formally wind up with the last word from my esteemed brother, Justice Varale, the whole, I think since yesterday we have been congregating here to discuss this cyber safety. I just wanted to say just one aspect, and I'll hand over the mic to brother. Cyber safety, we all said charity begins at home. Now, the safety also begins at home. आप लोग हैं सब, बहुत लोग हैं, बहुत who have built their own homes, bungalows बनाए होंगे। तो आप क्या करते हैं? पहले एक तो you raise a wall 6 feet, 10 feet, 12 feet, उसके ऊपर स्पाइक भी लगाते हैं वॉल पे, so that no intruder comes. Not only that, you CCTV लगाते हैं कि बाहर कौन है, कार है, then you have a iron gate. घर के अंदर भी your door, wooden door is in front of it you have an iron grill also, and door में भी क्या करते हैं आप? पिन होल लगाते हैं, so that you know who is coming, who any, see under 5 is suspect, suspicious person who can cause harm. तो इतने सारे आप लोग, we take so much of care of our homes.
Unfortunately, what has happened, many of the cyber crimes have happened because of this mobile phone. Mobile phone सबके पास है today. Even हमको क्या, even rickshaw puller has a mobile phone. Just, manual labor also has a mobile phone. Villagers, everybody has a mobile phone. And this mobile phone is an alter ego of the person. As I mentioned in the beginning, we are no more the physical form. All our characters are being transformed into digital form. आप मोबाइल फ़ोन में all आपके सारे फ्रेंड्स के कॉन्टेक्ट्स हैं, आपके मोबाइल में एप्स हैं बैंक्स का कि ये SBI का है, ये HDF का है, आप वहाँ से ट्रांजेक्ट कीजिए, एवरीथिंग इज देयर, ऑल योर डिटेल्स मोबाइल फ़ोन में आपके, एंड आपके गूगल्स करते हैं, and you watch so many things, history, politics, whatever, आप सर्च करते रहते हैं, and all, when you read all this, they said cookies, they keep on saying, biscuit wala cookies, we accept. Then therefore, mobile phone is nothing but you in today's world. That is why some countries like UK, USA, Canada, Israel, China, they ask, hey, we want to see your mobile when we allow you to enter, because they want to see what kind of person you are. Because the mobile phone does not contain only the details about your all intimate or confidential materials, but it also shows your character, your habits, your contact, how you have been living. So the entire personality, whom we have never thought of ourselves, is all contained in his mobile phone. But at the same time, we don't take appropriate care of this mobile phone. So कोई आता है कि we will give you 20% interest on this and so, we happily accept OTP. We let our guards down. The whole entire, you have surrendered. So I just wanted to say that safety begins at home. तो हमारा safety जो है mobile phone, please take care of this mobile phone. It is so important, and we cannot live without this mobile phone today any longer. Inseparable part of our life. So cyber safety, the various aspects of cyber safety have been discussed since yesterday, today also wonderful on various aspects. ऐसे करते हैं. But if you are able to take care of our own mobile phone, which is our identity, your own ourself, alter ego in the digital form, I think many of the crimes which have been committed can be preventable. With these few words, I just like to hand over to Brother. Thank you, brother. It was really very interesting and an engaging session. We started with the view of Brother Justice Koteshwar Singh, and he opened with an interesting facet, submitting that now in these changing times, the primary and secondary evidence, the line has become so thin that practically it's a blur line, and now we'll have to think on this aspect very carefully. And he was also emphasizing that changing times, as per the changing times, the judicial approach also qua changing times evolved, and the judgments according to the change in the scenario, change in the provisions, the approach also, then there was a change in the approach. Brother Justice Ashok Jain also gave us an insight with his submissions, and firstly I must thank him for a big solace to all of us, saying that there's no need to be very panicked and very hyperactive. Just, you see, be more careful about the other aspect. Financial transaction, money, loss of money, he said, that will be comparing to the entire transaction, which is again controlled by the Reserve Bank, maybe minuscule. But he was right in saying that let us consider the other aspect, which is more alarming, like the digital arrest, the deepfake technology, the alteration in your the identity. So this was really something which he gave us another facet of the subject, and he was also emphasizing on the preservation of data. That is, then it took forward this
particularly probably the very important topic was again put forward by Mr. Vikas ji, who also then emphasized on the aspect, and he was very fair. I must appreciate that he was very fair in submitting for all of us that, sir, the cracking of crime in the investigation is not a difficult task for us, but for us it's the preservation of the evidence and presenting it before the court. That has become a bit aspect to be considered. And he also said that for that we need the expert person, the human resource available with the investigation agency, the prosecution agency, probably now is not so equipped, and they need those persons who are expert in the field, who are professionals, or the other persons who can help, so that with the help of those technically expert persons, professional persons, or the upgrading the human resource available with the agency itself, they can secure the aim of where you can find that the offense is committed, but you are not getting the result, that is the conviction of the offender. And that aspect he emphasized and said that we'll need to look into this aspect, and with the additional human resource, technically advanced or expert, certainly we can achieve that. And then Mr. Dikshit also was very candid in saying that, see, we are only focusing on the admissibility, but in that process, we are just forgetting the other important aspect, that is of an authenticity of the evidence. And he suggested, I must appreciate him also, that he said, sir, there are the means and ways. It's not that the investigating agency cannot do it. It can certainly do it, just need is of changing your focus. You change your focus, you look with a different angle to this situation, and then if you can focus the other aspect, that is the authenticity of the evidence, and in that process he also gave some valuable suggestion. And he said that it's not the fault of at times, because it takes time to even understand the law. He said that, and he was right in saying that, see, even after 25 years, there are many issues of the cyber law which are still gray areas for us. We need to see, we need to train ourselves, we need to update ourselves, we need to get some knowledge, either such from the conferences or the discussions or the interactive sessions, and these are the forum and the opportunities for all of us to update ourselves. Again, Koteshwar was right while he concluded that now mobile is your identity, it is your alter ego. Say in those old days, our poets in the Urdu couplets used to say, Mera wajud, ye meri shairi hai, mera wajud, ye mera kehna hai, mera wajud, ye mera diwan hai, like that. But now all this is gone. Even if the Ghalib would have been alive today, his wajud would have been only his mobile, not his diwan. So that's what Brother Koteshwar rightly said, and I really appreciate the inputs provided by all my co-panelists, my brother Koteshwar, Mr. Dikshit, Ashok Jain, Vikasji. So I'm thankful to them. It also helped me to know the certain areas those where I was also not very keen on those areas, and that helped me to advance my knowledge. And I'm sure that all of you also must have learned something today, and this is what is a takeaway we get from the conferences. Okay. It's all. I'm sure that this is what we take from these conferences, and will be more careful, as Brother Koteshwar cautioned us and warned us. Instead of putting more and more fences, try to see that how you can
secure by just a proper use of a simple device called mobile. I am thankful. I appreciate the Rajasthan Legal Services Authority for giving us this opportunity, providing this platform and opportunity to not only we the panelists but also those who are present in the audience. Thank you, and if anything is there you can ask, but firstly let me also put a caveat. I am not very conversant about these things, so you can put your questions directly either to Mr. Dixit or Mr. Jain. In fact, I will also second brother on thanking Legal Service Authority. This. Only one thing. Due to paucity of time, the conveners have deferred the question and answer session in the next session. Thank you. So, in fact, Rajasthan is such a beautiful place. You know, the land of palaces, forts, then deserts, and of course, the brave warriors of this country. You know, we have produced some of the greatest warriors. So it's not. But then we are so happy. In fact, last time we were in Jaisalmer, I just asked him, why this Sonar Kala is so famous? One of the person who's running that said, sir, Sonar Kala was in ruins and suddenly became popular because of this Sonar Kala by Satyajit Roy. I said, after Satyajit Roy made the film, first the Bengalis started coming. They wanted to see, because they're famous, they are very favorite actor, and they wanted to see how it, then suddenly people realized why people are going there. Then the local people also started coming. Then they spread words. Then it became a national heritage. One of the most visited place in. So happy that now we are very important. It's so relevant. Today, as yesterday mentioned by everybody, that is digital arrest is such a place thing which is happening. So much thing affecting us every day, every moment. So it's a very subject. We are so happy, thankful that we have been able to take part in this very important discussion. And I think this should go on because it is evolving. This law is evolving in all us because of the technology, as mentioned by DIG Saab also, how difficult it is to catch these criminals because they are one step ahead of us. They're so creative, so ingenious in their activities. So therefore, we in the judiciary also have to keep ourselves abreast what is happening in this technology, not merely with the law. Law follows very 2000. After about 40, 30 years, the law was enacted. But then we have to deal with it. But if we are able to equip ourselves with the knowledge of this subject, I think most of the problems we face legally can be solved. So thank you very much for this wonderful session. Before concluding, thank you. Yes, sir. Before concluding this session, we would request a couple of minutes, Lordship. To express our deep gratitude and honor, may I request Shri Hariom Atri, Member Secretary RSLSA, to present a plant and a set of books as a souvenir to Honorable Mr. Justice Prasanna Bhalachandra Varale, Judge Supreme Court of India. Before I accept this memento and the present, I must also appreciate and congratulate to both these comparers who are doing a wonderful job since last evening. Thank you. Thank you, Lordship. Thank you very much. Thank you, Lordship. May I request Shri Vikrant Gupta, District and Session Judge and DLSA Chairman Ajmer, to kindly present the plant and souvenir to Honorable Mr. Justice N. Koteshwar Singh Saab. Next, I request Ms. Rita Tejpal Ma'am, District and Sessions Judge, Jaipur Metro 2, and DLSA Chairman, Jaipur Metro 2, to kindly come over the stage to felicitate Honorable Mr. Justice Ashok Kumar Jain Saab. Next, I request
Shri Ravi Sharma, District and Sessions Judge and DLSA Chairman, Court Putli Behror, to kindly felicitate Shri Vikas Sharma, Deputy Inspector General of Police. Ma'am. Absolutely okay, ma'am. Absolutely okay. Thank you, ma'am. Shri Vikas Sharma, sir. May I request Shri Harun, District and Session Judge and DLSA Chairman Biawar, to kindly come up on the stage and felicitate Dr. Nishid Dikshit. Honorable Mr. Justice Prasanna Bhalachandra, who graciously chaired the session, Honorable Mr. Justice M. Kotishwar Singh, Honorable Mr. Justice Ashok Kumar Jain Saab, I would fail in my duty if I would not thank the Lordships for sharing and illustrating on the topics in such a simple and understanding language, and Honorable Mr. Justice Ashok Kumar Jain Saab, who well emphasized that more than financial loss, it is the loss of personal freedom and rights that is more important part of cyber safety. Shri Vikas Sharma, who introduced about the hash value, Dr. Nishid Dikshit, who emphasized about screenshots, digital DNA, and IPDR. On behalf of Rajasthan State Legal Services Authority, I express deep gratitude and appreciation for sharing pragmatic insights and extensive knowledge of importance, especially in courts. Thank you, Lordships, and our esteemed guests. I humbly request our honorable dignitaries and participants to kindly proceed for lunch, and we request you to kindly assemble back by 3:45. I request all the participants to let the dignitaries proceed for the lunch at first floor multipurpose hall. Thank you. We'll also make a request to young officers that please come on time at 3:45. You know, the dignitaries were there on the dais and you were late. So
हेलो। साहब का है? ताकि दे फटाफट ना। हेलो सर, अभी अभी जी Check. जी जी You can start, I believe. अगले साहब किस पे बैठेंगे सर? बीच में बैठेंगे वाला सर, बीच में। सर आप मेरे को बोल देना माइक जब ऑन करनी नहीं है। सर वो पीपीटी का क्लिकर उधर लगा हुआ है उस कंसोल पे है। अच्छा, कोई किसी को यदि कोई इनकन्वीनियंस होना तो उनको थोड़ा सा है कि आप उस तरफ यों रख के डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है। क्योंकि वो उधर जैसे सामने रख के करेंगे ना, दिखेगा तो इन स्क्रीन्स पे भी दिखेगा। जी। तो कोई ऐसे मिसकंसेप्शन हो जाए ना, इधर करे और नहीं हो मान लो, वैसे तो हो रहा है, फिर भी होता है।
Good afternoon, everybody. I hope we all had a proper and nice lunch. So now we begin with the third and the last session of the day. And this session is on digital forensics. The topic for the session is collaborative strategies for cyber security awareness. Now, may I please request Honorable Mr. Justice Prasanna Bhalachandra Varale, sir, Judge Supreme Court of India, to please come and grace the dais. Honorable Mr. Justice N. Koteshwar Singh, sir, Judge Supreme Court of India, to please come and grace the dais, sir. Honorable Mr. Justice Anand Pathak, Judge, High Court of Madhya Pradesh, please come and grace the dais, sir. Dr. C.B. Sharma, retired IPS and cyber expert, may I request you to please come on the dais, sir. And Dr. Parag Rugani, Professor, School of Cyber Security and Digital Forensics, National Forensic Sciences University, Gujarat. May we have you on the dais, sir. As we had listened to Honorable Supreme Court Judges Varale sir and Koteshwar sir in the first session before this, so now we'll begin with the session with the discourse of Honorable Mr. Justice Anand Pathak, Judge, High Court of Madhya Pradesh, and sir would be discussing with us Drishyam Vidhi, an audio-visual mode of learning. Quite an interesting topic. I would request attention from every corner. Sound digital, I believe audio clip sir की ready है already. सर वहाँ से जैसे ही अपने को कहेंगे तो we have to run from there. Thank you. Namaskar. Respected dignitaries, Honorable Shri Justice P.B. Varale Sahab, Judge Supreme Court of India, Honorable Shri Justice N. Koteshwar Singh Sahab, Judge Supreme Court of India, retired DG Police Mr. Sharma, Professor NFSU Mr. Ruglani, sister and brother judges Rajasthan High Court, all judicial officers, lawyers, paralegal, volunteers, students, रजिस्ट्री के सारे ऑफिसर्स, सालसा की टीम, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बड़ा टफ सेशन रहता है पोस्ट लंच, तो कोशिश करूँगा कि प्रिसाइज रहूँ, कोशिश करूँगा इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करूँ। सबसे पहले मैं चीफ जस्टिस इन एब्सेंशिया जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा साहब का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इस इतने बड़े कॉन्फ्रेंस में मुझे भी अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। मैं आभारी हूं सालसा टीम का, जस्टिस भाटी, उनकी सारी टीम जिन्होंने ये सारा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी। एक राइटर हैं साइमन सेनेक, उन्होंने एक बुक लिखी है टू स्टार्ट विथ वाई। वो कहते हैं कि हम अगर वाई को एड्रेस कर दें कि हम कोई भी चीज़ क्यों करना चाहते हैं, तो व्हाट या हाउ या व्हेन जैसे क्वेश्चंस एड्रेस हो जाते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को अगर हम उस सेंस में देखें
कि वाई वी आर हियर। कल इनॉग्रेशन में ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने बताया रूल ऑफ लॉ को भी मेंटेन करना एक उद्देश्य है, इंक्लूसिव एक्सेस टू जस्टिस को भी करना है, और एट द सेम टाइम एआई के तौर पे इसको टूल के तौर पे भी एडजुडिकेशन में यूज़ करना है। 3 डिसरप्टर्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स हैं हमारे यहाँ, जिसको कहें कि समाज में जो डिसरप्शन पैदा कर रहे हैं। पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा है मेंटल हेल्थ, और तीसरा है क्लाइमेट चेंज। चूँकि सारे लॉ की फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये अगर बहुत गहरे देखें हम, अगर डीप डाइव करें, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं जुड़े भी हुए हैं। चूँकि बात यहाँ एआई की हो रही है, तो एआई एज टूल, एआई एज सोर्स ऑफ या मेथड ऑफ एडजुडिकेशन हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी जो एडजुडिकेशन है हमेशा लगता है कि जब तक हम ह्यूमन इंटेलिजेंस से गवर्न नहीं करेंगे तब तक शायद मेंटल हेल्थ या दूसरी प्रॉब्लम्स को ला सकते हैं। ग्वालियर में मैं कई सालों से एज जज वर्क कर रहा हूँ। ओरिजिनली मैं कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल वर्क करता रहा, लेकिन ग्वालियर में आके मुझे क्रिमिनल लॉ सीखने का मौका मिला। ग्वालियर में क्रिमिनल केसेस काफ़ी हैं, चंबल एरिया है, स्पर ऑफ मोमेंट वहाँ बहुत क्राइम्स होते हैं, इम्पल्स ड्रिवन है मेनली। लेकिन तो कई बार मैं जब लॉयर से बात करता था और उनसे ये पूछता था कि क्या है एफआईआर में, तो वो बार बार पढ़ते थे, हर चीज़ को पढ़ के बताते हैं। चार्जशीट है तो पढ़ना, मैं कहता था आप कॉन्सेप्चुलाइज करें या आप एफआईआर पूरी पढ़ी है उसको आप नरेट करें अपने शब्दों में कि क्या हुआ था। तो कई बार बताने में थोड़ा या तो प्रॉपर नहीं बता पाते थे। अंदर जाने की कोशिश मेरी रहती थी, जब मैं अंदर जाता था तो मालूम पड़ता था जितना उन्होंने बताया उससे उनका केस नहीं बन रहा है, लेकिन जब अंदर देखो तो केस में कुछ उनके फेवर की चीज़ है। तो फिर उससे मुझे लगा कि एक कोई मेथड बनाई जा सकती है क्या, जिससे हम स्टूडेंट्स को भी पढ़ाएं लॉ सब्जेक्ट और हम लॉयर्स और हम लोग भी समझें। तो मैं इस कैवियट के साथ कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने जो डिवाइस करा है दृश्यम विधि, ये इनिशियल स्टेज पे है। धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में करा है इसको परफॉर्म, तो इसको उन्होंने रिसर्च के तौर पे मान्यता दी है जबलपुर में। आप भी इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है ऑडियो विजुअल मोड ऑफ लर्निंग का। क्योंकि क्लासरूम एंड कोर्ट रूम में हमारे यहाँ बड़ी डाइकोटमी है लॉ फील्ड में। क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है, जब आदमी कोर्ट रूम में जाता है तो उसको लगता है कुछ नई चीज़ मिली है, जो पढ़ के नहीं आया है या जो पढ़ा था वो बिल्कुल अलग है। तो इसको ब्रिज करने के लिए ये करा है, क्योंकि आज दिन भर जब मोबाइल के बारे में बात हुई तो एक एस्पेक्ट ये भी आया कि जैसे इस कमरे में अगर 300 लोग हैं तो शायद 400 मोबाइल होंगे, और ज़्यादा मोबाइल का यूज़ होने का मतलब है कि हमारा जो स्पैन ऑफ अटेंशन है बहुत कम हो चुका है। शायद हम लोग लॉयर्स या जजेस के तौर पे इतना ना समझे, लेकिन स्टूडेंट्स जब बैठते हैं अपनी क्लासरूम में तो उनका स्पैन ऑफ अटेंशन शायद पहले एवरेज 2.5-3 मिनट था, अब शायद 70-80 सेकेंड्स हैं। इस स्पैन ऑफ अटेंशन में आप अगर 40 मिनट उसको टीचिंग देते हो ओरल, तो वो शायद ग्रास्प ना कर पाए या उतना असिमिलेट ना कर पाए। उसके लिए ये बनाया है कि किस तरह से एक फिल्म का क्लिप दिखा के हम ये कह सकते हैं कि ये फिल्म है, एक रियल टाइम ऑफेंस क्राइम क्या हुआ है और उसका हम इन्वेस्टिगेशन और उसका हम ट्रायल कैसे कर सकते हैं। जब हम ये दिखाएंगे हमारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि आज बात ये भी हुई है कि ये ऑनरेबल जस्टिस बिंदल साहब का ये कहना था कि स्कूलों में भी हमको इसको शुरू करना चाहिए। तो स्कूल कॉलेज में अगर हम करें इसको, तो कैसे अगर बच्चा उस समय से उस फ्रेम ऑफ माइंड से समझेगा तो ये उसको समझ में आएगा। ये फिल्म शायद हम सब
शायद इस फिल्म को देख के बड़े हुए हैं, फिल्म है शोले। शायद कोई ऐसा हो जो यहाँ ना देखी हो उसने, अदरवाइज तो सबने देखी होगी। तो उस फिल्म में एक इंसिडेंट है, वो कैसे क्राइम हुआ है, और फिर उसको हम अपने साइबर क्राइम से भी जोड़ेंगे कि हम कैसे उसमें मेटा डेटा ढूंढ सकते हैं या कैसे हम ब्लॉकचेन ला सकते हैं। तो आप 10 मिनट की क्लिप है, वो देखेंगे और फिर हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। ठाकुर साहब, आपका खत मिलती मैंने सोचा आपने मुझे याद किया है, अगली गाड़ी से चलाया। जेलर साहब, मैं आपको एक तकलीफ देना चाहता हूँ। हाँ कहिए, बिल्कुल, कोई भी काम हो। इवेंट है ये, तो प्रश्न पहला आता है कि ये इसमें एफआईआर कहाँ रजिस्टर होगी, किस पुलिस थाने पे। यहाँ से जब हम शुरू करेंगे, जब हम बच्चों को दिखाएंगे या लॉयर्स को दिखाएंगे या पुलिस ऑफिसर्स को हम दिखाएंगे ये फिल्म, और ये कहेंगे कि देखिए अब आपको कायमी करनी है, तो एक जगह 0 पे कायमी हुई, 0 पे कायमी होके फिर एफआईआर रजिस्टर होगी। कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, इसमें बहुत सारे ऑफेंसेस हैं, 307 है, 302 है, 396, 97 है, 353 है, 332, 36 सब है, क्रूअल्टी टू एनिमल्स है, आर्म्स एक्ट है और रेलवेज एक्ट है, बहुत सारे ये अलग अलग एक्ट्स हैं। तो वो एक्ट्स उसमें लगते जाएंगे, वो एक्ट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। जजेस के हिसाब से अगर देखें तो चार्ज कैसे फ्रेम होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। फिर इसमें हम अपने स्टूडेंट्स के लिए यहाँ 4 टीमें बनाते हैं, एक टीम इन्वेस्टिगेशन, एक टीम प्रोसिक्यूशन, एक टीम डिफेंस और एक टीम जजमेंट राइटिंग। जजमेंट राइटिंग थोड़ी सी में डिफ़र, तो इसलिए 3 मेन टीमें हैं। अब जो इन्वेस्टिगेशन होगा, जब हम इसमें एक एक आदमी को एक एक रोल देंगे कि एक आदमी इसमें जो है आर्म्स एक्ट में जो नोटिफिकेशन निकलता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सेक्शन 39 में, वो जो ऑथराइज़ करता है, तो वो ऑथराइजेशन का जो नोटिफिकेशन है वो उसको तैयार करना है उस स्टूडेंट को, उस लॉयर को। जब वो ये तैयार करेगा तो हाथ से तो उसको समझ में आएगा कि आर्म्स एक्ट क्या है, नोटिफिकेशन का महत्व क्या है। प्लस चूँकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये कर रहा है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी क्या होती है सीआरपीसी में, आज बीएनएस के हिसाब से देखें तो बीएनएसएस में, और ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के क्या क्या रोल हैं ये उसको तैयार करना है। जब वो ये तैयार करेगा तो साथ में उसको इसके ऊपर सेक्शन 145 जो हमारे यहाँ रहा है पहले, या 151 सीआरपीसी, 131, 132 पैसेज वे की लड़ाइयाँ, वो सब इसको जॉट डाउन करना है। एक आदमी 27 से कुछ मेमो बनाएगा, एक आदमी उसमें पंचनामा बनाएगा, कुछ नुकसानी पंचनामा है, 161 के बयान लेगा और उसको उसका लॉ करना है। जैसे 27 सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट का अगर उसने मेमो तैयार किया है तो उसको मेमो सारे तैयार करने हैं और सारा लॉ राइट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू डिफरेंट हाई कोर्ट्स, जो 27 का कितना उसका एडमिसिबल रहेगा, क्या क्या रिकवरी रहेगी। कोई बहुत होशियार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, बहुत तेज तर्राट जो होते हैं कई पुराने, अब उसको लगा कि इसमें आपने देखा कि ना गब्बर सिंह है, ना कालिया है, ना सांबा है, अब लेकिन इनको भी अंदर लाना है। तो हो सकता है वो बहुत अगर होशियार है तो वो एक स्टेटमेंट किसी चरवाहे का रहेगा कि 2 दिन पहले गब्बर सिंह और ये सब आए थे, यहाँ लकड़ियाँ रख रहे थे और कह रहे थे कि इस बार कोई बचने ना पाए, पूरा लूटना है, तो 120B में ले आए उसको। किस तरीके से यानी ये इन्वेस्टिगेशन होगा। जब इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट पेश हुई है, फिर ट्रायल चलेगी, तो ट्रायल में ये जो ड्राइवर है, ये ड्राइवर विटनेस रहेगा। अगर कंप्लेनेंट ड्राइवर था तो वो रहेगा, या वीरू जय बन सकते हैं कंप्लेनेंट, ये क्वेश्चन रहेगा। ठाकुर ये जो इंस्पेक्टर हैं ये बन सकते हैं, ये रहेगा। उनकी एग्जामिनेशन इन चीफ होगी, तो उसको बताया जाएगा बच्चों को कि ये एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, फिर री एग्जामिनेशन हुआ। कई बार ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्जेस होते हैं सेक्शन 216 सीआरपीसी के, वो होंगे। कई बार विटनेसेस को रिकॉल करा जाएगा तो 311 में आ गए। एक्यूज स्टेटमेंट होगा, उसके बाद कभी कभी 319 में एक्यूज बन जाते हैं। मैं उसको शॉर्ट में बता रहा हूँ बिकॉज पॉसिटी ऑफ टाइम के कारण। तो इस तरह से डिफरेंट
जो प्रोसीजर्स, डिफरेंट स्टेजेस जब बताई जाती हैं तो ये होंगी। उसके बाद डिफेंस जो है क्रॉस एग्जामिन करेगा। उसमें देखिए, उसमें एक लाइन उसने बोली इंस्पेक्टर ने कि क्योंकि हमको कोई साधन नहीं मिला इसलिए हम मालगाड़ी में बैठे, शाम तक हमको पुलिस स्टेशन पहुंचना था। क्योंकि एक डिफेंस का क्वेश्चन आएगा कि मालगाड़ी में क्यों ले गए इनको, पैसेंजर ट्रेन में ही जा सकता है पैसेंजर, ये गुड्स ट्रेन में कैसे ले गए। उसका शायद वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बताएगा कि हमको 24 घंटे में एक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था, और वो कह भी रहा है कि वो थाने पे जाना था ताकि वहाँ से वो आगे कार्रवाई करता। तो ये जब हम ऑडियो विजुअल मोड से जब लर्निंग करेंगे लोगों की, ये केवल एक इलस्ट्रेटिव है। हो सकता है हम दूसरी कई फिल्में हैं उनके क्लिप्स निकालें, कईयों में उसमें चोरी का है, कईयों में उसमें धोखाधड़ी का है, कईयों में ये क्रिप्टो वाला है। तो देन वी कैन रियलाइज कि अच्छा ऑफेंस इस तरह से होता है। बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू इमेजिन कि कोर्स ऑफ इवेंट्स कैसे अनफोल्ड हुई हैं जो इस ऑफेंस तक पहुंची हैं। अब अगर इसको आप हमारी जो साइबर सिक्योरिटी के एंगल से अगर हम इसको देखें तो सबसे पहली चीज़, अगर हम इसको एविडेंस कलेक्ट करना है तो कई बार सारा एक आजकल बहुत बड़ा वो रहता है टैम्परिंग ऑफ एविडेंस का। तो हम इसको ब्लॉकचेन से कैसे इसको महफूज कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं एविडेंस को, कैसे हम हर जो एक स्टेज ऑफ एविडेंस कलेक्ट करी। हो सकता है कि स्टेटमेंट लिया उन्होंने इस फिल्म में, एक कोई चरवाहा, इतने सारी जगह थी तो हो सकता है कोई गाय चराने वाले होंगे या कोई कहीं जा रहा होगा, कहीं ना कहीं कोई मिला होगा। अगर वो इंडिपेंडेंट आई विटनेस है, उसकी टेस्टिमनी को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। उसके जो एविडेंस कलेक्ट हुआ है, वहाँ वेपन्स गिरे होंगे उस घटना स्थल पे, तलवार थी, चाकू था, गन्स थी, फायर आर्म्स थे। तो ये जो कलेक्ट हुआ एविडेंस, ब्लड है, स्वेट है, और दूसरे जो अलग अलग मटेरियल एविडेंस, ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या कुछ और सी जो चीज़ें एविडेंस जो इकट्ठी हुई हैं, उनको कैसे हम ब्लॉकचेन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चेन ऑफ कस्टडी कैसे हम उसको कोर्ट में जस्टिफाई करने के लिए, जैसे आज अभी मिस्टर दीक्षित ने जो बताया कि ऑथेंटिसिटी है, उस ऑथेंटिसिटी को हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं। अगर हम इसको ये मानते हैं, देखिए यही क्लिप को हम दूसरे साइबर के सेंस में कर सकते हैं, डीप फेक में। आज ये ठाकुर ये बात कह रहे हैं कि तुम लोग पैसे के लिए करते हो, ये करते हो। कोई मिस्चीवियस आदमी इसमें ठाकुर के नाम से ये कह देगा कि देखो जय और वीरू, अगर तुम 50,000 दोगे तो हम तुमको छोड़ देंगे। वो हो सकता है आगे पीछे यूज़ हो जाए डीप फेक में। तो हम ये बता सकते हैं कि ये डीप फेक ऐसा है, इसका जो फॉरेंसिक जब वो होगा एनालिसिस तो किस तरह से निकलेगा। अगर ये सीसीटीवी है, अगर एक घटना हुई है जिसका सीसीटीवी रिकॉर्डिंग इस तरह हुई जैसे कि पहले के सेशन में बताया गया, तो मेटा डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है। तो वो मेटा डेटा अगर इस जगह का है, इस समय का है, तो वो लोकेशन का है, तो ये हमको ये मालूम पड़ेगा कि ये मेटा डेटा हमको प्रॉपर है। दूसरा, इसी में हम जो चीज़ें इकट्ठा होंगी और कुछ अगर वीडियोग्राफी होगी या उसमें अगर उन्होंने उसमें कोई स्टेटमेंट्स लिए, तो वो जो उसका ई सर्टिफिकेशन है वो हम इस तरह से बता सकते हैं। प्लस जो कई बार जो लॉक्ड लेयर ऑफ एविडेंस है जो कि कई बार डिलीट कर दिया गया है या कहीं उसको वो अंदर उसको एक डिसेप्टिव मोड में स्टोरेज करा हुआ है, तो उसको रिट्रीव करना है। तो हम उन वीडियो क्लिप्स हैं या स्क्रीनशॉट्स हैं या ऑडियो क्लिप्स हैं या डिलीटेड जो चैट्स हैं, उसको हम कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, ये हम इसमें बता सकते हैं। और इस पोजीशन को, इस इवेंट को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं अलग अलग रूप में। इस ऑफेंस को, ये डेकॉइटी है, दूसरा एक हो सकता है जैसे मैंने बताया चोरी का हो सकता है, तीसरा और दूसरे ऑफेंसेस हो सकते हैं। तो अगर हम इस ऑडियो विजुअल मोड ऑफ लर्निंग से अगर हम पढ़ाएंगे लोगों को,
तो शायद बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा उसी से जुड़ा हुआ कि नए BNSS में 7 साल से ऊपर के जो ऑफेंसेस हैं वो वीडियोग्राफी करना कंपलसरी है। तो जब हम वीडियोग्राफी करते हैं तो अभी उसका शायद प्रोटोकॉल तय नहीं है। मिस्टर शर्मा बताएंगे, पुलिस डिपार्टमेंट से हैं ये। जब तक उसकी वीडियोग्राफी का प्रोटोकॉल तय नहीं होगा कि एक सीन ऑफ क्राइम पे कैसे वीडियोग्राफ करा जाए, इस फंक्शन का वीडियोग्राफी अगर हम दूसरे किसी बाहर के हॉल की कर रहे हैं या कोई ऐसी जगह की जहां मेन गेस्ट नहीं दिख रहे हैं तो वो वीडियोग्राफी शायद आधी रहेगी। वैसे ही अगर सीन ऑफ क्राइम की वीडियोग्राफी हम एग्जैक्ट करेंगे तो क्या हम उसका एक प्रोटोकॉल तय कर सकते हैं? वो हमको हर तरह के क्राइम में मदद करेगा। और दूसरी चीज़, हर जो दीक्षित जी जो हैं उनकी बातों से तो ऐसा लगा कि जो इन्वेस्टिगेशन है इट इज़ लैगिंग मच लैगिंग बिहाइंड देन द इवन एडजुडिकेशन सिस्टम, जो हम लोग इतना अपने आप को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस से या सिंपोजियम से, तो शायद इन्वेस्टिगेशन कहीं लैग कर रहा है। तो क्या ऐसा AI इनेबल्ड, क्योंकि AI है हमारे पास अब, तो क्या ऐसा AI इनेबल्ड ऐप बन सकता है जिसमें सीन ऑफ क्राइम शायद आधे घंटे का उसमें वीडियोग्राफी में करना ज़रूरी है, तो उस आधे घंटे की सीन ऑफ क्राइम की अगर हम वीडियोग्राफी करें और उस AI इनेबल्ड ऐप में डालें तो इट स्टार्ट्स गिविंग अस इंडिकेशंस कि व्हाट टाइप ऑफ क्राइम एंड व्हाट टाइप ऑफ क्रिमिनल्स मस्ट बी इन्वॉल्व इन द ऑफेंस। चप्पल पड़ी है तो 8 नंबर की चप्पल है, जो डिसीज है 6 नंबर के जूते पहना है, तो चप्पल किसकी है, मतलब somebody else was there, डायरेक्शन क्या है उसका, वहाँ टायर के निशान, गाड़ियों के निशान, चाबी पड़ी हुई है, द वे ही वॉज स्टैब्ड, वो किसी पावरफुल आदमी ने मारा या किसी ने पीछे से मारा या कमज़ोर था, इंक्लाइन था, अपवर्ड था। तो ये जो अलग अलग जो एंगल्स हैं सीन ऑफ क्राइम के, तो हम टेक्नोलॉजी से जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस है या इंडिविजुअल कैजुअलनेस है उसको हम ब्रिज कर सकते हैं क्या? कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बहुत प्रोएक्टिव होता है, वो बहुत अच्छी तरह उस चीज़ को ले लेता है, कई बहुत कम रहते हैं तो वो उसको कैजुअल लेते हैं। ये हम इसको कर सकते हैं क्या? ये एस्पेक्ट है। अच्छा सॉरी, बस लास्ट में मैं ये सॉरी मैंने एक्सीड करा, लास्ट में बस मैं एक ये कहना चाहूँगा कि चूँकि रूल ऑफ लॉ की बात है तो time has come when rule of law should become one of the essential components of infrastructure like water, electricity, railways. Because in absence of rule of law, all these components of infrastructure would be sacrificed at the altar of misgovernance. तो मुझे मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी का कि आपने मुझे पेशेंटली सुना। राजस्थान हाई कोर्ट ने, सालसा ने और चीफ जस्टिस साहब का मैं सभी का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you very much, Honorable. Thank you very much indeed. And to the audience, I must say over here that he has dropped $1 million, idea of developing an application and, putting the entire crimes into it and decoding for the learning purposes. I think if somebody from industry can hear it, he will definitely catch it, sir. Thank you very much, sir. Now, may I please? Before the next speaker starts, I'll take leave from my brother and yes, rush to the airport. Thank you all. Thank you very much. All my brothers. Thank you. Thank you. Thank you for coming, sir, and thank you for having us over here, sir. We thank Honorable Mr. Justice Prasanna Bhalchandra Varle for his time and for giving his attention and giving his discourses and ideations on these conferences that we are having today. And moving forward now, may I request Dr. C.B. Sharma, retired IPS and cyber expert, to come on the dais, to come on the podium and please
explain to us. He'll be talking about relevance of digital forensics investigations and trial, acquisition and preservation of digital evidence, which has chain of custody and integrity of evidence, and second, legal and procedural safeguards. Sir. Good afternoon, everyone. Our distinguished chairperson, Justice Koteshwar Singh Sahab, Honorable Justice Anand Pathak Sahab, Professor Parag Rugani Sahab, all the Honorable Judges Sahiban, learned audience, मैं कुछ आते हुए घबरा रहा था सर, घबरा इसलिए रहा था ऑनरेबल सर कि अक्टूबर 2000 में आईटी एक्ट का इनैक्टमेंट हुआ एंड द वेरी फर्स्ट केस ऑफ आईटी एक्ट अंडर द आईटी एक्ट was registered in Rajasthan, and that too was of hypersensitive case, the budget leak case. The budget of the assembly was leaked from the assembly computer, and a sensitivity was because of the OAS Act. It was the budget, which was a classified document. It was in the assembly, so the constitutional provisions were attracted, and it was from the computer, so it was IT. So I was listening, Honorable Ashok Jain Sahab, that you should have 2 images so that if one is damaged, you can work with another. So at that time, there was no protocol. लेकिन मैं डर के मारे इससे कि एक इसकी विशेषता क्या है कि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के अंदर यदि कोई लेकुना रह गई, आप उसको बाहर में बाद में उसको कवर अप नहीं कर सकते, वो रह गई। अब जाके 65B का बाद में आप कर सकते हो, किया है, लेकिन जो चीज़ उस समय आपके टेंजिबल चीज़ हो गई वो नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो सर, चूँकि मैं 25 साल से इस साइबर क्राइम के साथ ही इस एक्ट बना से जी रहा हूँ, और मैं इन्वेस्टिगेशन में पहला इन्वेस्टिगेशन क्या एसपी साइबर क्राइम भी रहा, एसपी जयपुर सिटी रहा, पूरे राजस्थान की साइबर क्राइम को करता था। अब उसके बाद में भी आफ्टर सुपरविजन आई एम माई ओन ऑर्गेनाइजेशन, आई एम डीलिंग विद द साइबर सिक्योरिटी एंड आई एम द सर्टेन इम्पेनल्ड साइबर सिक्योरिटी ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स I do conduct the audit of critical IT infrastructure of the government organization and others connected with the Indian economy. So I do collect the evidence, and that is admissible in your lordship court, sir, because it is certain impaneled. And the most important thing is we collect the digital evidence. Are the engineers from Honorable Professor Saab University, National Forensic Science Laboratory, which is of the highest academic and the institution for the forensic science. So we have the officers from Forensic Science University, Ahmedabad also, and we do collect in the digital evidence. Honorable Sir, जब मैंने नौकरी ज्वाइन की और हम जब पुलिस एकेडमी में थे, बिकॉज आई एम फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, आई डिड माई पीजी इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, सो देयर वाज नो नॉलेज ऑफ लॉ। सो 2 चीज़ें हमारे उसमें रहती थी सर, कि एक तो एविडेंस एक्ट को कम से कम पढ़ते थे जितना कि पास हो जाएं, और एक फॉरेंसिक को, इनमें इंटरेस्ट नहीं आता था, मुझे नहीं, करीब करीब ऑफिसर्स को भी। लेकिन बाद में मैंने देखा कि ये सबसे ज़रूरी है, अहम है। खैर मैंने बाद में लॉ भी कर लिया, साइबर सिक्योरिटी में भी कर लिया, ये चलता रहा सिस्टम, क्योंकि डरते किया सर। आज भी डर यूँ लग रहा है सर कि मैं शुरू से इन्वेस्टिगेशन में हूँ, और ऑनरेबल्स एंड जो लर्नेड बाकी जो हैं उन्होंने भी काफ़ी कुछ बताया है। मैं सर अपने जो भी मैं अनुभव से, ज्ञान से सीखा हूँ सर, मैं वो आपके सामने निसंकोच कहूँगा
तो उसके लिए एक तो मैं अनकंडीशनल अपॉज टेंडर करता हूँ सर। यदि कोई मान लीजिए मेरी बात कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो ने सर, मैं रेफरेंस दूंगा सर उसमें, यदि मैं गलत हो तो भी, लेकिन फिर भी मैं अनकंडीशनल अपोलॉजी टेंडर करता हूँ सर। और दूसरी मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ सर, ओम सहनावतु सहनो भनक्तु सह वीर्यम करवावहि तेजस्वी नावधीत मस्तु माँ विद्विषावहि। ये अंतिम वाला है कि इसमें आप श्रोता और मुझ वक्ता के बीच में किसी तरह का कोई द्वेष नहीं हो, माँ विद्विषावहि। और इसके साथ मैं ये शुरू करता हूँ सर। ये जो फॉरेंसिक पार्ट है, रिलेवेंस ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक इन इन्वेस्टिगेशन, ये इतना जोर पकड़ता जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही उसकी साथ एम्पैथी भी है सर। क्योंकि मेरा अनुभव ये रहा है सर कि इसको लास्ट प्रायोरिटी में देते हैं। मैं शेयर कर रहा था सर डाइस जुडिशियल एकेडमी जोधपुर के अंदर, और वहाँ पर एक कोई दूसरे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जो वो किया करते थे, ट्रेनिंग दिया करते थे, तो मैं भी वहाँ बैठा था। तो उन्होंने ये कहा कि साहब ऐसा है जी, पुलिस आजकल क्यों नहीं कर पा रही है कि जब तक वो कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन सीज करते हैं, सीज करके एफएसएल भेजते हैं, एफएसएल में 6 महीने में 12 महीने में रिजल्ट नहीं आता है, जब तक केस में कुछ कर नहीं सकते, मुलजिम को अरेस्ट नहीं कर सकते। तो कि मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जब भी मौके पे जाएँ हैं, वहाँ पे भी कोई भी फॉरेंसिक कोई आप डिजिटल डिवाइस आपको मिले, तो आपको जितनी नॉलेज उससे डिजिटल डिवाइस को पहले आप वो करके देख लो, और उसके बाद सीज बाद में कर लो। आप 10 बजे पहुँचे, आपने 10 बजे से 15 मिनट में जो इम्पोर्टेंट है वो निकाल लो, और फिर 10-15 पे सीज कर लो। मैं वहाँ बैठा था क्योंकि मैं रिसोर्स पर्सन था, तो मेरे मन में आया बोलूँ कि नहीं बोलूँ, लेकिन बाद में मैंने उनसे पूछा सर कि व्हाट विल हैपन टू द एवेंट, जब भी कभी ये फॉरेंसिक में जाएगी तो ये 10:15 बजे और 10 के बीच में जो कुछ हुआ तो फॉरेंसिक रिपोर्ट में आएगा, हाउ डू यू एक्सप्लेन। उन्होंने कहा सर पुलिस ऑफिसर से कर लेते हैं। मैंने कहा मैं 35 साल पुलिस ऑफिसर रहा, मुझे पता है आप यूँ कर लो तो फिर उसके बाद में ऑनरेबल कोर्ट के अंदर वो हो जाता है। मेरा कहने का अक्सर मकसद इतना सही है सर इस घटना को लेके कि शुरू से ये चली आ रही है कि इस फॉरेंसिक के चक्कर में मत पड़ो, लेट हो जाएगी, डिले हो जाएगी, आप तो जो कुछ है लपेट के कर दीजिए, उस हिसाब से वो कर दें। और मैं मेरा अनुभव इसलिए वो कर रहा हूँ सर कि जब ये कंप्यूटर से बजट लीक हुआ तो प्रेशर था, गवर्नमेंट पे भी प्रेशर था, क्योंकि चारों तरफ से असेंबली चल नहीं रही थी, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, देन लेट्स श्री भैरव सिंह जी से कहा, तो उन्होंने वो करा था असेंबली चलने का, उन्होंने कहा जो कुछ है करा दो। मैंने उस समय थोड़ा सा वो किया, मैंने कहा सर आप नाराज़ हो चाहे, जब तक वो नहीं हो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा। और उसके ऊपर उन्होंने मेरी बात चाहे मेरी जिद मानी या कैसे भी करके मानी। मेरा विनम्र निवेदन है सर कि अब तक जो इन्वेस्टिगेशन थे उसके अंदर जो वो आता है वो टेंजिबल एविडेंस आता है, एंड इन द साइबर क्राइम केसेस इट इज़ द इंटेंजिबल एविडेंस। इंटेंजिबल एविडेंस को आप बिना फॉरेंसिक के कर ही नहीं सकते, बिना फॉरेंसिक उसके इंटेंजिबल एविडेंस को, कोई इंटेंजिबल का मतलब it cannot be perceived by the organ senses, the 5 organ senses, and this is the intangible thing is logical, so you have to depend on the forensic tools. एक यहाँ ये ध्यान में रखने की बात है सर कि जैसे फॉरेंसिक टूल्स से 3-4 चीज़ें इसके फॉरेंसिक साइंस के प्रोफेसर साहब ज़्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे उसको, लेकिन जो मैं वो कर पाया हूँ सर कि फॉरेंसिक जब भी कोई मतलब जब कोई साइबर क्राइम के अंदर आपको एविडेंस कलेक्ट करनी है या कोर्ट में पेश करनी है, तो आपको पहले तो पीयर रिव्यूड टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी काम में लेनी पड़ेगी। नंबर 2 ऑथेंटिकेटेड SOPs, और नंबर 3 आपको टेस्टेड टूल्स। आप जिस टूल से, क्योंकि आईटी के अंदर टूल जैसे टूल बॉक्स होता है अपने व्हीकल में, वैसे ही वो टूल जो हैं
वो एक तरह से इनको टूल कह दो, आपको एप्लीकेशन कह दो, सॉफ्टवेयर कह दो, सॉफ्टवेयर रहते हैं। वो टेस्टेड होने चाहिए। यदि टेस्टेड नहीं है तो उस टूल से जिससे आपने रिकवर किया है उस टूल की वल्नरेबिलिटी उसमें चली जाएगी, वो रिपोर्ट में आ जाएगी और जजमेंट फेयर नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से जो ऑथेंटिकेटेड एसओपीज हैं, आपका प्रोसीजर है, दैट शुड बी ऑथेंटिकेटेड। जैसे पुराने केसेस के अंदर तो जो क्लासिकल केसेस रहते थे उसके अंदर पुलिस रूल्स था, ये इसके तहत चलते थे। अब आजकल इसके अंदर कोई अलग अलग, और दूसरा क्या है कि इसमें ऑथेंटिकेटेड जब तक नहीं हो, जब तक आप, तो मेरा इसके अंदर एक सबमिशन रहता है सर कि जैसे हम लोग भी ऑडिट करते हैं तो इन ऑडिट वी आइडेंटिफाई द वल्नरेबिलिटीज and then do the penetration testing and the risk, we assess the risk. हम उसके साथ के अंदर पहले उनको एक प्रोसीजर देते हैं ऑडिटी को कि दिस विल बी आवर प्रोसीजर एंड वी विल बी यूजिंग दीज टूल्स। वी ऑल्सो यूज द टूल्स to identify the evidence, and then we give the evidence along with the report that this is the evidence we received and this is the reference of that. So my humble submission is the investigating agency, while investigating the cases, they should be very clear that what is the SOP and it should be authenticated. They should use the reviewed technology and authenticated tools. This is the first, and that's why ये जो आ रहा है ना सर कि ऐसा क्या है इसके अंदर, ऐसा क्या है इसके अंदर, क्योंकि it cannot be identified by the organs of senses. So first you have to identify the digital devices, because the digital evidence is always available in the digital devices. So first is the identification of digital evidence in the digital devices, and that too is also done with the help of tools, authenticated SOPs and the techniques. And so that it remains, its integrity is intact and it is admissible in the court of law. वही जो दीक्षित साहब बता रहे थे कि आपकी उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी रिलायबिलिटी है, वो भी बनी रहनी चाहिए और ये होनी चाहिए. So that is the relevance. With the advancement of computer technology, the identification, extraction, preservation, transportation, analysis, documentation of digital evidence, and in a submission in the court of law. देखिए कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चाहे आपकी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडमिसिबल है, लेकिन कोर्ट में सबमिट करते हैं तो रीडेबल उसके अंदर उसको जो डॉक्यूमेंट के ऊपर में पेश करते हैं उसको. ये पहली उसकी वो है. सर आज के टाइम में जिस तरह के वो हो रहे हैं, ये जितने भी केसेज हैं, क्योंकि मैं उस टाइम से जो बता रहे थे ऑनरेबल जज साहब के क्लासिकल से लेके और अब तो मेटावर्स के ऊपर है. एंड नाउ यू हैव टू इन्वेस्टिगेट एंड डिसाइड द केसेज which are in the virtual mode. The very first case, so virtual case registered in London in 2004 in early January, and that was the virtual molestation case. पहले ये चला इसको रजिस्टर करें कि नहीं करें, क्योंकि ये डेफिनेशन में नहीं आता है. बट द गर्ल सेड कि मैंने वैसा ही ट्रॉमा महसूस किया है जैसा कि मेरे साथ में मोलेस्टेशन हुआ है. देन फाइनली ये कहा कि भाई केस रजिस्टर कर लो. इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने कहा लॉ नहीं है, उन्होंने कहा वी विल फ्रेम द लॉ एंड द केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन. अभी उसका कोई वो नहीं हुआ. उसके बाद में तो वर्चुअल केसेस के बहुत से आ गए. इन द वर्चुअल मोड व्हेन द क्राइम इज कमिटेड, where will you get the evidence? दूसरा जैसे मान लीजिए कि आपके क्लाउड कंप्यूटिंग है.
क्लाउड के ऊपर यदि किसी का डेटा है, डेटा वहाँ से हैक हो गया, इट इज इन वर्चुअल मोड एंड दैट डज नॉट एग्जिस्ट। कंप्यूटर का कोई वैसा नहीं है, इट इज इन अ वर्चुअल मोड। एंड वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी कपल्ड विद एआई, वेरी कॉम्प्लिकेटेड केसेस सर। और उसके अंदर आपको, और मैं अपनी वो कह रहा हूँ सर, कोई इसमें वो नहीं, कि मेरा अपना ऐसा अंदाज है सर कि विद इन 5 years more than 30-40% cases will be in the virtual mode and 90% केसेज के अंदर आपको जो डिजिटल एविडेंस है उसको, डिजिटल एविडेंस को आपको कलेक्ट भी करना पड़ेगा, आपको उसको ऑनरेबल कोर्ट उसको एक्सेप्ट भी करे नहीं करे उसमें, इसलिए डिजिटल एविडेंस का अपने में अलग महत्व है। दूसरा जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो फॉरेंसिक, डिजिटल फॉरेंसिक के जो की रिलेवेंस हैं, जो पहले भी डिस्कस हो गए हैं, मैं एक आधा कोई और उसके अंदर मैं शॉर्ट में कर देता हूँ सर। जैसे पहले तो एविडेंस रिकवरी, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे दीक्षित साहब ने भी कहा, ऑनरेबल अशोक जैन साहब ने बताया कि रिकवरी के अंदर इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइबर क्राइम डिजिटल फॉरेंसिक एंश्योर्स रिकवरी ऑफ डिलेटेड, हिडन, encrypted files from computers, computer systems, networks, digital phones, storage media and other computer resources. It also ensures that legally relevant digital evidence such as file metadata, emails, images and communication logs is identified, preserved and analyzed in accordance with the legal standards. So basically the forensic, digital forensics, it helps in asserting the or collecting the evidence in the case, in the digital case. Second is the preservation of data. It ensures forensic images are created, maintained, the original data's integrity to prevent tampering. जस्टिस अशोक जैन साहब ने बताया था, मैं सुन रहा था कि आपको ओरिजिनल को तो इंटैक्ट रखना है और उसकी इमेज बना के और उसके ऊपर आपको वो करना है। देखिए कई सारी बातें हैं जो आज से 25 साल मैंने जो पहले डिसाइड किया था, उस समय देयर वाज नो एसओपी, सो वी प्रिपेयर्ड द एसओपी। एंड आज मैं याद भी करना चाहूँगा ऑनरेबल जस्टिस वीएस दवे, जो मेरे ख्याल से आज के दिन राजस्थान हाई कोर्ट में सीनियर मोस्ट है, इज़ माई मेंटर। तो उस समय मैं उनसे डिस्कस करके, एंड ऑनरेबल जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस अपने खान साहब, वो उस समय डबल एजी थी, तो वी यूज्ड टू सिट टुगेदर। सो उस समय हमने एसओपी तैयार किए और वो एसओपी ही अब तक उसके, देखिए आप अंदर थोड़ा सा जाके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको कर लेता है, तो वो केस है एक साइबर क्राइम केसेस के बारे में जहाँ फॉरेंसिक आपने एविडेंस कलेक्ट कर ली है, तो मेरा मानना ये है कि उसके अंदर 100% कनेक्शन है सर। उसका कारण क्या है कि उसके अंदर ह्यूमन एंगल तो है नहीं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो ऐसी कैसी रहेगी। आप कोई भी उसमें कोई गवाह झूठ बोल जाए, चाहे कोई और कर जाए, और जब तक उस एविडेंस को आप कलेक्ट नहीं करते उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता कोई। चाहे आपने अपना कंप्यूटर, लैपटॉप किसी ने अक्यूज ने जला भी दिया, कुएं में भी डाल दिया, लेकिन उसकी एविडेंस है वो अवेलेबल है, आप कभी भी अपने फोरेंसिक उससे आपको रिकवर कर सकते हैं। देन द की ट्रायल इन रिलेवेंस इज एडमिसिबिलिटी, एक्सपर्ट टेस्टिमनी। एक्सपर्ट टेस्टिमनी के ऊपर चर्चा हो गई कि जब तक आप जो 39(2) के तहत और 79A के तहत जो नोटिफाइड हैं
उनसे आपको करते हो तो वो एक्सपर्ट माना जाएगा, ऑनरेबल कोर्ट उनको एक्सपर्ट के तौर पे लेगी। ये अलग बात है कि अब तक केवल 15 ही ऐसी ऑल ओवर इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि नोटिफाइड हैं अंडर सेक्शन 79A, और राजस्थान के एक भी नहीं है, अभी हो जाएगी तो वो है। देन वैलिडेटिंग क्राइम्स, डिजिटल फोरेंसिक्स refutes and confirms alibis and testimonials by linking support to devices or specific locations by GPS और network data। तो जो AI generated fake data है उसका केवल forensic उसी से हो सकता है। Then acquisition and preservation of evidence, then sources of digital evidence, these are the digital devices. So I mentioned in this PPT, there are n number of sources of digital device image evidences, devices from which evidence can be collected. Now, two types of forensic evidence is available. One, the live acquisition, and the other is the static acquisition. Live and static, और लाइव के अंदर जैसे रैम कंटेंट्स हैं, रनिंग प्रोसेसेस के अंदर नेटवर्क कनेक्शन, तो वैसे ही उसको कनेक्शन ऑफ करते हैं, उसके साथ ही वो लाइव कनेक्शन का डेटा चला जाता है, एविडेंस इज लॉस्ट। देन SOPs फॉर द डिजिटल एक्विजिशन में इंक्लूड फॉलोइंग: ऑब्टेन ए लीगल ऑथेंटिकेशन authorization, secure the scene, document everything, create forensic image, hash the evidence, label and package evidence, maintain chain of custody and preservation of digital evidence। देखिए चेन ऑफ कस्टडी के बारे में आप सबको पता भी है, इसमें कोई विशेष नहीं है। इसके अंदर जो एक ही ध्यान रखने की बात है चेन ऑफ कस्टडी के अंदर, आप जब से आइडेंटिफिकेशन करते हैं डिजिटल डिवाइसेस में डिजिटल एविडेंस का, उस टाइम से चेन ऑफ कस्टडी आपकी रहती है, और जब तक कोर्ट में पेश नहीं कर देते हैं, और कोर्ट में जब तक वो चलती रहती है जब तक आप उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। नंबर 2, एक और ध्यान रखने की बात है, जब मैं पुलिस एकेडमी में वहाँ जब देता हूँ उनको बताता हूँ कि जब भी आपको डिजिटल एविडेंस आप कहीं भी प्रिकॉर करके रखें, तो मान लीजिए जो आपके हार्डवेयर हैं या सॉफ्टवेयर हैं, उनके ये ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरनमेंट में उसको नहीं रखें। जो कई दफ़ा ये होता है कि आपने उसमें रख दी और उसके बाद में वहाँ किसी ने गलती से भूल से, यदि मान लो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कोई वो है और उसने ऑन कर दिया, तो सारे के सारे डेटा ख़त्म हो जाएंगे। ये इसके अंदर वो ज़रूरी है। देन चेन ऑफ कस्टडी के अंदर who collected it, when it was collected, when it was stored, who accessed it, स्टोरेज में किसके एक्सेस में थे, देन प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हैं, देन इंटीग्रिटी ऑफ एविडेंस, उसके ऊपर हैशिंग वैल्यू है, बिट स्ट्रीम इमेजिंग है, राइट लोकस है, यूज वल्नरेबिलिटी फ्री टेस्टेड टूल्स हैं, बस बिल्कुल। देन लिमिटेशन एंड चैलेंजेस, ये सारे डिस्कस कर चुके, कोई विशेष वो नहीं है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि फोरेंसिक, डिजिटल फोरेंसिक्स है, ये आज साइबर सिक्योरिटी की जान है, और आने वाले भविष्य के अंदर जिस प्रकार के केसेस होंगे वो टोटली फोरेंसिक पे डिपेंड होंगे, और फोरेंसिक एविडेंस को, इसलिए पुलिस अफसर को जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, he should be very clear about the forensic evidence, how to collect it and where it is found, और सिमिलरली जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं वो डिसाइड करते हैं, उनको भी इस चीज़ का वो होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मुझे जो आपके सामने बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत आभार सर आपका, आपके पास बहुत ज्ञान है। थोड़ा हमारे पास समय कम रहा, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे के लिए। Yes. We'll begin the last discourse by Dr. Parag Rugani after just a short break of 5 minutes.
Ji. Now may I request Dr. Parag Rugani, School of Cybersecurity and Digital Forensics, National Forensics Sciences, University, Gujarat. He shall be speaking on understanding forensic reports, scope and limitation. Dr. Rugani. Thank you. So good evening, dignitaries on the dais, dignitaries of the dais, and all the learned audience. It is my privilege to stand before you, and I take this opportunity to thank our Honorable Vice Chancellor, who was invited for this event, but he could not come and he nominated me. So I thank him, and he has conveyed his regards and best wishes for this conference. So initially, Honorable Justice Sir has said that our attention period is 70 minutes. I think we have 2 minutes left now. I will, sir, with your permission, I will try to keep this thing lighter, because professors are not used to, speak without clock. So I could not see any clock. Sir, don't hesitate in stopping me when the time does not allow me to speak. Earlier we had a challenge of competing with the other professors that we should teach in better way, so students remain in the class. Now we are competing with the mobile phones. So your attention remains here is the biggest challenge for me, and I'm the last speaker, so I think that everyone has said everything. All the learned experts have almost discussed everything. But there is an advantage also. Whatever we listen at the end remains in our mind for longer time. So I will quickly take you through the agenda given to me, and we will have around 10 minutes for the discussion. I will not be going in more detail what has already been discussed, but this is a sample format. I just try to keep the topic simple by saying understanding reports, digital reports, basically digital forensic reports. You might have seen this, you must be knowing this. I don't want to spend more time on these screens, but I will take you through the screen very quickly, and then there are certain issues which I would like to share with all of you. So this is a general format. National Forensic Sciences University also helps the investigation by providing forensic expertise. So this is what exactly happens when the report is submitted. This is kind of executive summary which goes to the investigating officer, and then it is taken into the consideration. This is just a dummy case, dummy report which has been created. It gives you the details of the exhibits A, and if there is any other exhibit associated with that exhibit, the original one that is given. This is very critical. Every investigator should mention the tool which was used for the analysis purpose, because forensic life cycle has 3 phases: acquisition, analysis, and reporting, the major 3 stages of forensic science life cycle. So there is a lot of debate, and there is a lot of, you can say, arguments also that which tool should be considered valid and whether I can use manual technique or not. That's a question, but it purely depends on the type of findings you get. And there are many tools which fail, and our students and our investigators are able to recover the data and prove the case with help of the manual investigation and writing their own scripts. Okay. I think it's going back. Okay. Then in the summary, what we need to give, that what has been asked to us, if there is a person of interest and his number is there in the seized device or not. So based on the analysis, we give that report. It is signed by the officers investigating the forensic case. But how these reports are generated, and how do we conclude that this information was there or not? So we use the tools as rightly it was brought out by the previous speaker, but we also take help of the manual techniques. So this is one of the tools everyone has been discussing about, this Celebrate UFED, and this is what it basically gives you as a report. So there are 2 types of reports which we deal with. One report is about the software which generates the report about the investigation, and the report about the data that has been analyzed out of this. So I'm not going in minute details, assuming that all of this has been discussed already, because I want to emphasize and spend more time on the issues later on.
This is again in continuation to what there was earlier. This is what the source was there. I have taken the example of mobile, but there could be similar examples for hard disk or any other source of information. Regarding the actual data which has been recovered from the device, you find the information about the device, like it was a Samsung device, and the other information pertaining to that. Again, I'm skipping this for to respect the time. File system acquisition is one of the techniques. I'm not going in more technicalities. This is one of the case which had this information which I have blurred out, or I just intentionally hid those information. But if you see, it gives you all the information about the Bluetooth, carrier name, if there are any IMEI details or whatever, and whatever is required for the supporting the conclusion is there. This is the interesting part. Most of us are interested in this information. So once you recover the information out of the device, it gives you the information. Specifically, if you see here, you have instant messages 99 and into the brackets 2. You have the social media related information. So whatever you see in the red is the deleted data, which was deleted by the user, and then it was recovered by the techniques used by the investigator. So when we say the chats, if you say chats, it's the combination of all the chats used by the suspect or victim. And when we say 20,378 messages were recovered, it includes 5 messages which were deleted and the categories of different messages, instant messages, and a lot of other information. So I assume that this all is very much clear. Now, what are the limitations? It's related to all 3 wings of the criminal justice delivery system, and this is how we are working. Diverse set of devices and operating system. How many of you know that there are more than 100 operating systems which exist? We generally know Windows, Linux, Android, or iPhone at the most. There are hundreds of operating systems which exist. There are hundreds of types of devices which exist. The example which I gave was for Android phone. The investigating officer, forensic scientist, and even judiciary all are familiar with Android operating system. But what about the new type of operating system that comes and you are supposed to work on that case? As it was said that there will be time when we will need to investigate the cases on metaverse or virtual reality and other stuff. How to deal with those type of devices, how to deal with those type of operating system, not technically, not scientifically, but as a whole. And it's not only the devices, it's also about the terminology. So WhatsApp uses some other terminology, the Signal might be using some other terminology, and Telegram might be using some other technology. Technical advancements, of course, it's happening very, very fast these days, and we don't go beyond our mobile phone. Then also, if you see if you are regularly updating your WhatsApp gets at least one update every week. At least one update you get every week. So even if you try to keep track of WhatsApp investigation, you need to have the compatibility with all the versions and how those versions store data. So if there is any change of data, storage or retrieval, that heavily affects the whole investigation. Voluminous data, and on average, as an end user, we generate around 100 MB of data per day. This is generation of data. I'm not saying about the consumption of data. So around 100 MB of data is generated by an individual on daily basis. This leads to the problem I was discussing with one of the honorable judges in the morning, and I think someone said that there are some cases which are 8 years, 10 years old cases. And if you see the type of data we are piling up, and then we are investigating that data, huge amount of data. Data privacy, of course, has been discussed in detail, but it has become a serious concern for the investigators specifically, because if I am investigating a mobile phone of a person who is suspect in one document forgery case, his device may contain millions of his personal pictures.
Now when I push that data to the software will extract everything and will show me everything. And as an investigator, I will need to filter out. But am I allowed to look into those data? Am I allowed to access that data? So that is how it is affecting the investigation. FBI versus Apple, everyone knows how data privacy can lead to such controversies. Artificial intelligence has been talked a lot, and I will also take this opportunity to spend few minutes on artificial intelligence. Does anyone know this lady? Has anyone seen? She is not an actress. She is not a real celebrity, I would say. She is DLA. It's an AI system. And if you see on the right-hand side, she assumed her office as a minister for public procurements in the country, Albania, and she assumed the charge on 11 September 2025. She was already working, and she took the charge as a minister. And why this minister was appointed? So the president and prime minister of this country, Prime Minister Idi Raman or something, for Idi Rama, he said that if I want to ensure that I want to control the corruption in my government, then I need AI to control all the transactions which are taking place in the government. So now AI is taking care of all the transactions to ensure that there isn't any corruption happening in a government. And while addressing public, when he introduced this lady, it's not a real lady, it's an AI engine. Just a face has been given to her. He said that the time is not far when there will be countries controlled by AI assisting the prime ministers or presidents in near future to come. And this is not the end. The interesting part is this. This lady is pregnant. September, she took the charge. October 28, Prime Minister announced that this lady is pregnant, and it's written there that she is not going to give birth to the human children. There will be 83 digital offspring to serve lawmakers. 83 digital algorithms will be designed under this AI algorithm to help the judiciary, to help the lawmakers, to help the law enforcement agency. Now the problem is, what if someone hacks this AI system? There is a good movie, an old movie called The Net. If anyone has seen, there are two parts, The Net 1 and The Net 2. The Net is an example where the hackers installs a system in the government and the system is compromised and all the data has been stolen from that system. What if the AI which has been introduced to curb the corruption is in fact committing crimes, or if it is already compromised? Should we go with this or not? Because we are ending the day, I would like to throw some questions for you, because I don't know how many of you will be in energy and enthusiasm to ask questions. I'm asking you these questions for your thoughts. The research is already going on. This is probably the last slide, if I'm not wrong. Yes, the research is already going on in this direction. You might have heard about AI-based justice, AI-based law enforcement agency. This is one of my friends from Germany who has published a paper where he tried to use ChatGPT and LLM to help him in writing the digital forensic reports. As our discussion is focused on reports, I would conclude with this paper. He tried different ways for writing prompts to ChatGPT by providing information found from the analysis phase and asked the ChatGPT to write the report for him, for both the authors. But the ChatGPT failed.
And there was a case where one of the prosecutors used ChatGPT based transcript in the USA, and that particular court denied such use of ChatGPT and AI. So I think I have not taken time. I'm on time? Okay, fine. So, sir. Sir, depends on your discussion. So my presentation, I just went through fast because I wanted to emphasize. Yes, my only observation and my only understanding of this 21 years of academic experience is that we are lacking in research. We are lacking in collaborative research. Law enforcement agency facing the ground level problems hesitate in sharing those problems with the academia. The academia is unable to understand those problems, and then the sufferer are the human beings, as it was said in the first session, that we should not forget the human rights and the right to have the justice for the human beings. So I would request the learned audience here that try to collaborate. Why the hackers are successful? Because they collaborate. If one person wants to hack your Android mobile phone, he needs to understand how Android phone works. I really appreciate the movie which was shown, the clip was shown by sir. It is said that you need the equal skill to protect your device and hack the device. So if I want to hack a Windows machine or Android machine, I should know each and every minute detail about Android machine. Hackers are very focused, they collaborate. If there is a zero-day vulnerability, if Android phone is hacked, it will be shared among all the hackers, and they will enjoy exploiting your phone and your data. But that thing does not happen with the end users and law enforcement agencies. So it's my request that we should collaborate, we should remain focused, and we should undertake quality research to ensure that we support the criminal justice delivery system. This type of conferences are always the platforms where this type of thinking starts and it goes forward, and it has worked very well. All the conferences, all the outcomes so far have resulted in a lot of good policies and decisions. So that's the only point I want to make, and with this I would conclude. I would be happy to take questions, because as a professor, I always like to listen from the students rather than I teaching them and sharing my knowledge. So if there will be any questions, with the permission of chair, we will take them at the end. Thank you. Certainly. In fact, the question answer session had been postponed, if I remember correctly. Yes, sir. Because of paucity time, so that the sessions can continue. Now we are at the end of the session. But still, I think people are quite energetic now, even in spite of the heavy, lunch we had. Thanks, brother Anand Pathak ji, who made you all sit up and watch the Sholay movie. So that kept you all engaged. So I think we can have some questions, not necessarily this particular session also, because now that we have experts. So yes, sir. So the questions will be all transferred to the experts sitting here to. We are still learning, sir. Clear experts. And honorable means to say the questions of the earlier session also. Earlier session also. Questions, not really opinion, because that will extend. If anybody from your own experience, certain questions, certain fusions, certain queries in your mind, you can. I think we can ask. Yes. Sir, if may I. So I would like to add only one thing. Sometimes we ask the question as the expert of a particular domain, as a lawyer or as a police officer, but we can also ask the question as an end user. So if you have any questions, please don't hesitate. If you want to have anything bugging you. We are sharing the mics with you. Anybody who wants to ask question can raise the hand, please. Please raise your hands. Please feel free to ask question. Honorable has given us the opportunity to seek knowledge from experts, and we should utilize this moment. So I have a question, that what is the difference between eSIMs and the regular SIMs, and how eSIMs can, multiple SIMs can be I think ported in the on morning there was the same question. Yes, I was sitting there and was listening I was that. having the same question. How it can be detected, and what are the drawbacks of this thing?
I would say drawbacks, each technology has advantage and drawback. Sir, I'm taking this question if anyone wants to. So each technology has advantage and disadvantage. eSIM has advantage that you are enjoying it without having the physical SIM. But it can be misused because there are malware, there are malicious code which can misuse the feature which allows you to use eSIM without having the physical card. I think detection will be more difficult if there are different operating systems working So on the same forensic expert, as a forensic expert, I generally do not say that it would be impossible, but it is difficult. It is always difficult to, investigate a case where you have multiple eSIMs available on the phone, but it's not impossible. It is doable. The only thing is we should not constrain ourselves only to the tool. So if Oxygen or Celebrate you fed, they say that I cannot handle this case, it does not mean you say that it cannot be done. We have worked on the ransomware cases where the commercial tools costing few lakh rupees have failed, but we did it with open source software. It happens, it can be done. Thank you. Yes. A very good evening to the chair. My name is Abhinandan Jain and I'm an under-training judicial officer. It was truly an enriching session, all three of them. My question is more pertinent to the second session that we had. So explanation 4 to section 57 of Bharatiya Sakshi Adhiniyam states that any kind of electronic or digital record which is simultaneously or sequentially stored can be relied upon as a primary evidence. Now, considering that there is a mandatory search and seizure videography, and that videography has to be now interlinked with CCTNS. So now that is simultaneously also stored at CCTNS. My question is that as presiding officers of the courts, can we rely on the particular storage in CCTNS without insisting on the production of the original device and without a certificate? Anything? So it's law related questions. Yeah. And experts also. दीक्षित जी आप निश्चित जी आप भी because these are exchange of ideas. Sorry, Mike. Lordship has given the opportunity to answer this question by anybody who would like to answer this. Honorable Sir, law requires the certification of electronic evidence in any form, whether it is through CCTNS or anything. So without authentication and without proper certification, मेरे ख्याल से accept नहीं कर सकते. So I was of the similar view, but then I came across explanation 4 of section 57 in the new laws, and it particularly states that sequentially or simultaneously stored digital or electronic record is a primary evidence. So as far as it is simultaneously stored through the app which is interlinked, could we, as a measure of jurisprudence, still insist on the production of the original? सर CCTNS से आपको जो साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एविडेंस आपको पेश कर रहे हैं, तो इट रिक्वायर्स ऑथेंटिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन डेफिनेटली. थैंक यू सर. Perhaps because of time constraint, I am told one. आपको दीजिए. चाल माइक आगे लेकर आइए. हेलो रेस्पेक्टेड सर, पराग सर से क्वेश्चन रहेगा मेरा. सर ये है कि हम ये कहते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन कोर. तो हम विविध आयामों के लोग में टेक्नोलॉजी टाइम पे चेंज होती जाती है. जो हम स्टडी करते हैं उनका एक मॉड्यूल तैयार करें और अपनी लोगों को बताएं, तो इट इज़ पॉसिबल. क्योंकि क्राइम जो करते हैं ना, मेरा क्वेश्चन है, क्राइम हम तभी करते हैं या तो हम लूप होल देख लें या अवेयर नहीं है. तो हम अपनी जनता को दोनों चीज़ें बता दें तो वो इस तरफ बढ़ेगा ही नहीं.
सर क्रिमिनल सक्सेसफुल इसलिए है कि वो आपकी भावनाओं से खेलते हैं, आपके डर से, आपकी लालच से खेलते हैं। वो हर बार नया तरीका लेके आते हैं। आप जो सोचते हो, हम जनरली ये कहते हैं कि फॉरेंसिक साइंस की जब बात करते हैं तो जनरली ये परसेप्शन है कि सिक्योरिटी कम्स बिफोर क्राइम। अगर आप सिक्योरिटी रखोगे तो क्राइम नहीं होता, बट एक्चुअली साइंटिफिकली देखा जाए तो सिक्योरिटी कम्स आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन। क्राइम होता है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसके बाद पता चलता है कि इस क्राइम को रोकने के लिए मुझे ये तरह की सिक्योरिटी लगानी है ताकि वो मॉडस ऑपरेंडी यूज़ करके सिमिलर क्राइम फ्यूचर में कोई ना कर सके। जैसे ताला लगा दिया तो ताले से एक क्राइम बचा, बट देन पीपल विल फाइंड आउट अनदर टाइप ऑफ मॉडस ऑपरेंडी। So every time when you think about possible ways of committing crime by any criminals, you are virtually your imagination says कि ये जगह से crime हो सकता है, and you stop all those ways, you prevent the crime. आपने एक prevention ले लिया, but then you don't know about the things which are there, which can lead to the crime, which are not imagined by you. ऐसा भी कोई रास्ता होगा, ऐसा भी modus operandi हो जो आपके perception में नहीं आया है। या तो इन अदर केस, जैसे आप एक फैमिली में रहते हो, यू आर वेरी मच एडुकेटेड, आप सब तरीके से ठीक हो, बट समवन फ्रॉम योर फैमिली बाय मिस्टेक लीव्स द डोर ओपन, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कमिटिंग क्राइम, एंड दैट इज हाउ इट हैपन्स। द वीकेस्ट लिंक इज द ह्यूमन। आप कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस कर लो, अगर आप अवेयर भी हो, फिर भी वो कहीं ना कहीं गलती करी जाते हैं और उसी चीज़ को वो एक्सप्लॉइट करते हैं क्रिमिनल्स। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। Thank you, Dr. Parag Rugani. I think with this we'll end the Q&A session. To present a plant and souvenir to express our gratitude and honor, I invite Shri Hariom Atri Sahab, Member Secretary RSLSA, to present a plant to Honorable Mr. Justice Shri N. Koteshwar Singh Sahab. Okay, sir. Okay. So, it has been a wonderful. Speak from there. It has been a wonderful day on various facets of the cyber world, challenges also. In fact, the last session we had a very engaging session, starting with Drishyam Vidhi, Honorable Justice Anand Pathak. That's one. It's a very kind of engaging session. How normally in judicial academies we have a kind of one-way, traffic. This knowledge coming from the resource person. It has been also studied in many circles, and it has been said that this kind of one-way traffic, the recipient, they actually receive about 20 to 30% of what is being transmitted. So this kind of interactive session increases that level of understanding. And what my brother also did was that essentially the law has not changed. The kind of method, the kind of expertise will be required, but the fundamental issues of law remains and how to investigate. And Dr. C.B. Sanmazo has highlighted very important, because ultimately we all know, we have been all this, our generation, we have been dealing with tangible mostly, which we can see, touch, feel, but they are all intangible evidence. And tangible evidence cannot be so easily corrupted. But then intangible evidence, it is corrupted, but it's difficult to detect it. That's the difficult, because the cyber world is so much all digital, because in computer language it is 0, 0, 0, something like nothing else. All binaries, all zeros and ones, nothing else, if you see the computer language. So it's much more difficult to detect. In that context, maintaining the integrity of the evidence is so crucial, because we don't know what is morphed, what is not morphed. Yesterday also we saw all those, and this how this can be morphed, and all this cloning and all this thing. So difficult to therefore maintaining the integrity of evidence by following the SOP strictly by the investigators, because that's not really the headache of the courts. Unfortunately, that is not our headache, but it's mostly for the investigators. So they have to preserve this
they have to maintain, so that when it is placed before the court, we know what is the real fact. So this is a very important aspect. And of course, Dr. Parag has raised a very important, because see, the nature of evidence itself is so complicated. Therefore, it is not very easy for an ordinary person to assess it, appreciate it. In fact, therefore, we are relying more and more on the expert evidence. Of course, the new act also, Adhiniyam and IT Act also provided for these experts on this, but then unfortunately there are very few. Gandhinagar is one of the few in India, forensic science, that because I had occasion to visit, have seen how different aspects of psychological and then digital and all others, all kind of, almost all branches are being studied in forensic laboratory. And therefore, the challenges also. Therefore, I feel that the courts should not hesitate, especially those who are not maybe to take advantage of Section 165 in the Evidence Act or 160 of the BSA also, to ask questions whenever any expert comes. We should try to understand it properly without showing, because the human tendency is that ask questions, because that also indicates our ignorance. We don't want to own up our ignorance. We all want to say that we are sab jante hain. So that is something that we have to have this sense of humility and understand, try to understand what is the problem. We can take advantage of these experts who on in the course of trial. And of course, it's a challenge for the experts themselves also, because the changing, constantly evolving, especially with the introduction of AI. So we had a wonderful session. Yes, I just thought I would also mention 3 incidents in my life relating to this digital fraud and this cybercrime. The all incident happened, I became a judge. I was a very young judge when just 2-3 months when I became a judge in Guwahati High Court. So I went to draw some amount from the ATM booth. And I entered my card, punched in my PIN, and I pressed my enter. It was not working, no response. 2-3 times I tried. Then somebody was standing behind me. Sorry, which is working. So then I shifted. Was booth also. So I took out the money, 20,000, and I came out. As I sat down in my car, then I saw another string of my SMS, another 20,000. I said, Jare, 20,000, 20,000, 40,000. So, but I took out only 20,000. I thought maybe the phone. Then I said that when I checked the number, that transaction number was different. That was which came later on. The number is earlier. I said something wrong. I asked the driver, "Are chalo chalo wapis." So I went inside. Of course, when I came, there was nobody. I looked around. Then I checked up this booth. Then I saw that. I thought I will check up the camera. It was not working. Of course, then I saw this list that contact so and so number 4. I immediately asked my driver, call up this fellow of the SBI bank, and this has happened. They couldn't understand. They said, sir, we don't know, we can't, please file a complaint. Then I went to the police station, file an FIR. Police station also clueless. ठीक है साहब देखेंगे sir, we'll see. I was very upset because I didn't also understand what happened. It meant, then 2-3 days after, I saw a newspaper in the similar, there's some retired person, he has been defrauded like that 2-3 times. His card was used. Then I went to the Chief Justice. He said, there is something wrong happening with all these cards. What to do? Kya hua? What happened? I narrated him this one. अरे चलो एक suo moto PIL करते हैं. Let the SBI pay for it. मैंने ठीक है sir, very good. अच्छा. So for me हो गया, PIL कर दिया. SBI was very happy to return 20,000 for me. But I was wondering, then somebody told me what they did was that when I entered the punch my number PIN, when you put the enter, that they had put something between, so that even if you punch, it will not get connected. So what has happened is that my PIN remains,
even though I have taken out my card, the pin actually has remained. So the moment I came out, this fellow took out perhaps that enter, and so it entered, so that money came. So that was the first. Then, secondly, when I was in Guwahati again, that's more recently, then somebody told me, sir, your WhatsApp number, I have got received so many, all kind of messages. I said, what happened? Show me. They said, this is, then I realized this is somebody else, using my name, my photo, using. But then I immediately sent WhatsApp, all my contacts, please care, don't respond to any of this number. This is I think somebody is hacked or something like that. Then next day, my brother just come, sir, I sent you 30,000. I go, why? I said, I received a message from you, I needed 30,000 returned, so they show me. He showed, that's from the same. I said, you are stupid. You should have checked from me. I'm sitting next to your room. You don't have the time to come and ask me. So, and same thing, 20th of January, I still have in my mobile number. I just, this is a message I got from a senior advocate in Supreme Court. Said, language is very interesting. He said, hi. I said, he said, hi, needed some help. It is 5:45 p.m. I have not deleted this number. Hi, needed some help. Will be there in your account 52K. I'll return in 2 hours. My UPI is not working. First of all, this senior advocate is capable of purchasing me out. He has so much of money. I said, he's asking for 52,000. I said, and he says, hi. This senior advocate will not dare say hi to me unless he's my close friend or something like that. So I said, I asked my secretary, please call up this number. I said, sir, response nahi aa raha hai. Then I said, you call up his friend and ask him to give me a call. He was very, very apologetic. Sir, please don't mind. Somebody hacked my WhatsApp number, sending all this. So these are 3 incidents. Therefore, we have to be very careful. I just wanted to say that the cyber law, see, we are still unaware, sometimes we are not so careful about our own devices also. Please, बताइए. Sir, just 1 minute. This is happening sorry to interrupt you, sir. This is happening very frequently. My only request is when you get such messages, report and spam it. After reporting to the cybercrime cell and all the stuff, block that number and report that spam. So WhatsApp, if 5 or 10 persons block that number, WhatsApp automatically disables that account. No, Dr. Parag, but then the problem, is that, filing an FIR for a common man, when he gets this kind of messages is not very easy. Yes. So no, but that's at least that's a big challenge. We can spread the awareness. So if I tell my family that you block this number, if multiple people blocks that number, then it can stop the damage. So, but only what we can do is that, yes, we have to be very careful. Sabdhan rahe, to then durgata na ghati. That, all those you see when you drive behind these trucks, you see all those warning, all those. These are all lessons of life. It has been wonderful session, but this is something I must thank the Rajasthan Legal Service Authority for this kind of, and it must continue in judicial academies so that you can have much more detailed discussion, because these are all just, we are touching on the borderlines, we are not really able to go deep into system, and I can see all these youngsters who are dealing with cyber crimes and cyber frauds, they will be very much interested to know further, and I'm sure this discourse will go on, continue, and there has to be continuous discussion on this subject. And thank you very much for everybody present here also for your attention and interest you have shown. Thank you so much. Thank you for your concluding remarks, Lordship. With your permission, before we formally conclude the session, I invite Shri Hariom Atri, Member Secretary RSLSA, to present a plant and souvenir to Honorable Mr. Justice N. Kutishwar Singh Saab. Next, I invite Shri Anutosh Gupta, Secretary DLSA Bharatpur, to kindly come up on the stage. And present a plant and souvenir to Honorable Mr. Justice Anand Pathak,
Judge, High Court of Madhya Pradesh. Next, I invite Shri Pawan Jeenwal, Secretary DLSA, Jaipur District, to kindly come up on the stage and present a plant and souvenir to Dr. C.B. Sharma, retired IPS and cyber expert. Next, I invite Ms. Samiksha Gautam, Secretary DLSA, Savai Madhopur, to come up on the stage and kindly felicitate Dr. Parag Rugani, Professor, National Forensic Science University, Gujarat. Thank you, ma'am. Honorable Mr. Justice Shri N. Koteshwar Singh Saab, Honorable Mr. Justice Anand Pathak, Judge Rajasthan High Court of Madhya Pradesh. Thank you, Lordships, for your valuable insights. Through this Vidhi, His Lordship explained the subject and aspect with remarkable clarity and simplicity. It did not merely address this issue of cybercrime, but it expanded our understanding to the broader dimension of law, procedure, and legal awareness. Dr. C.B. Sharma explained the relevance of digital forensics in investigations and trials. Dr. Parag Rugani, for your valuable and interesting technical insights. On behalf of Rajasthan State Legal Services Authority, I humbly extend our deepest gratitude to all the speakers, and especially Honorable Mr. Justice Prasanna Bhalachandra Varale and Honorable Mr. Justice N. Koteshwar Singh Sahab for gracing 2 successive sessions and enlightening us. I extend my sincere thanks to all the honorable distinguished dignitaries and all other participants for patient hearing. Your participation had made this conference even more purposeful. As we wind up for today, we shall reconvene tomorrow and look forward to your gracious presence. Thank you. Before we start the national anthem, I want to make a small announcement to the young judicial officers that tomorrow we'll have a valedictory session wherein Chief Justice of Rajasthan will be coming along with Law Minister. I will request everybody to be participating mandatorily, and the event will start at 9:30 a.m. So we expect you to be here by 9 o'clock in the morning. Thank you. Now we sing national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you very much. Thanks everybody.